ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭೋದಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆದರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ 7 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಜಪ್ಪು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ನನ್ನ ಚಿಮೆಗಾಗಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ 9 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ. 7 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ನಾಯಕ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಶು ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸಮಯ ಮೀರಿದೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡವೇ ಇದೆ. ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ,
ಶ್ರೀರಾಜ್ ಕುಂಪಳ ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಸೂರಜ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು. 4 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ರೆಡ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕುಂಜತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಪಿಚ್ಚಿನ ನಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಿಚ್ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. So all set now for the inaugural the match and the inaugural toss of the prestigious Rnfc Champions Trophy, the cricket fest in this Kudroli Tipu Sultan Cricket Ground, and we are all witnessing the all 9 days of cricket tournament in this beautiful cricket ground. After that inaugural ceremony yesterday, we are witnessed some meaningful inaugural ceremony yesterday evening. So that today we are not having any formalities of that inaugural, but we have inaugural match toss here in the morning. Very bright and sunny morning. The typical weather condition here. The one of the most beautiful cricket ground situated in the branch of river Gurupura. I can call it as Netravati as well. So it's been a great movement for each and every one of the cricket lovers, especially for those who are watching this particular cricket ground. One of the most beautiful view of this cricket ground with the nature beauty here in Kudroli, and the flags are flying around, and all we can see that today, which is one of the most excitement day for cricket, local pool teams will go into clash. 8 teams from Mangalore, top 8 local teams will go into have a participation in this tournament. Ashpak ASR, one of the main pillar of this cricket tournament, will have the tossing ceremony moment here in the middle of the pitch. And Siab is the man is in the middle of the pitch along with the 2 umpires as well as 2 captains, 3 umpires, and along there is a tossing ceremony, and Ashpak spins a coin, and toss which is on by toss won by captain of Sridevi Cricketers Jappu. Nishu won the toss and elected to ball fast. I request him to please come and select your ball. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ, ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. So this is what the news from the center. The captain of Red Sridevi Cricketers Jappu winning the toss, Nishu, against Vaishak, the captain of Red Wings Kunjat Bail, and Ajmal Ashbak, all are witnessing this tossing ceremony of the prestigious cricket tournament. Tanveer, Azma, Afzal, all are the pillar of this cricket tournament. Has done a lot of hard work to make this cricket tournament, and we are hoping for some successful cricket tournament in this
8 days here in this beautiful Tipu Sultan Cricket Ground here in Kudroli. So thank you very much each and everyone, chief guests, for your presence in this inaugural ceremony. Today we are going to have 7 matches as per the schedule, and 8 teams participating in local pool group. And Red Wings Kunjat Bail and SCC Jappu will going to have a competition for the first match. The second match will be played between Rnfc Kudroli versus United Patur. And third match is Sarvagni Urva versus Reliance Katipalla. Green Lines Bengre takes on Green Lines Bajpe. This is going to be very interesting. Two Green Lines are facing each other, one from the Bajpe, one from Bengre. And this is the first round and schedules of this local pool of prestigious Rnfc Trophy 2026, which is proudly presented by Team Rnfc. All set now for the big moment, and the first match itself, it's going to be a very high voltage. Today is day number 1. Tomorrow will be the one more excitement day for cricket, where we can witness some top ranking teams from the Mangalore pool will going to have a competition. And after that, we are going to witness auction based franchise teams will going to have a competition in the belt area basis. And will going to be a lot of golden opportunity for the local talents to perform in this beautiful venue. And wait and see which team will going to win this prestigious title, Rnfc Trophy 2026.
Lot of hard work which is done. It's a dream of a team Rnfc to organize the big tournament in this beautiful venue. And thanks to all the organizing committee, they did a lovely work, very hard work. Of course, they made a very grand auction ceremony and 3 weeks back, and we are all looking towards this 8 days of cricket pest. This is what the cricket pest in the slogan Kudroli will witness the cricket fest in the 8 days of cricket, 8 days here in this most beautiful venue. Opening batters are walking towards the middle. Pritham and Ashok, the man who really performed very well in the tournament which is completed at Paradise Cricket Ground of Eden Trophy 2026. The man won the Best Batter Award with his extraordinary batting performance. The man who represented for his team. Azad Chokabetu. Azad Chokabetu, the team are become the champion in that tournament with outstanding performance, and they well deserved the champions trophy for Azad Chokabetu. Team Matrix becomes the runner-up in that tournament. 2 new teams and in that tournament are grab the place in the mega final. It's been a great message for Underarm cricket. So umpire Suresh Modabidre, at square leg umpire Suraj Vijay Lakshmi, and everything is ready here for the first over, the first delivery of the tournament of Rnfc Trophy 2026 will going to come as Shahnawaz will going to start the proceedings, and the batter Ashok will going to take the strike, and wait and see how well Ashok will going to get the start. So most dangerous experience as well as a man in good form will going to face his first delivery. Long on and long off. Long on which is little bit wideish. Long off is orthodox. And here comes the first delivery. Starts with a beautiful delivery there from Shahnawaz, which is coming into the batter. And because of the first delivery, it's not like that we are having that kind of warm-up you got and couldn't manage to take the advantage of the delivery which is pitched outside the line of off-stump. And Ashok missed it this time. Appeal is plumb in front of wicket, is gone. It's been a dream start here for Shahnawaz. What a delivery that there from Shahnawaz. Ashok tried to play his favourite slog sweep shot, but against the line. I'm really surprised this shot selection. Definitely, it's not like Ashok, it's absolutely misjudging the line of the delivery. He thought it might, the ball is going to miss the leg stump, but ball pitched in a line. Shahnawaz picked up a huge wicket. It's a huge fish in the net in the first over itself. The man in good form is back in the pavilion. Ashok departs. Totally wrong shot selection. Of course, nothing wrong with that shot selection, but when you are playing against the line, you need to connect the ball. If you miss the ball, you're always under danger. Umpire certainly will going to have a decision because you are always right in front of the stump. Shahnawaz strikes. The one more man is in a form from the bat and ball. Has got a terrific tournament which is played at Sharada High School Cricket Ground, Paner, of Jai Bharat Trophy 2026. The man who's performed very well for the team, Green Line Bengre, with the bat and with the ball. Now the batter Jalal is the one more good strike of the ball. Catch, it is a call. Wicket number 2 gone. What really happening in the middle? Jalal out for Golden Duck. Back-to-back 2 wickets here for Shahnawaz. This has been absolutely a shackling start here for the team Matrix. Lost 2 wickets in the first over. In the distance of 3 deliveries of that over. Absolutely disappointment and not a good start. Very good toss to win in the morning.
for the captain of Sridevi Cricketers Japu, Nishant has got no hesitation in his mind that he wanted to go ball first, and the first over itself, it's been a terrific start here for team Sridevi Cricketers Japu through Shanawaz. Correction, Nazar 9th blocker become the champion in that tournament. Correction for that. Nazar 9th block when he represented Ashok is represented for that team. Nazar 9th block are lifting the prestigious Eden Trophy 2026. One for two. Red Wings are still searching for the right track, struggling in the middle. This time it's going to be a bonus here from Shanawaz as he bowls far outside the line of off temp. 1+1, couple of runs added to total. With that couple of runs, Kubana moves on to 3 for 2. Salam, the batter, came as number 4 batter for the side. Nicely driven, just wide of that short mid-off fielder down to long off. Captain is in the picture in the long off. Ample time for batter to complete the single. We can see that ball which is used in this particular tournament, it's absolutely not hard. It's a little bit soft in nature, and a lot of hard work required for the player. This time umpire saying I can't see anything, and you are right in front of me, how can I give the leg before wicket? And absolutely it's going to be a disappointment here for Shanawaz, as again he making a mistake of coming right to him. Is coming to his protected zone, and a fantastic overage comes in hand here from Shanawaz. 2 wickets in that over, almost 3, and but his mistake, he couldn't manage to get the wicket here. It's 5 for 2. And Red Wings Kunjat Bail got the very shackling start in the beginning. 5 for 2. So 5 for 2, first over completed. The Nish brought it attack to bowl the right arm over the wicket, he balls. Oh, this time once again Flum in front of wicket. Preetham once again doing the same mistake. What the mistake is did by his partner in the beginning. Ashok, the same line, same length and same reaction. The batters try to play across the line. It's absolutely one more bad shot selection. It's almost looks like even he survived in the last delivery of the previous over when the bowler came right in front of the bowler, and again Preetham is trying the same stroke against the line, and he back in the pavilion. It's 5 for 3. Rnfc Kudroli ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ. 7 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗೋದರ ಒಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ just outside the line of far outside the line of off stump in fact. This time bowled him, cleaned him up. My goodness, all wicket we can see that LBW and 2 LBW on bowled out. The line which is the same, and the batters are making a same mistake. 3 batters absolutely making a same mistake. Try to play across the line.
This is absolutely a poor piece of technique here from the batters of Red Wings. They're not really learning from the mistake. This is a very much a disappointment. All the 3 wickets we can see, they played the same stroke. They tried to play same stroke across the line. When the ball in the middle stump, they misses the line and pays the penalty for that. Sometime I'm just talking about the player's mindset. It's not like you are playing in UCG cricket on some ground. You are regularly playing that venue. But when you're coming to the new venues, you have to take a little bit time to adapt to the condition. You have to read the condition of the particular ground. You have to adapt to the condition of the pitch. You have to see the which ball which is using for this tournament. And you have to middle the 1 or 2 deliveries with the full face of the bat. Then you can have some great idea that what kind of strokes which is enough for him to get the runs. And this is what quite a disappointment to watch. Captain Nishu was bowled down the leg side when the batter is in a tremendous pressure. You're bowling a wide, and that will going to release the pressure from the batter, the newcomer batter Mahesh. This is what you need to do, just like I'm talking about how the Mahesh is played that stroke with the merit of the delivery. Even he played a little bit inside out, but you know exactly where the fielder is. Huge gap between bowler and extra cover, and he picked that gap very nicely into long off. For a single is up the mark, 8 for 4. Played it nicely, and Salam is again he played it very nicely. This time onto the onside region as the ball off the legs, almost into the legs of the batter. The very easy pick for the right-hand batsman when that line which is around his legs. They wanted to go for the cover drive, doesn't get hold up there properly, but good enough for Mahesh to rotate the strike. It's 10 for 4 in the over number 2 in progress. Red Wings Kunjat Bail are searching for the right tracker, struggling in the middle. Nice looking drive from Salam. This is what needed to get. It's a time for the consolidation for the Red Wings. One more good over which is comes in here for Red Wings Kunjat Bail. Captain bowls good one. 2 wickets in that over from Nishu. 6 runs conceded after completion of over number 2. Red Wings Rangers Kunjat Bail are 11 for 4. They're going exactly 5.5 runs per hour. Nothing much wrong with the run rate. If you see that in the morning, if you get 5.5 into, I'm saying that's a good run. But they lost 4 major wickets back in the pavilion. This is what the problem, what Red Wings Kunjat Bail. But still, I think one good partnership will take them into the good position. I'm just watching the ball which is used by the particular tournament, which is very soft in nature, so that the score around 45 to 50. If he bowls well, fields well, because this is a deep cricket ground, you can see that you're not getting that much of a good enough opportunity for get the runs behind the stump. And in front of wicket, you can get runs. This is one advantage for the fielding team. If you bowl the good line and length, it can give some good protection in front of the wicket. One of the most experienced and legendary. Santosh came into attack. Starts with a dot ball, which is a quicker one. Santosh bowled that beautiful delivery. And Salah missed it completely. This time nicely played it down to Apishli, but safely down to long off region for a single. Nawaz, fielder in the deep in the long off region, fields the ball. Reverse sweep from Salam, played it very nicely. The gap, will they come back for the second? Definitely, easily. Before Mohit will go to run back to that deep gully region between gully and the third man. Ample time for batter to complete the single. With that single, Skoban moves on to 14 for the loss of 4 wicket in the over number 3 is in progress. This time chance of run out there, needed more quick work from the fielder, the closing fielder, but gentle soft end which is comes into play there from Mahesh. Not really try to hit it too hard. That's why they complete the single. Oh, beautiful. Did a typical Santosh Bayu. There is a master class sometime. Definitely this condition is going to be enjoyable for the bowler like Santosh in the morning.
with the direction of the wind, is getting some extra deviation in that ball. This time again trying for the reverse sweep. Good change of line there from Santosh. Excellent over. Tight over there from Santosh. 4 from that over after completion of over number 3. Red Wings Rangers Kujat Bail are 15 for 4. They're going exactly 5 runs per over. You're watching the prestigious Rnfc Trophy 2026. Well organized cricket tournament. We can see that how systematically arrangement which is made in this beautiful cricket ground by the organizing committee, and a lot of hard work. You can see that advertisement board which is implemented around the ground. Some players dugouts, even for the spectators, the wonderful opportunities provided with the chair, giving some shelter. And in this hot condition, organizer knows that the spectators have to get some shadows, shelters provided. Altogether has been a fantastic hard work done by the organizing committee to make this big tournament, prolonged tournament, Rnfc Trophy 2026. Achu brought into attack. Acha Bannur. The starts with the delivery. Not correction, not Acha Bannur. It's not only Achu. Long off region lofted by Salam for a walkable single. With the addition of that single, scored Namuzan to 16 for 4. 17 for 4, correction. Here comes Achu again. This time again going for the run. Chance of run out, directed. And Mahesh is absolutely managed to save his wicket with, of course, nothing wrong with that run up. What is absolutely in the right line where the non-striker to be, but the bowler has got no idea where to hit the ball. Nice stroke, obviously once again safely down to deep long off. Both the batters are absolutely playing as per the condition required. It's 19 on the board for the loss of 4 wicket. Chance here for the fielder to take the catch. No, the ball landed safely between cover and deep cover. 20 for the loss of 4 wicket in the over number 4 is in progress. This time again one more leg by. All the runs are going to be very crucial. Leg by called by umpire. 21 for 4. The last over completed, over number 4, which is comes in, and after completion of 4 overs, Red Wings Rangers Kunjat Bail are searching for the right track. And they are 21 for 4. You are watching the prestigious Rnfc Trophy 2026. And before the next 2 overs going to start here, it's a time to change in voice as well as language. And it's time to bring Gopi to take over the microphone. The first time today in this prestigious Rnfc Trophy 2026. And good morning, Gopi. Welcome for the prestigious cricket tournament. Well organized. We can see that lovely arrangement is made here in this beautiful cricket ground. And I think it's for us it's the first time we are having a mic in this beautiful cricket ground, even though it's a venue which is almost belongs to my home, and I'm really loves this condition. Of course, I have shared the mic as a guest commentator, but as a commentator, the first time we are having a opportunity here to become the voice behind the team Rnfc. So thank you very much for the organizing committee, and over to Gopi. Thank you. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, आपका जहाँ तक सवाल है इस वक्त बिल्कुल सही बात आपने कहा। और पहली गेंद 5वीं ओवर की, और इसी के साथ विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त विकेट का, तो एक बेहतर साझेदारी यहाँ पर बन रही थी, और ये विकेट जो कि यहाँ पर गिरने के बाद ये साझेदारी यहाँ पर टूट चुकी है। देखिए कि हल्के से गेंद को पुश कर दिया था, और फॉलो थ्रू में बेहतर फील्डिंग इस वक्त गेंदबाज द्वारा। विकेटों पर निशाना दागा गेंदबाज संतोष ने, और उनका विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और जहाँ तक सवाल है विकेट का, तो इस विकेट के पतन के साथ तब 5वां विकेट इस वक्त गिरता हुआ रेड विंग्स कुंजत बाइल का। दे आर लुकिंग इन ट्रबल। इन फैक्ट इट्स 21 for 5 एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर।
नंबर 7 बल्लेबाज वैशाख का इस वक्त आगमन होता है और संतोष जप्पू जो कि एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए और इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज वैशाख जो कि नए बल्लेबाज इस बीच ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन के लिए और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर अब 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। तो 22 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 5th ओवर इन प्रोग्रेस और गेंदबाज संतोष ये गेंद ड्राइव किया फॉलो थ्रू इस वक्त मिसफील्ड गेंदबाज और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता मिड ऑन पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब कुल मिलाकर 23 रनों पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। महेश एक बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए चिप किया इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाते हुए फील्डर थोड़े से स्क्वायर तैनात 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। स्ट्रोक इस वक्त हवा में जरूर थी लेकिन अंतिम क्षण में गेंद जमीन पर टिपा खाती हुई और जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। Just gone for a mighty heave on the onside, not succeeded. Perfect leg cutter from the bowler संतोष और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में रन बल्लेबाज को नहीं मिला। अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद अच्छी गेंद इस वक्त गेंद को ड्राइव कर दिया गेंद को बल्ले तक हल्के से आने दिया गेंद को खेल दिया वाइड स्लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 25 in fact for the loss of 5 wicket in the over number 5 has been game to end. Better over संतोष को समाप्त हो चुके just 4 runs came from this over and a good spell also came to end from संतोष जप्पू 5 gone and after 5 overs Red Wings कुंजत बल still searching for the right track. It's 20-26 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता हुआ और निश्चित रूप से इस श्रृंखला का आयोजन किया है रहमतनगर फ्रेंड सर्कल ने अंडरआर्म नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर ए काउज एट कुद्रोली इस ध्येय वाक्य के साथ। और जहाँ तक सवाल है आज लोकल विभाग के मैचेस खेले जाते हुए और इस वक्त मुकाबला पहला मुकाबला जारी है रेड विंग्स कुंजत बैल और एसटीसी जप्पू के बीच में। गेंदबाज मोहित गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद जस्ट मिसिंग इनफैक्ट इट्स मिसिंग 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप एट द लास्ट मोमेंट और 1 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ 26 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा पैरों पर गेंद टकराई फॉरवर्ड शॉर्ट स्कोर लेग पर कहना पड़ेगा गेंद जब तक फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका। महेश एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 9 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर बैटिंग और 9 of 9 डिलीवरीज। महेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार मोहित की गेंदों का रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 28 इनफैक्ट 28 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। स्टिल 1 आउट टू गो आफ्टर दिस वन और मोहित अगली गेंद लेकर तैयार ये गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर निशु गेंद के नीचे आते हुए और जहां तक निशु मौजूद है वहां पर कैच छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस कैच को उन्होंने लपका खूबसूरती के साथ अपने ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए और इस बेहतर कैच की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है वैशाख का। देखिए किस तरीके से हुआ था बट निशु a man he just took the catch just diving towards to his top side at the last moment just jumping towards to his top side at the last moment in fact and because of that one man has to go to the pavilion. Wicket number 6 down for Red Wings Kunjat Bell. Still they are looking in trouble. It's 28 for 6 और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का रिलवान का आगमन इस वक्त होता हुआ और इस वक्त आउट होने वाले बल्लेबाज जो कि वैशाख आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। मैच नंबर 1 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट RNFC ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत यहाँ पर खेला जाता है सुंदर से विशाल से टिप्पू सुल्तान ग्राउंड पर कुद्रोली के। और मैच नंबर 1 में इस वक्त मुकाबला जारी है रेड विंग्स कुंजत बैल और एसटीसी जप्पू के बीच। दोनों संतुलित टीमें इस वक्त इस श्रृंखला के पहले मैच में भिड़ रही है और रिलवान नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए मोहित की गेंदों का रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा गेंद इस वक्त पहुंच चुकी है शॉट कवर पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। लेग बाई का इशारा और लेग बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 29 for the loss of 6 wickets. Just waiting to the ball to come on to his bat. Just
tucked away in front of the field at point and gone through for a quick single, and with that single Mahesh is now moving up to 10 of 10 deliveries. The side total is moving up to 30 for the loss of 6 wickets. एक बार फिर से संतोष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मोहित जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार रहा, माफ कीजिए मोहित इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया रिलवान ने लॉन्ग ऑफ पर 1 रन के लिए। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ मोहित इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और जहां तक ओवर का सवाल है तो ओवर इस वक्त पूर्ण हो चुका है मोहित का, और 6 ओवर पूर्ण होने के बाद स्कोर है इस वक्त 31 रन 6 विकेट के नुकसान पर, 31 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट। 4 विकेटें सिर्फ 6 रन पर गिरने के बाद एक बेहतर रिकवरी इस वक्त करते हुए बल्लेबाज रेडविंग्स कुंजत बैल के। अब स्कोर है 36 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर का खेल यहाँ पर बाकी 7 ओवर प्रति पारी खेले जाएंगे। 7 overs per side to be play. This is the first match. फर्स्ट इनिंग्स इज नाउ प्रोग्रेसिंग हियर। महेश जो कि इस वक्त पानी ग्रहण करते हुए एक बेहतर पारी, ऐसा कहना पड़ेगा शीट एंगस रोल इस वक्त मुख्य किरदार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए महेश 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 10 गेंदों कब तक वो सामना कर चुके हैं। और गेंदबाज अच्छू इस वक्त गेंदबाज यहां पर प्रारंभ करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ यहां पर रेडविंग्स कुंजत बैल के पारी में। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ और पहली गेंद लेकर अच्छू इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिलवान के लिए। गुड वन रफीका डिलीवरी, और गेंद को उछालने के प्रयास में चूके इस वक्त एक्स्ट्रा क्विक वन फ्रॉम द बॉलर रच्चू, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक बार फिर से गेंदबाज अच्छू गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद उछाला इस वक्त लंगोन पर, लेकिन फील्डर मौजूद, और कैच नंबर 2, कैच नंबर 1 इस वक्त लपकते हुए लंगोन के फील्डर नॉट क्वाइट होल्ड ऑफ दैट शॉट एट द लास्ट मोमेंट, एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस इन द रीप्ले। और गेंद को इस वक्त उछाला था जरूर, लेकिन नॉट क्वाइट मिडल गेट इन फैक्ट, और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल सीमा रेखा के अंदर। और इसी के साथ विकेट नंबर 7 यहां पर गिर चुका, 7th विकेट डाउन। नाउ द स्कोर इज 31 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। जस्ट 4 balls left in overall calculation in their innings। 4 गेंदें अब बाकी। The number 8 batsman is now comes out to the middle, यज्ञेश, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए। 4 गेंदें बाकी रेडविंग्स कुंजत बैल की पारी में, और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 गेंदों में रेडविंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। 3 विकेट सुरक्षित, और इस बीच गेंदबाज अच्छू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यज्ञेश अपने जूते के फीते को इस वक्त बांधते हुए, just tightening his lace of shoes, और गेंदबाज इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज यज्ञेश इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन के दिशा में, लॉन्ग ऑफ के दिशा में 1 रन के लिए। अगला मैच मेजबान टीम होस्ट टीम आरएनएफसी कुद्रोली का मुकाबला होगा यूनाइटेड पातूर के साथ। तो इस वजह से मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूं दोनों टीम के सदस्यों की कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। इस बार विकेट कीपर चुके और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाज 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। नाउ जस्ट 2 balls left इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स। और यज्ञेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ड्रिवन दैट वन, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, सिले मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। लास्ट बॉल लेफ्ट इन देयर इनिंग्स नाउ। और अंतिम गेंद लेकर इस वक्त अच्छू तैयार, महेश सामना करते हुए, फील्डिंग में जमावट इस वक्त कुछ हद तक चलते हुए, और ओवर की अंतिम गेंद लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अच्छू इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, महेश का शॉट इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, लेकिन फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ पानी की अंतिम गेंद पर महेश का विकेट यहां पर गिर चुका है। और ऐसा कहना पड़ेगा पारी के अंतिम गेंद पर छक्का लगाना चाहते थे, गेंद को उछाला जरूर, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके का स्ट्रोक था, लेकिन अगेंस्ट द विंड, और नदी के तट पर जो कि मैदान है तो इसकी वजह से इस वक्त हवा जो चल रही है उतनी तेज नहीं। और जहां तक सवाल है इस वक्त
हवे के रुख के खिलाफ इस वक्त स्ट्रोक को खेला था, लेकिन यहाँ पर फील्डर को प्राप्त करते हुए डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा के अंदर। और इसी के साथ रेड विंग्स कुंजत बैल की निर्धारित ओवर जो कि समाप्त हो चुके हैं। 7 निर्धारित ओवर समाप्त होने के बाद रेड विंग्स कुंजत बैल ने बनाए 34 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त इनिंग समरी इस वक्त मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। गेंदबाजी का विश्लेषण जो इस वक्त श्रीदेवी जप्पू के गेंदबाजों ने की है। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त लक्ष्य एसटीसी जप्पू के सामने 35 रनों का 35 द टारगेट सेट बाय रेड विंग्स कुंजत बैल फॉर एसटीसी जप्पू मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है। निर्धारित 42 गेंदों में 35 रन बनाने, रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 5 रन पर ओवर। और देखते हैं इन 7 ओवर में यानी निर्धारित 42 गेंदों में 35 रनों को क्या एसटीसी जप्पू के बल्लेबाज बना पाते हैं या नहीं। तो एसटीसी जप्पू की पार की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ सतीश के साथ, जब यहाँ पर एसटीसी जप्पू की पार की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much, Gopi. Welcome back once again for the innings of team Sridevi Cricketers Jaipur. And the target which is set for team Sridevi Cricketers Jaipur by Red Wings Kunjat Bail, exactly 35 to win this match. And wait and see how well the team Sridevi Jaipur will go and get this total. The good recovery, in fact, rather from Red Wings Kunjat Bail at one stage, struggling in the middle. We lost a wicket too early in the beginning, but it's been a good comeback. But still, it's not a huge total to chase down. But in this condition, morning condition, I think Red Wings Kunjat Bail will not going to give this match very cheaply. They got some very good bowling department in the side. Afiz brought into attack to bowl the first over for. And wait and see how well Afiz, the young man, will go into starts his first over of the power play. Signal came from umpire Suresh Mudabidri. The mandatory power play number 1 will go into start, and left-hand batter is on strike. Vineet facing his first delivery, and he got his first run. And opportunities created for the run out. Ril 1 at short mid-wicket region, couldn't manage to collect the ball neatly. Otherwise, the opportunities created for the run out. Vineet looks like he's a new face for the Sridevi Cricketers Jaipur as a left-hand batter. And Sahil will go in to take the strike. One of the most experienced man. We can see it in the picture. And lot of experience behind him. The wicketkeeper batter for the side of Sridevi Cricketers Jaipur. Afiz to continue. The first ball, typical Sahil's reverse sweep.
going to complete the single. He's up the mark straight away before Jalal will going to get that one at square leg region behind the square. Both opening batters off the mark with the single, and two without loss of any wicket. Vinith has got opportunity for him to grab the opportunity, send him as opening batter for the side, a young man. Oh, beautiful shot, set to the answer field. Oh, what a sharp shot! Absolutely bulleyes. Even though the umpire is asking for the third umpire, but I don't think the batter can be survived. What a pick up and throw. Magnificently done. Tanzim, the man, down at a short extra cover, and looks like he's in trouble. Even the batter has tried his level best to drag his bat, but always we can see that every time when there is a direct hit, the 90% which is goes into the result of fielding team, and rightly so, is back in the pavilion, is out. What a fantastic pick up and throw there from Tanzim. And it's been a harsh moment here for young man Vinith, has got opportunity to perform. Of course, if you get out in the form of catch out, bowled out, stumped out, anything, but when you are got out in the form of run out, always is a disappointment for any batter. That's why sometimes the fielding is such a important part of cricket. If you got a good fielders in your side, you can depend any small total with your effort in the field. That's why it's always important to have some good fielders, specialist in the inside the ring, specialist in the outfield, proper wicket keeper. Some of the faces which is favorite for the fielders, they're very good at some position. It's a 2 for 1. Hafiz has got a start here for the team. It's a 2 for 1 in the over number first is in progress, and STC Jaipur lost their first wicket. Sahil to take the strike. Oh, good shot. Hafiz, chance of run out. Oh, one more direct hit. Now it might be the batter may be safe, I don't know. But Rilwan Zaman, just have a look at it in replay. What a fantastic effort. Diving to his left, stops it and stops the ball in the left hand, and he hits the stump, and I think the batter might be safe because the technique just I'm always mentioning about dragging the bat, and this the experienced man Sahil is absolutely drags his bat in the right time. Just wait for the umpire decision. Not out is a call from the third umpire. The batter survived. This is what sometime we are having the commentary box in a square angle, so can easy for us to check a judgment. Is not in a straight angle. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ Rnfc ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ Rnfc ಕುದ್ರೋಳಿ will play against ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು. Oh my goodness, he's got a hand onto that. Jabbar, the man, couldn't manage to get the ball as he got a jump, but it's not good enough to Jalal, correction. The man fails to get the catch here from Hussain, the new batter. It's 4 for 1 in the over number first is in progress. Hafiz has been outstanding so far in this over. Bowling right arm over the wicket. Down the leg side. Judgment is not good enough. And the ball which is passing around the legs of the batter. Fair delivery called by a umpire. And Sahil just asking his partner Hussain, is that ball is good enough to call the fair delivery? And Hussain says yes, ball is in the line, inside the line. So good start here from Hafiz. Decisive Jaipur are 4 for 1 after completion of over number first. Good start there from Hafiz.
We got a very good time in that Eden Trophy. He is the man who is being the scorer in our commentary box department. Such a talent, not only as a cricketer but as a scorer. Definitely, we had some very good time in that commentary box along with Hafiz, because having a player as a scorer in our right is always we are getting some more information. The details of the players is always going to help the commentators, just like how Swastik is doing so far in our cricket journey as a scorer. He is also one of the player come scorer. And it's always going to be advantage for the commentators to get some information. Catch it is a goal. He drops it. My goodness, can you believe this? The man who is responsible for the run out, Tanzim, couldn't manage to take the catch. This has been a little bit hurting factor here for the bowler Rilwan. Correction of bowler, the bowler Yatnesh. That's a slight bit of taken lightly. He's not really ready for that. He's got some injuries maybe while trying to take the catch. I really understand what kind of injuries for Tanzim. It's 5 for 1. Lovely delivery across the line. So many players of Red Wings are pays the penalty by trying to play across the line. But luckily for this time, slight a bit above outside the line of off time here from Yadnesh for Sahil. It's 5 for 1. The morning condition looks like Tanzim is not really looking that much of comfortable in the field. Maybe ball hit the finger. If it is a little finger, it might be, I think it's a little finger. So 5 for 1. Sahil man has got opportunity to open the innings for Sridhar Cricket Jaipur. They definitely, I think it's a good choice sending him as opener for the side, because they're not chasing a big total here. 35 to win the match. Someone has to play long innings. Someone has to be there in the middle for at least for 3, 4 to 5 overs. Down the leg side, quicker and faster one. Ends again. Sahil misjudging that line around his legs. Again, he thought it might be a wide, but it's a quicker one compared to that previous delivery. Yadnesh bowler, faster one. Sahil has got no chance at all to react to that ball with the pace which is bowled by Yadnesh. No run scored. Drives, but set back to bowler. Once again, the dot ball. This is going to be an outstanding over there from Yadnesh so far. 4 deliveries, 4 bowled. 1 run conceded, 1 drop catch as well in this over. It's 5 for 1. Sridhar Cricketers Jaipur searching for the right track. Once again, a lovely change of line here from Yadnesh. Seeing Sahil is going for the reverse sweep as he bowled outside the line of leg stump quite deliberately. Watching the batsman's the movement. Premeditated reverse sweep is attempted, one of his favorites, Sahil. Now the pressure is building up. The butterfly in the stomach of the batter. For last delivery. Catch it is a call. This time he played it in the air, but safely down to cow point region for a single. The Sahil will go into retain the strike. Outstanding over there from Yadnesh. Just a couple of runs. It might be more better if Tanzim will going to complete that catch. But anyhow, SCC Jaipur are still struggling in the middle. It's 6 for 1. Not in the form of fall of wickets, but in the form of run rate. 29 more runs required for the victory in remaining 5 overs. The match is now evenly balanced. 30 balls remaining and 29 runs required for the victory. Lot of good number of crowd is enjoying the game of cricket. We have just observing one more year, very young talent commentator Kabir Kudroli is enjoying the game of cricket in his home condition.
in the dugout number 2. Good morning to Kabir Kudroli, famously known as Junior Gopi. 6 for 1. And we have Ramiz in our commentary box as state language commentator. Ramesh Mudabidre. Swastik as a manual scorer. In my right, Munaz, online scoring department. Maruf, correction. Maruf, online scoring department for Bedra Media, live telecast channel. Third over going to start. And Chetan brought into attack. A lovely start from him. Excellent flighted leg cutter. Defeats the bat of Sahil. Is looking absolutely uncomfortable in the middle. Now ball to ball run required here onwards here for the team Sridevi Cricketers Japu. Chetan. This time catch it is a call. Ball high up in the air. Who will go and take this one? Yajnesh. Not a captain of the side. Vaishak takes a catch. At one stage looks like it might be a misjudgment. The struggled innings of Sahil, which is constant. He just tried to break the shackle. After scoring 3 runs in 10 balls, he's back in the pavilion. This is a good judgment there by Yajnesh because they have to deal with that rotation of the ball, which is changing the direction with the wind. Vaishak, the man, captain of the side, completes the catch. The wicket number 2 gone. The match is now widely open. The first time the asking run rate now going over 6 runs per over. Ali Rnfc Kudroli ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. United Patur coming from long way, and from Patur means near to Puttur Sulya. Captain himself came into bat. The man is in good form in this season with the bat and the ball. As they came into bat here and picked up a single. It's got a wonderful tournament at the captain Nishu got a wonderful tournament at Mangalore, Jai Bharat Trophy, and even at Eden Trophy also. He's performed very well from the bat and ball. 7 for 2. 4 time in this over. Chetan, the bowler, classy bowler. Beautifully bowled, deflected. Like chance of run out. It might be all over for Nishu if the ball hits a stump. Right wings Kunjat Bail are absolutely missing this golden opportunity to get one more run out. Jalal, the man, once again in the picture, tried to hit the stump, but he missed the stumps. It's quite unfortunate because you are hitting the 3 stumps. You are watching the 3 stumps. The angle where Jalal is fielding the ball, easily you can get the 3 stumps out, 1 stumps out of 3. But he missed it. Nishu, the fortune favors the brave. He's got a luck here. 8 for 2. This time Nishu quite controlled. Has the merit of the delivery. Everything is right behind that stroke there from Nishu to pick the single. These two batters, left and right in combination, have to come back very strongly for the Sridevi Cricketers Japu. But a good bowling performance so far from the bowlers. Lovely delivery around the legs of the batter. One more tidy over wicket taking over is Kamsanen. What a great spell here from get over there from Chetan. Just a couple of runs in this over and a wicket after completion of over number 3. Chasing 35 to win this match. Sridevi Cricketers Japu are 9 for 2 and another 4 overs remaining. They have to get another 26 runs to win this match. 26 required from 24. The match is evenly balanced and the time to change in wise and the time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, absolutely fantastic bowling performance from Red Wings Kunjat Bail so far, and low scoring game. 9 from 2
9 for 2 in 3 overs. Looks like the match is evenly balanced. It's going to be anybody's game. And first match itself, it's going to be a fantastic game for cricket lovers. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, द मैच इज नाउ हेडिंग टुवर्ड्स टू नेल बाइटिंग फिनिश और बेहतरीन पहला मैच खेला जाता हुआ इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत। और अब इस बार रन के लिए दौड़ पड़े और 1 रन प्राप्त करने में सफल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है, 23 गेंदें बाकी, 23 balls left and 25 runs required in this situation. The match is now equally balanced. हुसैन और निशु इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए और इस वक्त अपनी टीम को सही मंजिल की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए यज्ञेश गेंदबाजी यहाँ पर जारी रखते हुए 6 रनों पर 4 विकेटें गिर जाने के बाद रेड विंग्स कुंजत बैल के बल्लेबाजों ने एक बेहतरीन कमबैक करते हुए अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेड गौरव स्कोर खड़ा करने में मदद की और आखिरकार 34 रन रेड विंग्स कुंजत बैल ने जोड़े और 35 रनों का लक्ष्य उनके सामने रखा। और एसटीसी जप्पू इस वक्त रनों के लिए संघर्ष करता हुआ 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके। चौथा ओवर प्रगति पर इस बार गेंद को खेल दिया और बैक हैंड थ्रो, लेकिन गेंद को ठीक तरह से बैक हैंड थ्रो नहीं कर पाए गेंदबाज यज्ञेश फॉलो थ्रू में और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से एक बराबर का टक्कर यहाँ पर हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है और यज्ञेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। निशु, इन दिनों में निशु एक बेहतरीन बल्लेबाजी के लय में दिखाई देते हुए ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर and he just got a single, and with that single run the scoreboard moving up to 12 for the loss of 2 wicket in the over number 4 in progress. और चेतन माफ कीजिए यज्ञेश इस वक्त अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। हुसैन जो कि इस वक्त सामना करते हुए यज्ञेश की गेंदों का ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए काफी बाहर की ओर गुजरते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और यज्ञेश ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ, गेंद जाती वाइड इस लॉन्ग ऑन पर, बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक फील्डिंग, लेकिन दूसरा रन लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को, लेकिन एक बेहतर फील्डिंग कहना पड़ेगा वाइड इस लॉन्ग ऑन फील्डर ने की थी इस वक्त। प्रीतम जो फील्डर थे अपने दाईं ओर दौड़ते हुए अपने एक हाथ से गेंद को पिकअप करते हुए तुरंत रिलीज किया एक बेहतर फील्डिंग के जरिए, लेकिन इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद को गैप पर खेला था बल्लेबाज हुसैन ने और 2 रन प्राप्त करने में सफल। हर रन के लिए संघर्ष इस वक्त जारी है और जहां तक सवाल है कुल रन संख्या क्या, तो 15 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। यज्ञेश फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, जस्ट मिसिंग और साथ ऑफ स्टंप और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 15 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो यज्ञेश अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद दिस टाइम आई थिंक इज गॉट अ बैक फुट ऑन टू हिज द लास्ट मोमेंट, बैक फुट मौजूद था, हालांकि विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट जरूर झटका है गेंद को कलेक्ट करने के बाद, लेकिन बल्लेबाज का बैक फुट क्रीज पर मौजूद, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। 4 ओवर की समाप्ति, 4 overs completed. STC Jaipur still searching for the right track. It's 15 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs. 3 overs left in overall calculation in their innings. 20 runs exactly required in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say the match is now still in balance. अगला मैच यूनाइटेड पातूर और RNFC मेजबान टीम होस्ट टीम के बीच खेला जाएगा, तो इसलिए एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट दरख्वास्त निवेदन करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। जहां तक इस मैच का सवाल है, बराबर का टक्कर जो कि यहाँ पर जारी, स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, 20 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। यज्ञेश इस वक्त उनका ओवर पूर्ण हो चुका है और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नए गेंदबाज महेश इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और निशु सामना करने के लिए तैयार हो। जहाँ तक सवाल है निशु का, इन दिनों में एक बेहतरीन बल्लेबाजी के लय में और नजर आते हुए, रिदम बेहतरीन बैटिंग रिदम में और नजर आते हुए
पिछले कई श्रृंखलाओं में उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है और यहाँ पर उस श्रेष्ठ लय को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश में 4 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों कब तक को सामना कर चुके हैं और गेंदबाज महेश इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। निशु सामना करते हुए हल्के से गेंद को मोड़ दिए कलाइयों के सहारे स्टेप्स आफ्टर कवरिंग द स्टंप्स वर्किंग अवे ऑफ द टोज टर्न टू अ स्क्वायर लेग फॉर अ सिंगल और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। इस बार गेंद को खेल दिया सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए हुसैन इस वक्त हल्के से गेंद को इस वक्त पुश कर दिया था, ये देखते हुए कि कवर पॉइंट फील्डर जो तैनात है थोड़े से पीछे और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ अपना छोर बदल चुके हैं। 17 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर महेश फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए निशु के लिए यह गेंद धीमी गेंद थी और इस बार बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को उछालना चाहा लेकिन बैक टू द बॉलर फॉलो थ्रू में गेंदबाज को बीट नहीं कर पा। एक बेहतर फील्डिंग फॉलो थ्रू में गेंदबाज महेश करते हुए स्कोर रुक चुका है 17 रन 18 रन और चाहिए 15 गेंदें बाकी, 15 बॉल्स लेफ्ट, 18 रन्स रिक्वायर्ड, स्टिल दे गॉट 8 विकेट्स केप्ट इंटैक्ट और गेंदबाज महेश अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। निशु इस वक्त फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त सामना करते हुए महेश की गेंदों का और महेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था, इन हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ द टॉस, गेंद को उछालना चाहा प्लम्ब इन फ्रंट, इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है निशु का। ऑफ द टॉस गेंद को साइड पर मोड़ना चाहता, चूंकि बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद और गेंद स्टंप्स को केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद को खेलना चाह, गेंद उनके पैर पर टकराई और देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था और इस बार प्लम्ब इन फ्रंट अंपायर ने घोषित किया निशु का और निशु का विकेट गिर चुका। निशु का बेशकीमती विकेट कहना पड़ेगा क्योंकि इनफॉर्म बल्लेबाज निशु आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और बहुत ही बड़ा झटका कहना पड़ेगा STC जप्पू को लग चुका है 17 रनों के ऊपर। निशु डिपार्ट्स एंड नाउ इट्स 17 for 3। रहमतनगर फ्रेंड सर्कल ने इस श्रृंखला का इस शानदार श्रृंखला का आयोजन किया है RNFC फेस्ट 2026 के नाम पर इस सुंदर से विशाल से टिप्पू सुल्तान मैदान कुद्रोली के इस मैदान पर और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए मैच नंबर 1 में कड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है STC जप्पू और रेड विंग्स कुंजत बैल के बीच। मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है और महेश इस वक्त नए बल्लेबाज नवाज बिलाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और नवाज बिलाल जो कि इस वक्त सामना करते हुए महेश की गेंदों का। महेश दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, गेंद का पीछा करते हैं फील्डर लेकिन बेहतर फील्डिंग वहां पर, फैंटास्टिक फील्डिंग मेड बाय द फील्डर, चांस ऑफ रन आउट एंड द स्ट्राइकर एंड इज गॉन इन फैक्ट। मिसअंडरस्टैंडिंग कॉस्ट यू वन ऑफ द बैक इनटू द पेविलियन और यहाँ पर हुसैन जो पहले रन पूरा कर चुके थे दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नवाज पहला रन पूर्ण करने के बाद कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से हुआ था, 2-3 कदम दौड़कर वहां पर रुक गए और आसान सा रन आउट इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ। तो हुसैन का बेहतर बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका भी विकेट इस वक्त गिर चुका है और निशु और हुसैन इन दोनों का विकेट गिर जाने के बाद 2 गेंदों के अंतराल में इस वक्त सहज रूप से दबाव STC जप्पू के बल्लेबाजों के ऊपर 18 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। इट्स 18 for 4, 13 बॉल्स लेफ्ट, 17 रन्स रिक्वायर्ड। बेहतरीन अंपायरिंग का पैनल इस श्रृंखला के लिए नियुक्त किया गया है। श्रीमान रोलैंड पिंटो, श्रीमान श्रीरज कुंपल और श्रीमान सूरज विजय लक्ष्मी और श्रीमान सुरेश मूडाबिद्री इस श्रृंखला के लिए अपना अंपायरिंग का किरदार बखूबी अदा करते हुए और निश्चित रूप से ये पहला मैच काफी दिलचस्प और रोचक होता दिखाई देता हुआ इस मैदान पर। शाहनवाज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, बाएं हाथ के बल्लेबाज और चौथे बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शाहनवाज ने मिड विकेट पर गेंद पहुंची, फील्डर थोड़ी से पीछे तैनात, एकमात्र बल्लेबाज को मिलेगा। न सिर्फ बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं शाहनवाज बल्कि बेहतर बल्लेबाजी भी वो कर लेते हैं और यहाँ पर सिंगल के साथ अपना
रनों का सिलसिला वो शुरू कर चुके हैं और 5 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त एसटीसी जप्पू का स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। नाउ 2 ओवर्स लेफ्ट, 12 balls remaining, 16 runs to get. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। और 2 ओवर का खेल बाकी 16 रन चाहिए। हालांकि कुछ हद तक तख्ता जरूर इस वक्त रेड विंग्स कुंजत बैल का भारी लगता हुआ, लेकिन बाउंस बैक करने का मौका जरूर है एसटीसी जप्पू के बल्लेबाजों को इन बचे हुए 2 ओवर में। और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज हफीज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शाहनवाज सामना करने के लिए तैयार। 16 to get from remaining 12 deliveries. Still I must say it could be anybody's game in this situation. और गेंदबाज इस बीच ओवर की शुरुआत करते हुए हफीज शाहनवाज जो कि सामना करने के लिए तैयार। काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता और पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर शाहनवाज ने और गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और निश्चित रूप से डीप मिड विकेट फीडर खड़े हुए थे जिन्होंने जीतोड़ कोशिश जरूर की। देखिए रिप्ले पर दिखाया जा रहा है मेरा desperate attempt to catch that ball, stop that ball, but can't succeeded and it's gone over the fence for a maximum. और जरूरतमंद छक्का इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज शाहनवाज के बल्ले से। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, शाहनवाज न सिर्फ बेहतर गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं बल्कि अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और यहाँ पर अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का अनावरण उन्होंने किया। और यहाँ पर देखिए बार बार दिखाया जा रहा है कितनी जीतोड़ कोशिश डीप मिड विकेट फील्डर ने की थी इस वक्त गेंद को रोकने की, गेंद को ढकेलने के सीमा रेखा से के अंदर, लेकिन नाकामयाब और गेंद सीमा रेखा के पार हो चुकी है छक्के के लिए। 10 रन चाहिए। समीकरण इक्वेशन इस वक्त आसान बनता हुआ। 11 balls remaining, 10 runs required। और शाहनवाज का ये छक्का निश्चित रूप से ऐसा करना पड़ेगा, एसटीसी जप्पू को इस मैच में वापस ला चुका है। 25 द स्कोर, 4 विकेट्स डाउन। और गेंदबाज इस वक्त अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। गेंद के लिए तलाश इस वक्त जारी है और रखेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। 10 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी। अगला मैच यूनाइटेड पातूर और आरएनएफसी कुद्रोली मेजबान होस्ट टीम के बीच खेला जाएगा। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। और गेंद को इस वक्त बदल दिया जा रहा है और अंपायर गेंद को बदलने के बाद दूसरी गेंद को उतने ही पुराना इस वक्त करते हुए और उसके बाद गेंद को सौंपी जाएगी गेंदबाज के हाथों में। 10 रन बनाने, 11 गेंदें बाकी। अंपायर जमीन पर गेंद को मट्टी में इस वक्त घिसते हुए और गेंद को उतनी ही पुरानी इस वक्त बनाते हुए जितनी पहली गेंद पुरानी हो चुकी थी। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो हफीज अपने पहली गेंद पर छक्का प्रदान करने के बाद देखना है कि अपनी अगली गेंद पर किस तरीके का कमबैक वो यहां पर करते हैं। और शाहनवाज जो कि छक्का लगाने के बाद काफी आत्मविश्वास पर इस वक्त नजर आते हुए सामना करने के लिए तैयार। हफीज की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट। हफीज इस वक्त तैयार, स्वीप कर दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती हुई बल्लेबाज को मिलेगा। जस्ट अ सिंगल द कॉट with a single run the scoreboard moving up to 26 for the loss of 4 wicket, 9 to get now from remaining 10 deliveries। और निश्चित रूप से यहाँ पर एक बेहतरीन संघर्ष हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट आरएनएफसी ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार शाहनवाज के लिए स्ट्रेट इनटू द हैंड्स ऑफ फील्डर एट पॉइंट। नवाज ने गेंद को इस वक्त उछाला जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा प्लेसमेंट बिल्कुल गलत और पॉइंट पर जो महेश फील्डर थे गेंद उनके हाथ में पहुंची। ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को हल्के से चौड़े विकेट चिप करना चाहते थे सिंगल के लिए, लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। प्लेसमेंट गलत और पॉइंट पर महेश जो फील्डर खड़े हुए थे अपनी दाईं ओर जाते हुए इस कैच को बेहतर जजमेंट के साथ इस वक्त लपका। और इस बीच विकेट गिर चुका है और एक और विकेट निर्णायक मोड़ पर एसटीसी जप्पू यहां पर खो चुका है।
Now the score is 26 on the board for losing 5 wickets. 9 balls left, 9 runs required. और नए बल्लेबाज का इस वक्त आगमन होता हुआ न्यू बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. एसटीसी जयपुर के एक और अनुभवी खिलाड़ी का आगमन होता हुआ मोहित, जो कि इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए एक बेहतर ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते हैं. मोहित एसटीसी जयपुर के लिए इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर जाते हुए और इस वक्त तो सामना करेंगे गेंदबाज हफीज की गेंदों का. और हफीज अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार मोहित के लिए. फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और कुल मिलाकर 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात. काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ. लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग पर डीप स्क्वायर लेग पर इस वक्त महेश जाते हुए पीछे की ओर. और हफीज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट मोहित के लिए. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद मोहित के लिए. हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया. कलाइयों के सहारे गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर, जहां पर जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 1 more run added to the total and with that single from the scoreboard moving up to 27 for the loss of 5 wicket. Now 8 to get from 8 deliveries. Still the match is now equally balanced. और जहां तक सवाल है इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज का, शाहनवाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. नवाज जो कि पिछले 2 गेंद पहले आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं और शाहनवाज जब तक मौजूद है ऐसा कहना पड़ेगा एसटीसी जयपुर की उम्मीदें यहाँ पर बरकरार है. और इस बीच गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया. दमदार स्ट्रोक इस वक्त शाहनवाज का. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर गेंद पहुंचे. 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचा बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट द्वारा बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके हैं. जोखिम भरा रन था. खासकर मोहित जो कि डेंजर एंड की ओर दौड़े थे, आखिरकार रन पूरा करने में सफल. इससे पहले कि थ्रो पहुंचे गेंदबाज के हाथों में और 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर. 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओपन नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और जहां तक सवाल है 7 रनों का, 7 गेंदें और 7 रन चाहिए इस वक्त विजय के लिए. 6 रन चाहिए कहना पड़ेगा. इस बीच गेंद को खेल दिया इस वक्त. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली. In fact, he just got a single, and with that single from the scoreboard moving up to 30 on the board for losing 5 wickets. And over number 6 has been came to an end. 6 gone, 5 to get from remaining 6 deliveries. और तख्ता कुछ हद तक एसटीसी जयपुर का भारी जरूर लगता हुआ, लेकिन कमबैक करने का मौका जरूर है इस अंतिम ओवर में रेड विंग्स कुंजत बैल के गेंदबाजों को. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ RNFC as well as United Patur, please report to the stage immediately for the toss procedure. अशोक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. अशोक इज नाउ स्टार्ट्स द फ्रेश प्रोसीडिंग्स और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त शाहनवाज, जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी करते हुए 11 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 5 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है. शाहनवाज इज बैटिंग ऑन 11 out of 5 deliveries with a strike rate of 220. And he's now going to face the bowling of Ashok. 5 to get from 6 deliveries. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार है. यह गेंद इस बार fantastic delivery, but that is an avoid. It missing too far outside the off stump at the last moment. गेंद को इस वक्त खेलने के प्रयास में चूके विकेट कीपर ने विकेट भी जरूर उखाड़े, लेकिन बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित. और जहाँ तक रनों का सवाल है, वाइड का ये रन उनके खाते में जोड़ा जाएगा. 30 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. 6 गेंदें बाकी, 4 रन चाहिए विजय के लिए. और स्क्वायर एंगल पर हमारा कमेंटेटर बॉक्स रहने की वजह से गेंद को जज करना इस वक्त काफी हद तक मुश्किल हो रहा है हम कमेंटेटर्स के लिए. और इस बीच ये गेंद, बेहतर गेंद, फैंटास्टिक गेंद, दिस टाइम इज गॉन. इन फैक्ट ही लॉस्ट हिज विकेट. फैंटास्टिक वर्क मेड बाय विकेट कीपर बिहाइंड दिस टाइम. सबसे कहना पड़ेगा अपना बैकफुट को कुछ हद तक लिफ्ट किया था, उठाया था इस वक्त बल्लेबाज ने, और इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विकेट उखाड़ दिया. देखिए किस तरीके से हुआ था. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. आउटस्टैंडिंग वर्क मेड बाय द विकेट कीपर बिहाइंड द स्टंप्स. Salam, and because of this outstanding wicket keeping, 1 more wicket lost. Shahnawaz the man departs for 11 out of 5 deliveries and 31 for 5, 31 for 6 in fact.
Now 4 runs to get from remaining 5 deliveries. 4 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी. नए बल्लेबाज अच्छू इस वक्त उनका आगमन यहाँ पर होता हुआ. निश्चित रूप से चंद डॉट गेंदों की सख्त दरकार यहाँ पर कमबैक करने के लिए. रेड विंग्स कुंजत बैल के गेंदबाज अशोक को, और जहाँ तक एसटीसी जप्पू का सवाल है, उन्हें इस वक्त चाहिए 4 रन बचे हुए 5 गेंदों में. और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज अशोक तैयार. अंपायर विकेटों को सही करने के बाद अपने स्वस्थान पर लौटते हुए. और गेंदबाज इस वक्त तैयार अशोक का सामना करते हुए इस वक्त अच्छू को. और अच्छू देखना है कि अगली गेंद पर किस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर अपनाते हैं. दाहिना तो बढ़ता विकेट, गेंदबाज की गेंद ऑन साइड पर मोड़ दिया. 2 स्क्वायर और गेंद इस वक्त नेट्स के बाहर जा चुकी है 2 रनों के लिए. कपल ऑफ रन्स एडेड, 2 runs added to the total. और इन 2 रनों के साथ विजय के निकट होता हुआ इस वक्त एसटीसी जयपुर. नाउ द स्कोर इज 33 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, जस्ट 2 to get from remaining 4 deliveries. 4 गेंदें बाकी, 2 रन चाहिए. और गेंदबाज अशोक इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए. अगर लगातार 2-3 डॉट गेंदें अशोक यहाँ पर फेंकते हैं तो निश्चित रूप से कमबैक करने का मौका जरूर है उनके टीम के लिए. और इस वक्त गेंद के लिए तलाश जारी है. गेंद हालांकि नेट्स के पार, झील के पास इस वक्त जा गिरी है. और मांग इस वक्त की जा रही है शायद दूसरी गेंद के लिए. और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है. 2 स्क्वायर गेंद को उछाला था इस वक्त बल्लेबाज आचू ने 2 रन के लिए. और सिंगल, 1 declared in fact, so just a single now. अब इशारा होता हुआ अंपायर से कि ये 2 रन नहीं बल्कि सिर्फ 1 रन है. पहले 2 रन की घोषणा की थी, अब घोषणा करते हुए कि गेंद 1 रन सीमा रेखा के बाहर इस वक्त नेट्स के पार जा चुकी है शॉर्ट फाइन लेग पर. और द स्कोर बोर्ड इज नाउ 32 on the board. That means 3 to get from remaining 4 deliveries. 4 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए विजय के लिए. और देखना है कि अगली गेंद पर अशोक इस तरह कमबैक करते हैं यहाँ पर. तो गेंद को इस वक्त हालांकि उतनी ही पुरानी बनाते हुए जितनी पहली गेंद थी. लगातार ऐसा कहना पड़ेगा इस मैच में दूसरी बार गेंद जो कि बदली जा रही है. और गेंदबाज अशोक इस वक्त तैयार. और अच्छू इस वक्त सामना करते हुए. 4 गेंदें बाकी, 3 रन चाहिए विजय के लिए. और ओवर की अगली गेंद लेकर अशोक इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग. दिस इज एन एब्सोल्युटली नॉट अ गुड बॉलिंग. लेग स्टंप से बाहर के फेंके दिशाहीन गेंद. 1+1 2 runs added to the total. और इन 2 रनों के साथ scores are now level. Now just 1 run required from remaining 4 deliveries. और लगभग सारे खिलाड़ी इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर आते हुए ये गेंद उछालना चाहा. बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, डॉट डिलीवरी. नाउ 3 balls left, 1 run required. निश्चित रूप से अगर 2 लगातार गेंदें यहाँ पर डॉट करते हैं गेंदबाज अशोक तो शायद यहाँ पर कमबैक करने का सवाल है उनके टीम के लिए. ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट. और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. मोहित द मैन डिसमिस्ड. Extra quicker delivery from the bowler and he just got the wicket of the batsman. And just have a look at this in the replay. और यहाँ पर देखिए रिप्ले पर क्रीज के कोने से हालांकि ये गेंद को फेंकी थी और गेंद लगभग उनके बैक लेग पर टकराई. बिल्कुल स्टंप्स को केंद्रीकृत कर आते हुए. और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस वक्त उन्हें आउट घोषित करने में. विकेट फॉलन. नाउ 2 balls left, 1 run required. तो जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का इम्तियाज नंबर 17 की जर्सी पहने इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. 34 द स्कोर, 7 विकेट्स डाउन, 2 balls remaining, 1 run required. Absolutely terrific match is now progressing here. और देखना है कि इस गेंद पर बल्लेबाज रन बना पाते हैं या नहीं. इस बीच ये गेंद ड्राइव किया, कैच छूट चुका है. और इसी के साथ रन आउट नहीं हो चुका है इस वक्त नॉन स्ट्राइकर. और इसी के साथ एसटीसी जयपुर registered a thrilling victory with just 1 ball to spare against Red Wings Kunjatbal in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, RNFC Trophy 2026.
They defeated Red Wings Kunjat by 3 wickets with just 1 ball left in their innings, and they reached the target of 35 in 6.5 overs. मैच समरी इस वक्त मॉनिटर पर स्क्रीन पर आपके सामने दिखाया जा रहा है. Shahnawaz top scored with 11 runs of 6 deliveries, well supported by Hussain, who scored 6 runs. और जहाँ तक सवाल है अंतिम कार in 6.5 overs, STC Jaipur reached the target of 35 for losing 7 wickets, and they won the match by 3 wickets with just 1 ball to spare. So match number 1 has been came to an end, and the match number 2 is now going to start between United Patur versus the host team Rnfc Kudroli, and that match will be coming up live exclusively right in front of you within just a short while. So man of the match, undoubtedly the man who bowled very well for the first of their innings, and he bowled 1 over, conceding 5 runs and got 2 wickets. And after that, in the batting, later he come and he hit an important 6 in the important stage of the match and scored 11 runs of just 5 deliveries with a strike rate of 220. And because of this all-rounding performance, Shahnawaz of STC Jaipur adjudged the man of the match. Request Shahnawaz to please come to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Shahnawaz of Sridevi Cricketers Jaipur adjudged the man of the match for his all-rounding performance. So that's it for the match number 1, and the match number 2 is now going to start between United Patur versus Rnfc Kudroli, the host team. And that second match of this prestigious cricket tournament RNFC Trophy 2026 is now going to start within just a short while. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद आज पहली बार मेरे एक और काबिल दोस्त प्रतिभाशाली कन्नड़ा कमेंटेटर श्रीमान हफीज मुदब्बिर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब यहाँ पर दूसरा मैच शुरू होगा. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿರವರೇ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಶಾನವಾಜ್ ಅವರಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶಾನವಾಜ್. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ರೂವಾರಿಗಳು, ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ತಂಡಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೀಗ ಎರಡನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವು ಕೂಡ ಹೌದು. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗುವಂತಹ ಎರಡನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ 2003ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನ 9 ದಿವಸಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿತೈಷಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಊರಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದೆಷ್ಟು ಹಿತೈಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಈ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ವೈಖರಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೋ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೋಟವನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಆ ಊರಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಡ್ರೋನ್ ಶೂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭದ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾದಿಕ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಇದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವು ಕೂಡ ಹೌದು. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ 2 ಎಸೆತಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನವಾಜ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹೊಡೆತ ಬಂದಿತ್ತು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್. ಈಗಾಗಲೇ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಆ ಲೈವ್ ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 3 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ವೈಫಲ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ 3 ರನ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗಭರಿತವಾದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್ ಈಗಾಗಲೇ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ವೇಗಭರಿತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ರನ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓವರ್. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಳಿಕ 2 ಸಿಂಗಲ್ಗಳು, ಆ ಬಳಿಕ 3ನೇ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್. ತದನಂತರ 1 ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 2 ರನ್ಗಳು. ಒಟ್ಟು ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್. 7 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಈ ದಿವಸ ಮಂಗಳೂರು ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್ನ ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ SDC ಜಿಪ್ಪು ರೋಚಕ ಜಯವನ್ನ ಕಂಡಿತು. ಇದೀಗ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರುವ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನವಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಕೆವಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಇದು
ಲೆಗ್ ಬೈ ಸೂಚನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ 9. 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾದಿಕ್. ಕೆವಿನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೆವಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಇದು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೆವಿನ್. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3ನೇ ಎಸೆತ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 10 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ತಂಡ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ, ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗದೆ. ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 33 ಮುಜಮ್ಮಿಲ್, RNFC ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 14, 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆದಂತ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ. ನವಾಜ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಸಾದಿಕ್ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಾದಿಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಬೋಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ. ಜಲಮಯೂರ್ ಬೋಟ್ನ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನ, ಆ ಬೋಟ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ಕೂಡ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026ರಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೂಟದ 2ನೇ ಓವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಕವರ್ ಡ್ರೈವ್, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1, 2 ಈ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳನ್ನ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಟ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 15, 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ಅನ್ನುವಂತೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್ ಅಂತೂ 7 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಅಶು. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದರಂತೆ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್. ಒಟ್ಟು 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಎಸ್,
ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ವೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ವೈಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ವೈಡ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೋ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ, ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಾಜ್ ಅವರಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆದಂತಹ 1.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 11 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಜ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾದಿಕ್. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ರಿಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹಿಂಬಾಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. 2 ರನ್ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಟ್ಟು 20 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಕರಾವಳಿಯ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 9 ದಿವಸಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬ. ಮಂಗಳೂರು ವಲಯದ ತಂಡಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಯುವ ಆಟಗಾರರು, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ, ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ. 3 ಓವರುಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರನ್ನೇ ಸೇಲು RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 13 ಚರಣ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನು ಕೂಡ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭ, ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಸರಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾದಿಕ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರ್. ಸಾದಿಕ್ ಆರಂಭದ 3 ಓವರುಗಳವರೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಆಟವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾದಿಕ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಕ್ತಿಯ ಕಡಿಮೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗ ಸಾದಿಕ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚರಣ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚರಣ್. 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಇದೀಗ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಜೀಮ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಜೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಜೀಮ್ 1 ಓಟವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 22 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 22 ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವಿಕೆಟ್. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚರಣ್
ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದಂತಹ ಶೈಲಿ, ಹೊಡೆದಂತಹ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಚರಣ್ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 25 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಚರಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನವಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಜ್, ಆ ಬಳಿಕ ಸಾದಿಕ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನವಾಜ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಸೀಂ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3 ಓವರುಗಳ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಧ್ವನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿವಸದಿಂದ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಟಗಾರರ ಆ ವೈಖರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ರೀತಿ, ಪಂದ್ಯದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಶೈಲಿ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ. ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. Thank you so much, Rafiz Mudabidre, for your word of appreciation, and thank you very much, and thankful for that. And we are just making an announcement for the next match. Sarvagni Urva and Reliance Katipalla. I request both the teams, please complete your formalities of signatures. Meanwhile, the wicket which is back in the pavilion in the first delivery of the over number 5. And Rnfc once again strikes with the wicket in the over number 4. Just have a look at the replay. Oh, it is absolutely not a good kind of technique there from the batter. Even the ball is outside the line of leg stump too far. Instead of is going for the big shot, he just tried to walk the ball on the onside region. Pays the penalty for that. Wicket number 2 gone. It's 26 for 2. And the bowler brought into attack Muzamil, one more well recognized player in the Rnfc side host team, is taking part in this second match of day number first of the prestigious Rnfc Trophy 2026. The new batter came into bat here is Praveen, the man who won the man of the series with the excellent performance. And won the man of the series for his outstanding all-round performance in that tournament Eden Trophy 2026. What a fantastic player who performed very well for Team Matrix. Picked up 11 wickets in that tournament, scored 27 runs. He bowled 3 maiden overs in that tournament. And Praveen, now wicketkeeper missed it. Even the short third man fielder is missed that one. It's not a good work from Rnfc wicketkeeper and the fielder. The by call by umpire that will go into frustrate the bowler Muzamil, as the scoreboard now moves on to 27 for the loss of 2 wicket. That brings Nawaz into strike now. Oh, drops it! My goodness. The Firoz, the most experienced campaigner at short extra cover, is looking for the dive, but I don't think whether it is required for the dive which is required for that ball, which is where almost came to him, but he just wanted to enjoy this condition here of this beautiful cricket ground. Lovely delivery from Muzamil. Praveen once again tried to hit across the line. 3 dot balls in this over from Muzamil. This is turning out to be a very, very good over from the point of view of a team Rnfc Kudroli.
5 dot balls almost, because wicket in the first ball, and we can see that leg buys, 2 dot balls altogether. It's been a great performance here from Muzamil so far in this over. Right arm over the get balls to Pravin this time a gentle push. This time he realizing that not to play the dot balls, he may retain the strike for the next over. Great over there from Muzamil. Just a couple of runs in this over, and after completion of over number 5, it's 29 for loss of 2 wicket. You're watching prestigious Rnfc Trophy 2026. The cricket test is in progress. Of course, we are just talking about this cricket tournament. It's a prolonged, it's a huge cricket tournament, Rnfc 2026. And thankful and grateful for the all are behind this cricket tournament. We are thankful and grateful for ASR Fisheries, Dakke Bandar Mangalore, for your wonderful contribution. Air Trading Dera Dubai, and Malpe Fresh Marine Export Private Limited. And we are really thankful for these 3 pillars of Rnfc: Samir Shakib from Saudi Arabia and Shabik from Bahrain. They are sitting there in Gulf country, but they are absolutely contributing for the success of this Rnfc Trophy. And they are absolutely behind the screen, but lot of hard work which is made to organize such a big tournament in this most beautiful Tipu Sultan cricket ground. Starts with the over, and the bowler brought into attack, Kevin from the commentary box, and correction from the road end. And the first ball is right on the money, right on the target, and batter couldn't manage to do anything for that ball. And 1 run taken, in fact, in the form of from the bat. And this time, well, stop again. The same fielder is in the picture. Firoz, the very good leg spin bowler as well. Just trying to get extra cover. He fields the ball very well, but couldn't manage to complete that field. Ball just slipped out of his hand. Kevin balls. Pravin wanted to go for a reverse sweep. Doesn't get proper connection. Just a single. With the addition of that single, scope moves on to 32 for loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. 6 in progress, correction. Penultimate over. Lovely delivery coming into the batter in the negation. And Nawaz is again missed it completely. United Pathur, which is neighboring district. It's almost in the border of Karnataka and Kerala. This time reverse sweep comes into play. Down to deep long on by switch it by Nawaz. He will go into get the single for that. With that single, scoreboard moves on to 33 for loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. Rnfc, they're playing in their home condition, being the host. They wanted to enjoy the condition, much familiar for them. Praveen reverse sweep doesn't get proper connection, but filled a single. They were looking for second. Again, that little bit lazy fielding there by the fielder in the deep long on, and couple of runs which is completed. After completion of over number 6, United Pathur 35 for the loss of 2 wicket. The last over remaining, just under 6 runs per over. Run rate progressing. Kevin completes his 2 overs quota. 2 overs no maiden, and conceded 10 runs, and he didn't pick up a wicket, but very economical. 5 runs per over from Kevin. All have done a great job. Even Charan is bowled brilliantly in the 3rd over, and bowled a very decent over of just a couple of runs and a wicket. And Riaz, Kevin, all have done a great job. Riaz, everybody knows, experienced man for the Rnfc, being the player for NM Cricketers Mangalore for a long time. The jersey number 10 as always loves that number. Ashu brought into attack to bowl the last over. Nawaz will go in to take the strike. Last opportunity for United Pathur to get into the good total. Again, they wanted to go for a run. Chance of run out. Easy job for the wicketkeeper behind the stump. Bails, which is dislodged, but very lately, and it's very interesting to see that. That shows that how soft the ball is.
is for this tournament. Just have a look at the replay. Hit the stumps and it's take a little bit time. I think Praveen, if runs little bit quick, it can be a safe. Because even the ball has got not that much of strength to dislodge the bails. If underarm throw, not good enough to make bails off from the stump, the groove of the stump. 35 for 3, last 5 balls remaining. Newman with the jersey number 67 walks towards the middle. Shifas, and this is what a beautiful way we can see that typical coastal Karnataka, and fishing is which is absolutely their heartbeat and their ultimate traditional profession. They love that profession and played it nicely. Long off, chance of run out. One more wicket is back in the pavilion. Nawaz back in the hut. And then Shifas, I can see that played it very nicely. The gap towards the extra cover region. The fielder is so quick to react to that one from the long off. Pick up and throw. And straight to the hands of fielder. And it completes 4 minutes. Ashu. This is what we are talking about. This is traditional fishing. Of course, now the fishing which is absolutely advanced for a high level. But in the beginning, the coastal Karnataka in Karavali, this is one of the oldest technique of making a fishing using the boat which is made from wood. And of course, one of the most difficult job. Outside the leg stamp, no, it's on the leg stamp, and batter just tried to play across the line. Pays the penalty for that. Shipas departs. One more wicket back in the pavilion of United Patur. Ashu strikes again. The batter is misjudging. That might be the ball is. Oh, that was a beautiful leg cutter, isn't it? Last moment, the ball has got a deviation. Otherwise, the ball can make a contact with the bat. Just have a look at it deeply. The ball almost outside the line of leg stamp. The leg cutter. Excellent bowling action. Just have a look at the deviation. After one bounce, 2 balls, then got a turn. It's absolutely surprised the batter, and even the wicket keeper has got a big smile in his face. ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗವಿದೆ ಹಿಂದೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕವಿನ ಕೊಠಡಿ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಬೈಕನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ವಾಹನಗಳು ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ Zubair came in to bat here. One more good all-rounder, useful batter down in the order. Zubair, big striker of the ball and a very good bowler. 37 for 5 in the over. Number 6-7 is in progress. Last couple of deliveries left in their innings. Ashu balls to Mustafa. Wicket keeper missed it, and Riaz is also missed it. This is very crucial runs, I can tell you, by in the form of by. That will go into really hurt the bowler. What could be a dot ball? They got a couple of runs. 39 for 5. One shot of 40 in the over number. Last delivery of the last over. Nice tricks that one down to square leg region. Charan, the fielder, the good fielder in the deep, and easily done by the wicket keeper after getting a throw from Charan from the deep. That's it. United Patur, they finish their innings of 7 overs with 40 on the board, and they set a target of exactly 41 to win this match. This is, we can see that in the big screen, they are the absolutely the main pillar of this cricket tournament. Special thanks to Samshuddin HPT, the standing corporator of Kudroli ward. He is also a former cricketer, and these all are our proud sponsors and donors who are heartily contributed for the success of this cricket tournament. Rnfc Trophy 2026. The Cricket Fest is in progress in the slogan of Cricket for Cause at Kudroli. Thank you. And coming back to the performance here, the 14 runs, Sadiq is highest run getter from 11 balls, and Nawaz scored 10 for 15 deliveries taken that.
and all we can say the single digits in this batting performance. No extras, means no wides in this over, in this innings. The fantastic disciplined bowling performance you can see. Riaz 2 overs 14 runs, no wicket. Kevin outstanding, 6 runs per over. Charan bowled beautifully with the 5 runs and wicket. Muzamil bowled an excellent over of just 2 runs and a wicket. And altogether it's been a great bowling performance. 41 needed from 42 balls. And the equation shows in the beginning for the team Rnfc to win this match. And wait and see how well these two teams will go into battle for victory. We'll take a short break in our commentary box. After a short break, it's a time for my long time commentary partner Mr. Gopi to take over the microphone in Hindi language. Welcome Gopi, thank you. धन्यवाद सतीश। तो जहां तक सवाल है इस वक्त आरएनएफसी कुदरोली मेजबान टीम, होस्ट टीम, उनके लिए इस वक्त 41 रनों का लक्ष्य निर्धारित 7 ओवर में तय किया। यूनाइटेड पातूर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यूनाइटेड पातूर के बल्लेबाजों ने 40 रन बनाए। 41 रनों का लक्ष्य उन्होंने इस वक्त प्रदान किया है आरएनएफसी कुदरोली के बल्लेबाजों को। और देखना है कि यहाँ पर आरएनएफसी कुदरोली के बल्लेबाजी से 41 रनों के लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं नहीं। ओपनर्स कम्स आउट टू द मिडिल, सियाब, और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए आशिक, और पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। काफ़ी तेज़ हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए, जिस तरीके से मैदान के दाईं और बाईं और गाड़े गए झंडे, रंग बिरंगे झंडे इस वक्त लहरा रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हवा का रुख इस वक्त काफ़ी तेज़ है। मैदान की दाईं से बाईं और गुजरते हुए पहली गेंद स्वीप कर दी इस वक्त खूबसूरती के साथ। स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची, थोड़ी सी मिसफील्ड इस बीच, और दोबारा गेंद को बैकअप करने के बाद खुद फीडर फीड करके थ्रो करे और थ्रो पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, विकेट कीपर विकेट उखाड़े। बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। आरएनएफसी कुदरोली मेजबान टीम, होस्ट टीम का 2 रन बिना किसी नुकसान के, और आशिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। शकील जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद पावर प्ले के अंतर्गत, और इस बीच गेंदबाज ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, निशाना इस वक्त चूकता हुआ अंतिम क्षण में स्टंप्स के ऊपर से थ्रो इस वक्त गुजरते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और 1 रन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 3 विदाउट लॉस, और मुन्ना अब पहली बार सामना करेंगे इस मैच में गेंदबाज आशिक का। और जहां तक सवाल है लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद, और इस बीच गेंदबाज आशिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज मुन्ना के लिए। और
रिवर्स शॉट खेलना चाहा, टॉप एज पर गेंद टकराई इस वक्त, लेकिन फील्डर जो खड़े हुए थे पॉइंट पर थोड़े से सीधे, गेंद गई थोड़ी सी स्क्वायर। जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से एक बेहतर शुरुआत की जरूरत यहाँ पर RNFC कुदरोली को। इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला इस वक्त, 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन जब तक लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करके फील्डर थ्रो करे, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने की। जस्ट प्लेड दैट वन विद द ट्विस्टेड बैट एट द लास्ट मोमेंट, फाइंड्स द गैप एज वेल बिटवीन कवर पॉइंट एंड अ पॉइंट, और 2 रन बल्लेबाज यहाँ पर प्राप्त करने में सफल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के। आशिक ये गेंद स्वीप करना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, गॉन थ्रू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार 1 रन प्राप्त करने में उन्हें कोई यहाँ पर दिक्कत ही नहीं हुई, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर आशिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। मुन्ना जो कि इस वक्त सामना करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त, शॉर्ट पॉइंट पर नजदीकी मामला हो सकता है, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। गेंद को सीधे पुश किया था इस वक्त, पॉइंट फील्डर के हाथ में रन के लिए दौड़ पड़ा, और नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज इससे पहले कि स्ट्राइकर एंड पर पहुंचे सीधा थ्रो पहुंचता हुआ पॉइंट फील्डर का, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथ में, और विकेट कीपर ने तेजी के साथ थ्रो को रिसीव करते हुए विकेट उखाड़ दिया। पहला विकेट गिर चुका। द मैन डिसमिस्ड इज शकील फॉर 6 एंड फर्स्ट विकेट लॉस्ट, और रिप्ले पर इस वक्त दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को इस वक्त पुश किया था। फ्लैट थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ और बल्लेबाज क्रीज तक नहीं पहुंच पाए। फर्स्ट विकेट गॉन इन द फेस ऑफ रन आउट। इट्स 7 for 1 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ first over. Mixed start for RNFC Kudroli, chasing the victory target of 41 in 7 overs. They are 7 for 1. नए बल्लेबाज तनवीर, एक और अनुभवी खिलाड़ी, स्थलीय खिलाड़ी RNFC कुदरोली की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और जहां तक बचे हुए रनों का सवाल है, 41 अगर 7 घटा दिया जाए तो 34 रन और बनाने हैं विजय के लिए, जबकि 6 ओवर का खेल अभी भी बाकी। रिक्वायर्ड रन रेट एग्जैक्टली 5.66 रन पर ओवर। और इस बीच गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज जुबैर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। सियाब मुन्ना इस वक्त सामना करते हुए, और मुन्ना सियाब उर्फ मुन्ना जो कि इस वक्त गेंद बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है, और जुबैर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। दूसरा पावर प्ले ओवर इस वक्त शुरू होता है। नेक्स्ट मैच Sarvagni will take over Reliance Kadipal, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for the signature procedure. First ball lofted and chance for the fielder at extra cover, and he took that one successfully. डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर दौड़ कर आए और गेंद पर अपने नजरें गड़ाए रखते हुए इस वक्त गेंद को लपकने में सफल, एक बेहतरीन जजमेंट के साथ। देखिए किस तरीके से विकेट गिरा था, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद को उछाला था, स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद को खाली क्षेत्र पर लैंड करने में सफल, और गेंद सीधे पहुंची डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने कोई गलती यहां पर नहीं की, और दूसरा विकेट गिर चुका है। Siab departs, and now they are looking in trouble a little bit. It's 7 for 2 after completion of 1.1 over. Siab departs. सियाब यानी मुन्ना का विकेट इस वक्त खो चुका है, और 7 रनों पर दूसरा विकेट खो चुका है। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर मैदान के दाईं ओर जो नदी है, उस नदी में नाव में कुछ मुसाफिर इस वक्त सफ़र करते हुए, और निश्चित रूप से एक सुंदर सा नज़ारा जो कि बेद्रा मीडिया इस वक्त अपने कैमरा में जो कि कैद करता हुआ, और निश्चित रूप से इस नदी के बाईं ओर जो कि मैदान स्थित है टिप्पू सुल्तान क्रिकेट मैदान कुदरोली का, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला RNFC ट्रॉफी 2026 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए आज लोकल विभाग के मैचेस जो कि खेले जाते हुए दूसरे मैच में मेज़बान टीम होस्ट टीम RNFC कुदरोली का मुकाबला जारी है इस वक्त यूनाइटेड पातुर के साथ। नए बल्लेबाज अजीम इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल, और इस वक्त तो सामना करते हुए जुबैर की गेंदों का, ये गेंद इस वक्त गेंद जाती हुई शॉर्ट थर्ड मैन पर, और इस बार रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। मिसफील्ड शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर द्वारा वाइड का इशारा, 1+1 कपल ऑफ रन एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर
9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 9 फॉर द लॉस ऑफ बोथ ओपनर्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इनफैक्ट। और गेंदबाज जुबैर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। तनवीर पहली बार इस मैच में सामना करते हुए फील्डिंग का मुआयना करने के बाद इस वक्त जुबैर की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और जुबैर दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद तनवीर के लिए चिप किया ऑफ द टोस के जाते हुए लॉन्ग ऑन पर फील्डर पीछे से थोड़े से पीछे तैनात। सिर्फ एक रन तनवीर का खाता खुल चुका और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका पर 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर निस्संदेह एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है आरएनएफसी कुद्रोली के बल्लेबाजों को। और इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा। गेंद का ये शॉट स्क्वायर लेग पर तेजी के साथ गेंद पर पहुंचे जरूर फील्डर, लेकिन इस पीछे एक रन का इजाफा लेग बाई के रूप में। और जहाँ तक का सवाल है गर्मी की तीव्रता का, तो इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी इस मैदान पर बढ़ती हुई लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान आज का दाखिल हो चुका है। और जुबैर की गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए और विकेट कीपर चूके और wide again 1+1 2 runs added to the total. It's 13 for the loss of 2 wicket. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರು ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಡಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರು ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಡಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸುಬೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 स्क्वायर जस्ट अ सिंगल ही गॉट और काफ़ी स्क्वायर गेंद को उछाला था इस वक्त मैदान के स्क्वायर बाई और इस वक्त नदी के तट पर और एक रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त करते हुए और 14 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। रिवर्स शॉट गेंद को खेला इस वक्त शॉर्टर मैन के दिशा में, एक रन का इजाफा। स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। निश्चित रूप से बराबर का संघर्ष इस वक्त जारी और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए। और जुबैर दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद ड्राइव करते हैं खूबसूरत कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक, लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथों में रन नहीं मिलेगा। राइट बिहाइंड द लाइन ऑफ द बॉल जिसे कहते हैं, गेंद के बिल्कुल पीछे आते हुए कॉपी बुक स्टाइल स्ट्रोक इस वक्त खेला था जरूर, लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिले। 2 ओवर की मुकम्मल यहाँ पर हो चुकी है। 2 overs completed. It's 15 for the loss of 2 wicket. Good reply giving by the batsmen of RNFC Kudroli chasing the victory target of 41 in 7 overs. They are looking in a good situation except they lost their 2 wickets. They managed to score 15 runs on the board after completion of 2 overs with a run rate of exactly 7.5 runs per over. 26 more to get in the remaining 5 overs and the required run rate is now coming around to exactly 5.20 runs per over. और तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता है। 32 गेंदें बाकी, 26 रन चाहिए। और गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका और फील्डर इस वक्त मैदान पर छा चुके हैं। प्रवीण गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजीम इस वक्त सामना करते हुए 26 रनों की दरकार बचे हुए 30 गेंदों पर। रिकॉर्ड रन रेट जो है 5.20 रन प्रति ओवर। कम बैक करने के लिए बेहतर गेंदबाजी की जरूरत इस वक्त यूनाइटेड पत्तूर के गेंदबाजों को। और फील्डिंग में जमावट करने के बाद 2 ओवर की पहली गेंद लेकर प्रवीण गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अजीम के लिए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड पर रन के लिए दौड़ पड़े। 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल ओवर थ्रो, लेकिन बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने के बाद काफी आगे निकल चुके थे, तो इस वजह से सिर्फ एकमात्र रन उनके और टीम के खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है। कुल मिलाकर 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। धीरे धीरे एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज तनवीर और अजीम और गेंदबाज प्रवीण अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार इस वक्त तनवीर के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को स्टेयर कर दिया, रनआउट का खतरा और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद को ऑफसाइड पर खेलना चाहता है, ऐसा करना पड़ेगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंद गई फॉरवर्ड शॉट लेग पर ऑनसाइड की दिशा में और विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपकते हुए यहां पर विकेट उखाड़ते हुए गेंद को फील्ड करने के बाद देखिए यहां पर किस तरीके से हुआ था। लुक एट दिस इन द रिप्ले, जस्ट वांटेड टू प्ले दैट वन ऑन द ऑफसाइड बट द बॉल वेंट इनटू द लेग साइड एंड easy run out made at the striker end by wicket keeper after collecting the ball quickly। और इसी के साथ
ये विकेट नंबर गिर चुका है 3. नाउ इट्स 16 for 3 एंड अजीम डिपार्ट्स. So after the departure of Azim, the new man Muzammil is now comes out to the middle as a number 5 batsman. और इस वक्त तो साथ निभाएंगे तनवीर का और प्रवीण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दर्शकों की ताज़ा इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ते हुए और निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर इस वक्त रुक चुका है. प्रवीण चिप किया हवे में जरूर, लेकिन फील्डर एक्स्ट्रा कवर फील्डर के थोड़े से बाईं ओर से गेंद निकली शॉट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के और एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल. 17 for the loss of 2 wicket in the over number 17 for the loss of 3 wickets in fact in the over number 3 in progress. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए प्रवीण दाहिने हाथों पर विकेट तैयार. Left head, not quite mid leg it, but the ball fell in the vacant area. Deep extra cover, just a single he got. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर. तनवीर ऑफ द स्ट्राइक हो चुके इस एक रन के साथ और मुजम्मिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. तीसरे विकेट के लिए एक बेहतर साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर ये दोनों बल्लेबाज तनवीर और मुजम्मिल और प्रवीण इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट तैयार. यह गेंद चिप कर दिया. गेंद इस वक्त गेंदबाज की बाईं ओर से निकलती हुई पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर मिड ऑफ पर कहना पड़ेगा. एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज छोड़ बदल चुका है. एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर एक गेंद अभी भी बाकी. रन हालांकि सिंगल्स के रूप में जरूर बन रहे हैं RNFC कुद्रोली के लिए, लेकिन खुशी की बात यह है कि रन से इस वक्त बन रहे हैं लगभग हर गेंद पर उनके लिए. और इस बीच अगली गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया खूबसूरती के साथ तनवीर ने और अच्छा रिस्पॉन्स नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा आता हुआ. एक रन के साथ ओवर की समाप्ति. 5 runs came from the last over from Praveen. 3 overs gone and after completion of 3 overs, still I must say RNFC Kudroli looking in a good situation. It's 20 for the loss of 3 wicket after completion of 3 overs. 24 balls left. 24 गेंदें बाकी. 21 रन चाहिए विजय के लिए. 21 to get in remaining 24 deliveries. The equal battle still is now continuing here. और इस श्रृंखला के मुख्य स्पॉन्सर्स ASR फिशर्स, धक्के बंदर, मंगलोर एयर ट्रेडिंग, दुबई, मल्पे फ्रेश, मेरीन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो कि मुख्य स्पॉन्सर्स इस श्रृंखला के. और जहां तक सवाल है इस वक्त इस श्रृंखला का, तो RNFC ये प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए. और गेंदबाज द बॉलर स्टार्ट्स फ्रेश प्रोसीडिंग्स इज आजी. और चौथा ओवर इस वक्त RNFC पारी में शुरू होता हुआ. 21 to get now in remaining 24 deliveries. Required run rate exactly 5.25 runs per over in this situation. और 80 गेंदबाजी इस वक्त करेंगे तनवीर के लिए. जहाँ तक तनवीर का सवाल है इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी अब तक उन्होंने अपनाई है और इस पर टिकने की इस वक्त वो पूरी कोशिश करते हुए हल्के से गेंद को इस वक्त खेलना चाहा. बैकफुट पर जाने के बाद चूके गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथ में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. चौथा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका है. 23 balls remaining, 21 runs to get. और इस बीच गेंदबाज आजी गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट रिवर्स शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद की लाइन को पहचानते हुए गेंद को छोड़ दिया, लेकिन अंतिम क्षण में मिस जजमेंट और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. और आजी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार तनवीर के लिए. रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर गेंद इस वक्त. एक्स्ट्रा क्विक वन एंड बीटन कंप्लीटली बाय दैट पेस. और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज के बल्ले यानी बैट को वंचित करने के बाद स्कोर रुक चुका है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में. गेंदबाज आजी इस वक्त फेंक चुके अपने ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहे, एक बार फिर से चूके. बेहतर गेंद थी. 4 डॉट बॉल्स इन ए रो. दिस इज टर्निंग आउट टू बी अ फैंटास्टिक ओवर इन यूनाइटेड पातूस पॉइंट ऑफ व्यू. 4 बेहतर गेंदें इस वक्त फेंक चुके आजी इस ओवर में. और बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत गेंदबाजी के डिपार्टमेंट में इस वक्त तो कर चुके हैं. अपने और के 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. गेंदबाजी करते हुए इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर. यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, एक बार फिर से चूके. परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी. जस्ट चेंज ऑफ पेस, बोर्ड स्लोवर डिलीवरी, a little bit comparing to the previous one. और
लेग बाय के रूप में 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल। 21 द स्कोर, 3 विकेट्स डाउन। नाउ स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर। 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं गेंदबाज आजी, और इस वक्त तनवीर ऑफ द स्ट्राइक। मुजम्मिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंतिम गेंद लेकर आजी इस वक्त तैयार। अब तक बेहतर ओवर उनका साबित हो चुका है। दाहिने हाथों पर द विकेट। इस ओवर की अंतिम गेंद, ये गेंद इस बार चिप कर दिया। ऑफ द टोस गेंद जाते हुए इस वक्त नेट्स पर टकरा चुकी है। डीप स्क्वायर लेग पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण करने में सफल। फ्लिक्स इट अवे ऑफ द टोस, जिस अंग्रेजी में कहते हैं, कलाइयों के सारे गेंद को उछाल दिया था और 2 रन खाली क्षेत्र पर गेंद को उछालने के बाद बल्लेबाज प्राप्त करने में सफल। 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर्स हैड बीन बाउल्ड। नाउ 18 बॉल्स लेफ्ट, 18 रन्स रिक्वायर्ड। स्टिल द मैच स्टैंड्स इन अ बैलेंस। मैच इस वक्त बराबरी पर रुक चुका। 18 गेंदें और 18 रन चाहिए। ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Now the match still stands in a balance. 18 of 18. Rnfc Kudroli, the host team, have to get for victory against United Pathura. देखते हैं बच्चे वे 3 ओवर यानी 18 गेंदों में क्या Rnfc Kudroli के बल्लेबाज 18 रनों को बना पाते हैं या नहीं. तो इससे पहले कि 5वां ओवर शुरू हो, आगे का देखा हाल सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान रफीज मुडबिद्रे को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राज्य भाषा कन्नड़ में आगे का आंखों देखाल सुनाने के लिए. आइए रफीज, धन्यवाद. थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿರವರೇ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡ ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 41 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ತನ್ವೀರ್ ಹಾಗೂ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ ಇದು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ತನ್ವೀರ್. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ಅಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೇವಲ 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಇದೀಗ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ ಪ್ರವೀಣ್. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ದಂಡನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೊಡೆತಗಳು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಕೂಡ, ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 14 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತನ್ವೀರ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 28 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಒಟ್ಟು ಓವರ್ ನಂಬರ್ 5 ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ಕ್ರೀಡಾರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಡವಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ 6ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3ನೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಅಜಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 6ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜಿ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ ಕಟ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಅಜಿ ಡಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದೊಂದು ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಮೇಲುಗೈನ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸಗಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿತ್ತು. ಮೊದಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ನೀಡದೆ ಅಜಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ತನ್ವೀರ್ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ವೀರ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಶೂರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಪರಿಸರದ ಈ ಆಟಗಾರ ಅಶು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹೋಮ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ತವರಿನ ತಂಡ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು RNFCಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. RNFCಯ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶು ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಓಟ ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇತ್ತು RNFC. ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಶು 2 ರನ್ಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 31 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 10 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ ಆಶು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಂತಹ ಅಜಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವಾ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ನಾಣಿಚುಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಗ್ನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜಕರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋರಾದ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ತನ್ವೀರ್ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ವೀರ್ ತವರಿನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವ ತನ್ವೀರ್ ಇಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿರುವ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಬಳಿಕ ತನ್ವೀರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಬೌಂಡರಿ, 4 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಹಳ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಈಗ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ 1 ಓಟವನ್ನ ಗಳಿಸುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಆಶು ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಶು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು. ವೇಗದ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆ ಓಟಕ್ಕೆ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಶು. ಈ ಓಟವನ್ನ ಓಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೂ ತನ್ವೀರ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಶು ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಿರ್ಗಮನದ ಬಳಿಕ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 36 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 12 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಆದಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೆ 12. ಆ ಬಳಿಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು RNFC. ಅದಾದ ನಂತರ 5ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತನ್ವೀರ್ ಬಾರಿಸಿದಂತಹ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ರನ್ ಧಾರಣೆಯ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರನ್ಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ RNFC ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 5 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು. ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಸ್ತಾ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. 2ನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 4 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಫಿರೋಜ್. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಬಹಳ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಮುಸ್ತಾ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತನ್ವೀರ್. 1 ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ತನ್ವೀರ್. 1 ಓಟ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಒಂದಾದ ಬಳಿಕ ರನ್ ಔಟ್. ರನ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ಫಿರೋಜ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ವೀರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ವೀರ್ 1 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕದ ಓಟಕ್ಕೆ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ಗಳ ಸವಾಲಿದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರೋಚಕವಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ಶಹಲ್ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಹಲ್ ಹಾಗೂ ತನ್ವೀರ್ ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಟಗಾರರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಶಹಲ್ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಹಲ್. ತನ್ವೀರ್ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಟಗಾರ ತನ್ವೀರ್. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 17 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 12 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ. ಮುಸ್ತಫಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ. ಈ ಬಾರಿ ಶಹಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. RNFCಯ ಸೂಕ್ತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಟೈ ಆಗಿದೆ. ರನ್ಗಳು ಸಮಾನಗೊಂಡಿದೆ. ರನ್ಗಳು ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ. RNFCಯ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 1 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಟೈ ಆದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದೇ RNFC ಅಥವಾ ಡಾಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು 30 ಗಜಗಳ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯತೆ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಶಹಾಲ್ ಅವರ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಹೊರ ಇತ್ತು ಚೆಂಡು. ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ಶಹಲ್ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ಓಟವನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಆನ್ ಬೈ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆಡಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ರೋಚಕ ಜಯವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ. ತನ್ವೀರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 13 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಜಮಿಲ್ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ವೀರ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಾತೂರು. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಎರಡನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 9 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ 8 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ASR ಫಿಶರೀಸ್, ಕೋ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ AR ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದುಬೈ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ RNFCಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶಿಯಾಬ್ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿಯಾಬ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RNFCಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಿಯಾಬ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿಯೇ ವಿದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು RNFCಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು ಶಿಯಾಬ್ ಅವರು. ಸೊ ಶಿಯಾಬ್ ಅವರ ಆ ಸಹಕಾರಕ್ಕಾಗಿ RNFC ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶಿಯಾಬ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮುಜಮಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಾಗೂ RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ದಿವಸದ ಆರಂಭದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊನೆಯಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ, ಈ ದಿವಸದ 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವಾ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಧ್ವನಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೇನೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್.
Thank you very much. Thank you very much, Rafiz Mudabide. What an outstanding match which has come to an end. And at last, last ball victory, thrilling victory for Rnfc Kudroli. The host team defeated United Pathur in the last delivery of the match. And a fantastic performance for Muzamil, who really deserved the man of the match award for his outstanding performance. We are coming to this match. United Sarvagni Vuru versus Reliance Katipala. Winning the toss, selected to bat first, Reliance Katipala. And opening batters are in the middle, left and right combination. They look like left hand batter Azhar will be the striker. Azhar and Taufik, the left and right combination for Reliance Katipala. The power play number 1 is in progress now. Winning the toss, not surprisingly, the Reliance Katipala elected to bat first here. After watching the two matches, of course, the previous matches, the chasing team won the match. The first match, which is won by Sridevi cricketers Jaipur, they also chased down runs, but here Reliance Katipala wanted to bat first. ದಯಮಾಡಿ ಫಿರೋಜ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. RNFC ತಂಡದ ಫಿರೋಜ್ ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. Vinith Goyal going to start the proceedings from the road end. And here comes the first ball. Vinith to Azhar. Azhar just wanted to get the ball down to third man region but missed it completely. Wicket keeper behind the stump did the rest. The experienced man Jayant behind the stump, and Sarvagni bowling first here, left arm around the wicket again. Try to get that on the onside region. Need to wait for the umpire decision. It's a leg by called by umpire Suresh Mudabidre. With that leg byes, they started their journey. Reliance Katipala won without loss of any wicket. One of the most successful team as far as local police concerned. Reliance Katipala has got some sweet memories in the previous season and beginning of the season, especially at USG cricket ground. One of achievable, one of the most successful cricket ground for Katipala, for Reliance Katipala UCG. But in the present season, in the few tournaments, they are not up to the mark. And this is the one tournament, the Reliance Katipala, they have to come back strongly. This time he played it exquisite slog save shot down to this corner leg. Ball will not going to travel. Yes, it does. The fielder couldn't manage to control the speed as he tried to get the ball. He almost came into the line of the ball. Just have a look at it in replay. They played it lovely shot, but ball which is not hard in the nature. Enough time here for the fielder. Oh my goodness, ball just slipped out of his hand. Second attempt also he's tried it, but unfortunately couldn't manage to stop the boundary. Much required boundary from bat of Taufik. Man who performed very well for the success of Reliance Katipala. Catch it is the call. Catch it is the call. We're going to get this. No one. The ball is going and out. Almost ball is landed into the spectators gallery. Taufik is a man, is just choosing that direction of the wind. And ball went straight away. It looks like at one stage it looks to be a chance for the fielder. But have a look at that one. The ball which is absolutely travelling with the direction of the wind. The children are very excited in that dugout number 2. The left of dugout number 2 of the Reliance Katipala dugout. Lovely shot once again. Have a look at the placement. Taufik is absolutely looks on fire. The Reliance Katipala dugout are looking on absolutely very noisy, excited. Up and over. Beautiful shot there from Taufik. Magnificently struck. Again the bowler making a mistake of bowling that line where he was not having any protection.
Danusha, of course, Sharan, the fielder, couldn't manage to stop the boundary. 15 runs came from this over of Sarwag Nirwa. And Taufik is just justifying the decision of their captain to come and bat. And they're taking the advantage of the afternoon condition. It's 12:30 in the afternoon. Sharan brought in to attack the ball the second over. Will going to ball around the wicket. Correction, yes. Left arm bowler over the wicket. And the left arm bowler has been introduced. One more left arm bowler for the side. For Sarwag Nirwa. They got some very good bowling lineup in their side. But unfortunately, first over is very expensive. Lofted into the vacant area with the direction of the wind. One bounce into the fence for 4 runs. Azhar joining the party. I'm really surprised why there is no deep long on for Sharan when the bowler bowling left hand coming into the batter. It kept that one into the mid-wicket region, but I think deep square leg and mid-wicket is a little bit risky stroke batters have to play. But it's an orthodox stroke when the ball on the toes of the batter. I think we are not getting the fielder in the deep long on means it's not a great idea. 19 without loss of any wicket. Top edge opportunity created. The fielder at mid-off, Prasad, quite hardly managed to come to that line of the ball. Judgment is so difficult with the direction of the wind in this particular cricket ground for the fielder. Sharan strikes at last for the Sharwagni. Just have a look at it in replay. Shuffled across the line of delivery. Tried to go over the top of the infield. Azhar couldn't manage to get the timing right. And now Prasad, they look at that one. Even though he just a little bit lost his balance. But recovered very quickly and kept his eye on the ball. Azhar departs for 4 after facing 5 deliveries. Caught by Prasad, bowled by Sharan. It's 19 for 1. Reliance Kartipal off to a very good start in this 2 over of the power play. The intention is very clear.
Welcome back once again. Sharan to continue left arm round the wicket. Balls and back to bowler. This time Rahil, the batter, gets that one back to bowler. Not for run. No run scored. Turning out to be a good over. And even the boundary which is conceded in this over. But good comeback here by Sharan. Top edge opportunity is created. But Pradeep this time fails to get that one. Almost is standing in the fine aggression, but the ball is in there for a while. He's tried his level best to get that one, but just fallen short of the field. No one run completed. 20 for 1 in the over. Number second is in progress. Reliance Katipala. Taufik back on strike. He's batting on 14 in just 4 deliveries. He faced Sharan to continue. Lovely delivery. Tried to yoke the batsman in negation. Prasad at shot mid on. Missed it completely, but fielder there in the deep long on region. And ample time for the batter to complete the single. Prashant, the fielder, in the deep long on and completes formalities of fielding the ball. After completion of over number 2, total score is 21 on the board. This has been absolutely beautiful view of this Tipu Sultan cricket ground. We can see that just looks like it's an island, isn't it? All we can see that water which is covered this cricket ground in both sides, in all the sides. In fact, you can see that, and a very beautiful cricket ground situated in this banks of river Netravati, what you call is Gurupura river, and yes, absolutely. You can see that there's some the buildings we can watch from the high view. The bird eye, that means drone camera is capturing that beautiful city. And this is what Kudroli, one of the most popular city in Mangalore, Kudroli. And the olden days, this place is considered as one of the trading center because of the river which is passing beside that, the water transport, which has been one of the main trading, and of course tiles business is one of the most popular. There's so many tiles factories in the from area from Kudroli to till Boluru Sultan Batteri. Too many, 4 to 5 tile factories, and all we can see that one of the most busiest trading center in the olden days. Nicely played it down to extra coverage, and they're looking for the second. In comes a throw from the fielder, but it's a fumble from the fielder. Allow the batters to complete that couple of runs quite easily in the end. So we have Hotel Pattanal in left of our commentary box. We're going to provide very tastiest food, and of course for the afternoon we have so many varieties of the foods which is available in that Hotel Pattanal. Nicely driven down to mid-wicket region. They wanted to come back for the second. Prashant is one of the quickest fielders. Punishment which is have to be given for Suresh Mudabidre. Oh God, my goodness, set it. Directed Taufik, the danger man, back in the pavilion. Ball which hits Suresh Mudabidre, and ball went into that areas, and we can look at the fielder there. Absolutely fantastic throw which is hit the stumps directly, and the Taufik is not realizing that he's running towards the dangerous end and is back in the pavilion. Good innings of Taufik. It comes to an end in a disaster manner after scoring 19 runs in 8 deliveries with the help of 2 boundaries and 1 6 with a strike rate of exactly 237. Is back in the pavilion. Daivik is a new batter in. Again, gently flicks that one off his legs down to final aggression. They wanted to come back for second. Daivik turning out for second. Again, the throw which is not up to the mark. 2 runs completed very quickly in the hot condition. It's absolutely very hot. It's 25 for the loss of 2 wickets. Rahil and the batter Daivik is, just came in.
Played it gently, nicely into the gap between bowler and short mid-off, which is wide-ish, and a huge gap there. Long off region. Picked up a single. Runs are coming very nicely here for the team Reliance Kartipalla. (28) for loss of 2 wicket. Nilesh will go into ball. Nicely played it down to deep long off region for a single. So with that single, Nilesh completes over number 3. Neelakayada Nilesh. 29 after completion of over number 3. It's 29 for loss of 2 wicket. Reliance Kartipalla looking good so far. And just under 10 runs per over. So coming back to this particular tournament, we are talking about a lot of dignitaries which is really contributed for the success of this cricket tournament. We are thankful and grateful for Aman PPA Fisheries Bandar Mangalore, Mustafa KMA Razina Fisheries Bandar Mangalore, Aziz AAT Fisheries Bandar Mangalore. All we can see that they are done a wonderful contribution. Even nevertheless, Torpedoes Khana, Salim and Shamim Umar, the brothers are contributed heartily for the success of this cricket tournament. We are once again grateful and thankful for all our donors and supporters. Daivik picked up a single by pushing the ball down to point region. Good striker of the ball, Daivik. 30 on the board. Played it in the air, but safely down to square leg region. And again, Prasad, the fielder, down at short mid wicket, will going to collect the ball. Ample time for Rahil to complete the single. With that single score, numbers on to 31 for loss of 2 wicket. This time good enough to call the wide or not. Just wait and see. Wide given. It's a wide. Now just wanted to take the review here. And umpire Suraj asking umpire to take the review because this is a fielding team review. Just wanted to see that line of the ball. Maybe that ball umpire can't have any idea because of that wide delivery, little bit gone outside the line of off stump, and umpire Suraj not having any view in that occasion because the bowler little bit came in front in that line of the ball. I'm not saying that he is in a wrong line, but for the umpires I think it's very difficult. Now technicians of Bedra Media is absolutely spot on, and under the great leadership of Irfan Bedra will going to provide. Sometime it's very difficult for the third umpire as well, and if the bowlers comes right in front of the camera, it's not so easy to visible, but that time they're using all techniques. It's been terrific to watch. They're getting one line, extra line there to see that which line the ball is going and where the wicket keeper's hands are coming behind the ball. Third umpire here is experienced Roland Pinto, Sriraj in our commentary box in that third umpire room. It's a wide confirmed by the umpire. So Pradeep have to reball that, and the scoreboard is 32 for 2. And Pradeep again with the short run up.
Right above the wicket bounce. Divik just wanted to go for the switch. It doesn't get hold of that one properly, but good enough for him to rotate the strike. Not a bad idea to play the shot, isn't it? Because of the no one there in the deep in the backup point and cover point. 33 for 2. Looking for improvising cricketing stroke. Appeal half-hearted shout here from Pradeep. It's from the bat, so that no question of leg before wicket. 34 for loss of 2 wicket in the over number 5th is in progress. 4th is in progression, correction. Divik nicely played it down to gently down to extra coverage and single line pick up and throw from the fielder. One more single. 35 for 2 in the over number 4 is in progress. Last time in this over. Good cricket, intelligent cricket there from both the batters. Just rotating the strike. One extra, altogether 7 from this over from Pradeep. And Reliance Katipala still looking good in that run rate. They're going exactly 9 runs per over. 36 for 2 after completion of 4 overs. 3 overs remaining. And wait and see in the remaining 3 overs how Reliance Katipala will going to accelerate. And wait and see how quickly Sarvagni Urva will going to come back to this match with some good overs. Wait and see the game plan from these two teams. It's a time to change in voice as well as language. It's a time to bring once again Gopi to take over the microphone. Thank you. धन्यवाद सतीश। तो 4 ओवर के बाद एक बेहतर स्थिति पर नजर आता हुआ रिलायंस काटीपल्ला 5वें ओवर के पहले गेंद को मोड़ दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग पर और गेंद को जब तक वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 37 रनों पर 37 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट। और गेंदबाज नीलेश माफ कीजिए गेंदबाज इस वक्त नीलेश गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए ये गेंद ड्राइव करते हैं जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट and driven that one perfectly down to gone for a single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 38 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर नीलेश दूसरे ओवर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार और गेंदबाज इस वक्त ये गेंद बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर वन जस्ट मिसिंग और साथ ही ऑफ स्टंप राहिल जो बल्लेबाज थे गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेलना चाह चुके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में और रन अप पे कुछ हद तक बाधा शायद नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज दैविक अपने जूते के फीते को बांध रहे थे इसको देखते हुए गेंदबाज नीलेश ने अपना रन अप रोक लिया था और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद ऑफ द टॉप स्टॉपेज और आसान सा कैच इस वक्त मिड ऑफ फील्डर के हाथों में ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता 2 कदम आगे निकलते हुए लेकिन गेंद टॉपेज पर टकराई अंतिम अक्षर में कुछ ज्यादा गेंद एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए देखिए किस तरीके से गेंद इस वक्त उछली थी और एक्स्ट्रा कवर पर आसान सा कैच पहुंचता हुआ और इसी के साथ ये बल्लेबाज राहिल की पारी पर पर्दा गिर चुका है। तीसरा विकेट गिर चुका है 30 रनों के योग पर और तीसरा विकेट गिरने के बावजूद ऐसा कहना पड़ेगा रिलायंस काटीपल्ला लुकिंग इन अ गुड सिचुएशन इन फैक्ट इट्स 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। अगला मैच दोनों ग्रीन लाइन टीमों के बीच खेला जाएगा। ग्रीन लाइन बेंगरे विल टेक्स ओवर ग्रीन लाइन बचपे द नेक्स्ट मैच and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಚ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮैन इस now comes out to the middle नंबर 5 बैट्समैन राफत नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नीलेश की गेंदों का 10 रन प्रदान करते हुए विकेट प्राप्त कर चुके नीलेश अपने 1.4 ओवर में और अपने ओवर की 5 विकेट लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को खेलना चाहा गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर जहां पर फील्डर मौजूद थे और लेग बाय के रूप में 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 39 रनों पर 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। बॉल लेफ्ट दिस ओवर इस ओवर में अंतिम बार नीलेश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दैविक के लिए ड्राइव किया दैविक ने लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट और गेंद इस वक्त पहुंचे बैक टू द बॉलर के दिशा में। ओवर नंबर 5 has been came to an end after completion of 5 overs. Still I must say Reliance Katipalla looking in a good situation 39 for the loss of 3 wicket और पहले ओवर में तौफीक ने 15 रन बटोरे थे और उसकी बदौलत इस वक्त
बेहतर रन की गति को कायम रखता हुआ इस वक्त रिलायंस का टिपल्ला 5 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद 39 रन जोड़ चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त छठे ओवर का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए शरण, और छठा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू होता हुआ बल्लेबाज राफत जो कि एक गेंद का अब तक सामना कर चुके हैं, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। शरण की गेंदों का और शरण ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, पहली गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइटी हिट, नॉट सक्सीडेड, अपीलिंग फॉर लेग बिफोर, रन के लिए दौड़ पड़े और एक रन यहां पर प्राप्त करने में सफल। जहां तक सवाल है इस वक्त लेग बाई का इशारा हो चुका है, शायद बल्लेबाज ने दूसरे बल्ले यानी दूसरे बैट की इस वक्त मांग की है प्लेयर्स आउट की ओर, और इस वक्त तो जाते हुए अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए। स्कोर रुक चुका है 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 40 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। और शरण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर, और बल्लेबाज दैविक अपना बल्ला बदलने के बाद एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर लौटते हुए अराफत, माफ कीजिए, अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद इस वक्त अपने बैटिंग नॉन स्ट्राइक रन पर इस वक्त लौटते हुए, और गेंदबाज शरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दैविक सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ राउंड द विकेट, शरण की गेंद इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, जस्ट ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग साइड एट द लास्ट मोमेंट, वाइड डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, एंड विद दैट वाइड वन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 41 for the loss of 3 wickets in the over number 6th started just short while ago in their innings. दैविक ये गेंद ड्राइव किया है इस वक्त खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन फील्डर मौजूद, ऐसा कहना पड़ेगा गेंद को उछाला था, दमदार स्ट्रोक जरूर था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं, पर सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज और टीम इस वक्त प्राप्त करता हुआ 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 42 for the loss of 3 wicket in the over number 6 in progress. राफत सामना करते हुए शरण की गेंदों का, धीमी गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त, गेंद जाती हुई एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर थोड़े से सीधे तैनात, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यशस्वी पूर्ण करते हुए थोड़ा सा दौड़ इस वक्त लगानी पड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर को गेंद तक पहुंचने के लिए, और इससे पहले कि वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करे विकेट कीपर के हाथों में, बल्लेबाज के पास मौका था कि 2 रनों के साथ अपने अपने स्थान पर वापस लौट सके, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। शरण अगली गेंद लेकर तैयार, यह गेंद उछाला इस वक्त मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, अंतिम क्षण में इस कैच को लपकने में सफल। जो फील्डर खड़े हुए थे डीप मिड विकेट पर, एक बेहतर कैच बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने लपका अपनी बाईं ओर दौड़ते हुए, और यहाँ पर देखिए स्ट्रोक को खेला गया था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास नहीं, और गेंद सीधे पहुंचे इस वक्त डीप मिड विकेट फील्डर के हाथों में, और एक बेहतर जजमेंट के साथ उन्होंने इस कैच को लपक लिया, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है अराफत का, 4था विकेट इस वक्त हो चुका है रिलायंस का डिपल्ला। इट्स 44 for 4 ಅರಾಫತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಸ್। ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಚ್ಪೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। New batsman, number 6 batsman is now comes out to the middle. जुनैद काफी अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त, जो कि कप्तान है इस वक्त रिलायंस का टिपल्ला के, इस वक्त क्रीज पर मौजूद। यह गेंद ऑफ द टॉस गेंद को खेला इस वक्त, कुछ देर तक गेंद हवा में जरूर थे लेकिन कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं मिड ऑन पर, और जब तक लॉग ऑन फील्डर अपने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 45 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। इट्स 45 for the loss of 4 wicket in the over number 6 in progress. शरण अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, बाएं हाथ राउंड द विकेट, टॉप एज, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात लॉन्ग ऑन पर, जस्ट सिंगल ही गॉट, नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फॉर द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन गेंद टॉप एज होते हुए लॉन्ग ऑन फील्डर के आगे टिप्पा खाते हुए, और 1 रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं। 46 for 4, 6 overs completed, 7 runs came from the last over from Sharan, and now just a last over remaining in overall calculation in Reliance Kadipalla's innings.
अंतिम ओवर उनके पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। रोहित गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार मुबीर। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ रिलायंस काटीपल्ला की पारी में और देखना है कि इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक जरूर, लेकिन फील्डर मौजूद लोग ऑन पर 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 1 रन के साथ 47 रनों पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 7th एंड फाइनल ओवर ऑफ देयर इनिंग्स। और गेंदबाज रोहित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का अंदरूनी किनारा गेंद टकराती हुई गेंद को फील्ड कर लिया स्क्वायर लेग पर। इस श्रृंखला के मेन 3 पिलर्स मुख्य इस श्रृंखला के सफलता के कारण करता श्रीमान समीर सऊदी अरेबिया, श्रीमान साकिब सऊदी अरेबिया और श्रीमान साबिक बहरीन, जो कि इस श्रृंखला का इस वक्त मुआयना करते हुए विदेश से, जो कि इस श्रृंखला के सफलता के मेन कारणकर्ता कहा जा सकता है, ये 3 पिलर्स। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो इसमें ड्राइव कर दिया मिड ऑफ की दिशा में, थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज रन से इस बच दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 49 रनों पर 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 7 एंड द लास्ट इन प्रोग्रेस। रोहित अगली गेंद लेकर तैयार जुनैद के लिए, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया स्ट्राइट इनटू द हैंड्स ऑफ मिड ऑफ फील्डर एंड दैट इज द एंड ऑफ द बैट्समैन जुनैद। Hit that one pretty hard, but the placement was too wrong, and because of that, he just paid the penalty for that. और विकेट नंबर 5 यहाँ पर गिर चुका है और देखिए यहाँ पर किस तरीके से वो हुआ था, दमदार स्ट्रोक था इस वक्त जुनैद का, लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड ऑफ फील्डर के हाथों में 20 गज के दायरे के अंदर और जुनैद की पारी समाप्त और विकेट नंबर 5 का पतन यहाँ पर हो चुका है। इट्स 49 for 5. 2 balls left in overall calculation in their innings. New batsman is now comes out to the middle number 7 batsman जाबीर, नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए 2 गेंदें बाकी और देखते इन बचे हुए 2 गेंदों में रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। रोहित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, बेहतर ओवर साबित हो चुका है रोहित का, जिसमें सिर्फ 3 रन पहले 4 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं। लेग स्टंप से बाहर और रन्स दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं 1 और जहां तक सवाल है वाइड का, तो वाइड इस वक्त उनके खाते में जोड़ा जाएगा और इन 2 रनों के साथ 50 कम्स अप फॉर रिलायंस काटीपल्ला, 51 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 7 इन द लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। रोहित अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑफ द टोज, गेंद को खेलना चाह नॉट करके दैट वन प्रॉपरली गॉन टू फॉर अ क्विक सिंगल एंड गेट इट कंफर्टेबली एट लास्ट। इट्स ऑफ द लेग बाय डिक्लेयर्ड बाय अंपायर, 52 द स्कोर। अंतिम गेंद बाकी इस वक्त और जाबीर उनके पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार। रोहित गेंदबाजी करते हुए द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। रोहित बॉल्स lofted that one but straight, no, in fact it's clear the man at long on for a maximum. He just finished the innings in a style with a 6 और यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्ट्रोक था, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट हिट केम फ्रॉम द बैट्समैन from the hands of Javeer and he's just got that one at last and got the distance. और इस छक्के के साथ 58 रन जोड़ चुका है रिलायंस काटीपल्ला. They finished very well with 58 and they stipulated 7 overs by Reliance Katypalla and the target for Sarvagni Urwa is 59. Scorecard बिल्कुल आपके सामने. Tawfiq top scorer, 19 runs he scored in just 8 balls. And although all of them contributed with a single digit, Rahil Junaid scored 8 runs each of 10 deliveries. And finally Jabir finished well with 6 of the only delivery that he faced. Bowling analysis, Vineet looking very expensive. Sharan most successful bowler, got 2 wickets, conceding 12 runs in his 2 overs. Nilesh 2 overs, nobody 10 runs, 1 wicket, and Rohit 1 over 12 runs, 1 wicket, and Pradeep finished with 1 over, no maiden, 7 runs and no wicket. 59 the target. आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है 42 गेंदें 7 ओवर पे बनाने 59 रन सर्वाग्नि उर्वा के लिए. और देखते हैं यहाँ पर 59 रनों के
लंबे से लक्ष्य तक क्या सर्वाग्नि उर्वा पहुंच पाते हैं या नहीं। फिलहाल उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे एक और काबिल दोस्त श्रीमान रफीज मुठभेद्रे के साथ अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में जब वो माइक्रोफोन संभालेंगे, जब यहाँ पर सर्वाग्नि उर्वा की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है ब्रेक करना। इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿರವರೇ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕುದ್ರೋಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ RNFC ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವನ್ನು 9 ದಿವಸಗಳ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡು 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 53 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ 54 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನ 59 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಓರ್ವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಫೂರ್. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ RNFC ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಫೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ವೇಗಭರಿತವಾದ ಎಸೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಹುಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಚಿನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡ ಬಯಸುವಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ರಾಹುಲ್. 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿನೀತ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ. 59 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. 41 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 41ರ ಮುಂದೆ 59. ರಾಹುಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಎರಡು ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ರಾಹುಲ್ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಆಟ. ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಓವರ್ನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ.
हल 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 नॉट आउट हल हलो ಎಸ್ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ, ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಯಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. 59 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2.5 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಶ್ರೇಯಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಓವರ್. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದಿತ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಶ್ರೇಯಸ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಸರಾಸರಿ ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 6 ರನ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 19 ರನ್ಗಳು. ಒಟ್ಟು 19 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 24 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 40 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 40 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಎಸೆದಂತಹ ಮೊದಲ ಎಸೆತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ಆ ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದಿದ್ರು. 4 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 20 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 21 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 21 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 22 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಬೈಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತವನ್ನ ರಾಹುಲ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಆದಿತ್ಯ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಡೆತವು ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್ ಹಾಗೂ ಆದಿತ್ಯ. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರಿನ 2 ಊರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳು. ಬೆಂಗ್ರೆ ಹಾಗೂ ಬಜ್ಪೆಯ 2 ತಂಡಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. 17 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 58 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾರಂಭ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಾಂಡುಗಾರರು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ 58 ರನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ 59 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೋರಾದ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ರನ್ಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತೌಫೀಕ್, ಬಹಳ ಚುರುಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. 33 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 15 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸತಕ್ಕಂತಹ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಈಗಾಗಲೇ 1.4 ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ 5 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ 2 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್. ಓವರ್ನ 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ಒಂದು ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ
27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡ. 30 ಗಜಗಳ ಹೊರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 30 ಗಜಗಳ ಒಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 2 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿನೀತ್ 2 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 29 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಪ್ರದಿ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಗಳು. ಚಾಪ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 9 ದಿವಸಗಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಮೊದಲ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರು ಬಹುತೇಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆ ನೋಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ನೋಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನೀಶ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ದಾಳಿ ಇದು. ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎಸೆತಗಾರ ಅನೀಶ್. ಕುದ್ರೋಳಿ ಊರಿನ ಡ್ರೋನ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಕುದ್ರೋಳಿ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಜನರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನದಿ ತೀರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಕುದ್ರೋಳಿ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ನಾಡು ಇದು ಕುದ್ರೋಳಿ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈದಾನ, ಜೊತೆಗೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿ, ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂತಹ ಬೋಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮಾಲಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇರ್ಫಾನ್ ಬೆದ್ರಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ 6ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 31 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. 59 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅನೀಶ್ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವಿಫಲತೆಯನ್ನ ಕಂಡ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 2 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 32 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡ. ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 27 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಶರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಜುನೈದ್. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅನೀಶ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ. ಬೈಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಅನೀಶ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ನೋಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ರನ್ ಔಟಿಗೆ
ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್, ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸೂಚನೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಮೂವತ್ತ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ 5 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಇನ್ನು 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 26 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನೀಶ್ ಅವರ ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅನೀಶ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ನೇರ ಹೊಡೆತ. 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 34 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 7 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 25 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರರನ್ನ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 25 ರನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಜ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಸೆದಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬಂತಹ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ. ಒಟ್ಟು 35 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ಇದೀಗ ವೈಟ್ +1 2 ರನ್ಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲಾ ತಮ್ಮ ಲಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲಾ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ರನ್. ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಜುನೈದ್, ಆದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ರನ್ಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ ಒಟ್ಟು 42 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 18 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 17 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 17 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ +1 ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲಾ. ವೈಟ್ +1 ರೂಪದಲ್ಲಿ 2 ರನ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೊಂದಿಗೆ 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು +2 ಒಟ್ಟು 6 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರನ್ಗಳು ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿ. ಒಟ್ಟು 6 ರನ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಎಸೆದಂತಹ 10 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಎಸೆತಗಾರ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೇಲಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಓವರಿನ 2ನೇ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5ರ ಮುಂದೆ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಪಚ್ಚೂರವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡದ 6ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
ಅಂತಿಮ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಚ್ಚು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 23 ರನ್ಗಳ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ. ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿನೀತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 15 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೆಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ನಾಸೀರ್. ವೇಗಭರಿತವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಮರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ವಿನೀತ್. 3 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ 14 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್. ಈ ಬಾರಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ರನ್ ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೆಲಾ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ದಂಡಿಸಲಾಗದೆ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿನೀತ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಓವರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ದುಬಾರಿ ಎಸೆತಗಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೆಲಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು, 4 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಬೈಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2, ಒಟ್ಟು 6 ವೈಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು. ಹಾಗೇನೆ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೌಂಡರಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಾಸೀರ್ ಪಾಣೆಲಾ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂತಿಮ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ನಾಸೀರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಂದ್ಯವನ್ನಾಡಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಊರ್ವ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. RNFC ಟ್ರೋಫಿ 2026 ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ದಿವಸದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಈ ದಿವಸದ 4ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಜ್ಪೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ 2 ತಂಡಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸತೀಶ್ ರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. So man of the match which goes to the man who scored valuable runs from his bat, Tawfiq of team Reliance Katipalla, who scored 19 valuable runs from his bat, and in just 9 deliveries he scored that runs with a strike rate of more than 200, and definitely is deserved this man of the match award. Tawfiq ಅವರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
So time for the presentation of the Man of the Match award and Ashraf of Rnfc, one of the fantastic supporter for cricketer, one who are really given everything for cricket. Ashraf of Rnfc presenting Man of the Match award. One of the most beautiful trophy, you can see that for the Man of the Match. This is one of the most speciality of Rnfc trophy 2026, and Ashfaq, the man who receives the Man of the Match award. So welcome back once again for this prestigious Rnfc Rahmat Nagar Friend Circle presenting this prestigious cricket tournament in the name of RNS Trophy 2026. And altogether from today to till 3rd, it's going to be a festival of cricket here in this most beautiful Tipu Sultan cricket ground here in Kudroli. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು. STC ಜಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 4, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಲೋಕಲ್ ಪೂಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್. And this is a battle between two green lines, one from Bengre, one from Bajpe. And very interesting to watch. You can see that the name is same, the green line. Even their place name, which is starts from the letter B, Bengre and Bajpe. And this is almost a similarity in this two teams' name, but the places are different, players are different, attitude, game plan, players all are different. And opening batters already, they made their way to the middle of the pitch, and Mimran, the striker, and non-striker will be Rahul, I think so. Nihal, correction. The one more very good striker of the ball. Nihal done a great job for the team Bengre when they becomes the runner-up in the Jai Bharat Trophy. Mangalore. These two batters absolutely contributed a lot. Imran, played it just wide of the square field. And certainly there will be a couple of runs here for Imran. They can look for the third as well. And they look completed third. Excellent running between the wicket. Between these two, very successful opening pair, Imran and Nihal. Imran is also played a great game of cricket in that tournament, which is a fantastic and very, very successful cricket tournament which is organized at Sharada High School, beautiful cricket ground at Paner. They witnessed 3 days of wonderful cricket tournament, one of the most successful cricket tournament organized. Team Green Lions have become the runner-up in that tournament. The first ball outside the line of off, next ball outside the line of off stump, and just wanted to go for the sweep shot, but missed it completely, and wicketkeeper behind the stump did the rest. Sneha Malemar, the team which has become the champion in that trophy, and because of rain interrupted toss, which is decided the champion. This time, the fielder is absolutely at third man region. Is not really
expecting that the ball will going to come to him, because the batter looking for the reverse sweep and the bowler bowled a very good line which is outside the leg stump. But very interesting. Nihal wanted to get the ball into the third man region, but fielder reacted slowly in the third man field, and no damage done. What a shot! My goodness, but he will going to get only a single for that, isn't it? The frustration for the batter. This is what sometime I'm just mentioning about when you having a D-shaped cricket ground. It's not so easy to score the run behind the wicket and square up the wicket. Just have a look at stroke. Perfectly struck, isn't it? Any ground, it might be at least a boundary. The 4 on the board, no loss. Green lines Bengre. Balled him, clean him up. Celebration is on. Then exactly they got a huge wicket taken by the bowler Razin. What a delivery. Quicker one. And Nihal just wanted to go across the line. The beautiful shaping that leg cutter. Not a big turn, but slight a bit of deviation from from the bowler Razin as he picks up the wicket number 1 for the team Green Line Bajpayee. This is what the start they really wanted. The wicket of Nihal as a man in form is back in the hut. One more batter who contributed a lot for the success of Green Line Bengre. Safwan, the experienced man, walking towards the middle. Rnfc Trophy 2026 proudly presented under the great leadership of the President Ashpak. All we can see that some masterminds in this cricket tournament. Those are making a planning, not here but sitting in hot shit and at Gulf country. Samir, Saqib and Shabik, three fielders of this cricket tournament, making all the plans for this cricket tournament. Nicely played it down to short square leg region. They wanted to come back for the second, asking for trouble. Samir from Saudi Arabia, Saqib is also from Saudi Arabia, Sabik from Bahrain. They are all the proud member of Rnfc. The first over completed. Good start there from Razin for the team Green Lines Bajpayee. It's 5 for 1. It's been a very bright sunny afternoon. Time is exactly 1:45 in the afternoon. Still some kind of wind which is flowing in the ground, and it's 5 for 1 after completion of over number 1. It's 5 for 1. The second over going to start. Second over going to start from the commentary box, and looks like the bowler from the road end, in fact, and Samir brought into attack from the air trading end, and the bowler started his first over and second over of the innings. Starts with the warm-up delivery of the afternoon, going down the leg side to far umpire Roland Pinto, and calling that wide with the Texas Coburn. Moves on to 6 for 1 in the over number second is in progress. Samir. Again, this time outside the line of off stump, too far. So second wide, one down the leg side, second down the far outside the line of off stump, and the bowler a little bit struggling to get his line and land. So 2 gifted runs here for the team Green Lines Bengre. It's 8 for 1. 3 gifted runs, in fact. One wide plus 1 in the previous delivery. The gifted runs here for Green Lines. Again, the bowler absolutely struggling a lot. Again, the 1 plus 1 is absolutely feeling the pressure. Again, that 1 plus 1 without bowling a single delivery, already conceded 5 runs. And so scoreboard now moves on to double figure 10 for 1. And the over number second is in progress. Played it straight to the hands of extra cover. Chance of run out, but throw is not good enough there from the extra cover field.
Good backup by the fielder at short mid wicket. And Safwan quite hardly managed to complete the single. Nelson in the scoreboard, 1-1-1, all 4 ones in the scoreboard. 11 for 1 in 1.1. Again, just missed by the wicket keeper when the bowler bowls a good line. Wicket keeper not supporting even the short fine leg fielder. The man is not really having a good time and behind the stump. And 12 for 1. That brings Safwan into strike now. Again, the wide number 3-4 in fact from Samir. I'm really surprised sometime why the bowler is making so much of mistake when the captain asks you to come and bowl with the good overs. Again, wanted to go for the reverse hip. Again, looks like umpire will going to call that by. Wicket keeper not really up to the mark sometime. Now wicket keeper sacrificing his place, and better to have this man behind the stump. At least its heavy body will going to stop the ball. And wait and see. 14 for 1. Samir will going to continue. Now, that was absolutely... The judgment is not perfection here from the cow point fielder. He's got a plenty of time to judge that catch. He's got a jump before ball came into him. The young man at cow point. What could be a chance for a wicket? But it's gone in vain. Couple of runs to take the total score into 16. All we can see that all extras, the big number of extras in this over. Imran, big striker of the ball. This time lofted and got a distance. Magnificently struck by Imran. What a clean striker of the ball. When he hits the ball, he hits absolutely very clean, as clean as a weasel. Just have a look at that follow through. Just using his feet, couple of steps. The field at long on, he's got a jump, but it's not good enough to stop. At least he can try for that, saving the boundaries, saving the 6. But ball went into the fence for a maximum. 22 for 1. Expensive over is in progress. Again, the fielding is not up to the mark, but this man is doing a good, lovely job by the jersey number 10. But still, a couple of runs. It's been really a big over. The prolonged over and expensive over, which comes to 9. 24 for 1. Just I want to see how many runs. 20 runs came from this over of Samir. 20 runs which came from this over. 19 correction. One in the form of some buys. 2 buys. Very expensive over indeed from Green Line Bajpayee, the previous over by Samir. Now this bowler have to do something special. The field which is going to be spread out after the power play. Razin will going to bowl the second over. Last over of his quota. 5 in the first over. In the power play, did a lot of good work in that over, but now you need to continue that in this over as well, because team Green Line Bajpayee wanted good over because of that very expensive over bowled by Samir in the second. Razin bowls. Now he's a man is maybe getting some inspiration from his partner. The previous over ball, the wide. He's absolutely forgotten the wide, but watching his partner bowl so many wides, it just recall the memories. Safwan, typical Safwan. He is very good in that particular shot. Any ball around his legs is so good. Playing the ball by flicking the ball using the wrist. Flick of the wrist which comes into play. 26 for 1 in the over number 3 is in progress.
Oh, what a walk! What a walk by the big man behind the stump! Absolutely electrifying. This is a good choice, isn't it? I already mentioned asking him to come and keep the wicket is absolutely justifying. Just have a look at the collection here from now. Lovely job, my. Absolutely fantastic, isn't it? Just a fractionally the batter is survived. Wait and see. The third umpire has been asked. Umpire how to see any part of his boot inside the line or not, because on the line, which is not good enough, but how to have a little part inside the line if they wanted to. And a very close call here for Suresh Mudabidre. When the bails are uprooted, the batter's back foot is might be is a safe, just a safe, is not out. Is called from the third umpire. Just a little bit fractionally his boot is inside the line, saving him from the stump out. Good work done by the wicket keeper. Razin once again back to his bowling mark. Imran will going to take the strike. Reverse sweep, ball is in the air, but safely landed, and the wicket keeper couldn't manage to run quickly to that ball. Ample time for the batter to complete the single. 27 for 1. 27 for 1. One more single to total. Good tidy over. So far 3 balls, 3 runs conceded by Razin. Safwan, very intelligent, very intelligent. This is a good cricket there from Safwan. This is what sometimes the traditional cricketing strokes, you can see that not really try to hit it too hard. And playing that soft hand quite cleverly in the gap. You know exactly long off is deep. Cow point is also deep. Once he gets past that extra cow field, you can get easily the couple of runs. Intelligent cricket there from Safwan. It's 29 for 1 in the over number 3rd is in progress. Again, roll up the wrist which comes into play. Safwan again looking for second, but asking for trouble. The fielder is so quick to react to that one from the deep long on in the wide-ish. 30 for 1. Both the batters are playing a good cricket here. Clever cricket. They know exactly the Razin is a good bowler for the side. It's very difficult to go for the big shot. Just trying to rotate the strike. But this man, every bowler is same. Again, wanted to go for the expansive drive. Slight a bit of comedy of error there from the fielder at point region. The ball absolutely playing with this man. Ball is just spun in front of the fielder and couldn't manage to judge it well. 32 for 1 after completion of over number 3. It's good going here for the Green Lions Pengre, and wait and see how well they're going to continue their business in the remaining 4 overs. It's a time to change in voice as well. It's a time for Gopi to take over the microphone after he's got a very good lunch break in the afternoon, and looks like okay, you will going to explain what he had, because I think it's hopefully a ghee rice, one of the favorite food here, and with chicken kebab. I don't know, but Gopi will go into explain everything about that lunch break. Thank you. It's over to Gopi. धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। एक बेहतरीन खाने के बाद एक बार फिर से माइक्रोफोन मैं संभालता हुआ, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर का 32 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका, और इस वक्त रिव्यू जो कि इस वक्त लिया गया है वाइड के लिए कि ये वाइड है या नहीं, ये परखने के लिए। तो ग्रीन लाइन बेंगरे इस वक्त एक बेहतरीन स्थिति में नजर आता हुआ 32 रन एक विकेट के नुकसान पर जोड़ चुका है। पिछले हफ्ते खेले गए जय भारत ट्रॉफी में ग्रीन लाइन बेंगरे ने जॉइंट विनर्स का खिताब उन्होंने प्राप्त किया था। स्नेहा मालेमार के साथ मेगा फाइनल में वर्षा आने के कारण मैच को रद्द कर दिया गया था, और इट्स अ फायर डिलीवरी और जॉइंट विनर्स जो कि घोषित किया गया था। और एक बेहतरीन संतुलित टीम ग्रीन लाइन बेंगरे, और ग्रीन लाइन बचपे भी काफ़ी संतुलित टीम है, तो ऐसा कहना पड़ेगा दोनों संतुलित टीमों के बीच एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर जारी। 32 रन एक विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर इस वक्त
शुरू होता हुआ। सफान और इमरान इस वक्त मौजूद, और खासकर इमरान एक बेहतरीन बल्लेबाजी इस वक्त निभाते हुए 16 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 8 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। यह गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली इनफैक्ट, और डीप मिड विकेट पर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को फील्डर फील्ड करे। बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन न प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची। रन इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। द स्कोर स्टेज एट 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है इस वक्त अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद जस्ट गॉन फॉर अ माइट हैव नॉट सक्सीडेड, जस्ट वाइड ऑफ विकेट कीपर गेंद जाते हुए शॉट थर्ड मैन पर, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। और जहाँ तक इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुँच चुका है कुल मिलाकर 34 रनों पर 34 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनफैक्ट इट्स 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। इस बीच यह गेंद बेहतर गेंद थी, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। मकफूर जो कि मुजीब जो गेंदबाज हैं मंगलूर के, उनकी शैली में गेंदबाजी करते हैं। इस वक्त इस गेंद को उछाल दिया, इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। जी नहीं, मिस जजमेंट एंड द बॉल गॉन ओवर द फेंस फॉर अ मैक्सिमम। शायद यहाँ पर मौका जरूर था कैच आउट का, लेकिन अंतिम क्षण में वहाँ पर कुछ टकराया जरूर फील्डर के पैर से, और कुछ हद तक वो डगमगा गए जब तक वो संभले गेंद उनको वंचित करते हुए सीधे सीमा रेखा के पार चले गए लॉन्ग ऑफ पर 6 रनों के लिए। तो लकी छक्का इस वक्त लग चुका है, और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस छक्के का, इमरान के बल्ले से छक्का लग चुका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 41 रनों पर 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बेहतर स्ट्रोक इमरान के बल्ले से लगता हुआ, और इस छक्के के साथ इमरान जो कि अपने कुल रन संख्या को इस वक्त ले जा चुके हैं 23 रनों पर। इस बैटिंग ऑन 23, द साइड टोटल इज नाउ 41 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और काफ़ी प्रखर धूप मैदान पर इस वक्त छा चुकी है। लगभग जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका है, लगभग 34 से 35 डिग्री सेल्सियस मंगलूर का तापमान इस वक्त दाखिल हो चुका है, और भीषण गर्मी का एहसास ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी यहाँ पर करते हुए, और आने वाले दिनों में तापमान और ज़्यादा बढ़ने की संभावनीयता है। जो जहाँ तक अगले मैच का सवाल है, जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैच, एसटीसी जयपुर will takes over Rnfc Kudroli in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್ಟಿಸಿ ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಆರ್ಎನ್ಎಫ್ಸಿ ಕುದ್ರೋಲಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सफ़ान इस वक्त दाहिने हाथ, ये गेंद दाहिने हाथ के गेंदबाज की गेंद थी, गेंद सीधे इस वक्त जा चुकी है। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1, 1 डिक्लेयर्ड शॉट, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 42 रनों पर 42 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। इम्तियाज बेंगरे जो कि इस वक्त मैच का मुआयना करते हुए निश्चित रूप से उनकी टीम की प्रदर्शन को वो इस वक्त देखते हुए, और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट कीपर चूके। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन से यहाँ पर मिलेंगे 1, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 43 रनों पर। निश्चित रूप से ऐसा कहना पड़ेगा ग्रीन लाइन्स बेंगरे के बेहतर स्कोर पर की ओर इस वक्त बढ़ता 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फैंटास्टिक सेकंड विकेट पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर बिटवीन इमरान एंड सफ़ान। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को, गेंद जाते हुए लॉन्ग ऑन पर दमदार स्ट्रोक जरूर, लेकिन सिर्फ एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। सफ़ान सामना करते हुए इस वक्त राशिद की गेंद को ऑप्शन से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद शॉट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 45 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए। और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर होता हुआ ग्रीन लाइन्स बेंगरे इस बार गेंद को उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी, बिल्कुल जमीन के सहारे, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद कंपेयरिंग टू द प्रीवियस वन, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला।
41 for the loss of 45 for the loss of 1 wicket. और रशीद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद again a fantastic delivery and a fantastic delivery to end the fantastic over. Just 4 runs came from this over from Rashid, and after 5 overs Green Line Bangre still progressing along nicely. 45 for the loss of 1 wicket after completion of 5 overs. Now just 2 overs remaining in their innings, and let's wait and see how many runs they will make in this remaining 2 overs with the help of remaining 9 wickets. 2 overs left over का खेल बाकी. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त बचे हुए 12 गेंदों का, तो देखते हैं पर इन बचे हुए 12 गेंदों में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं. मैदान के ऊपर कई चील और पंछी इस वक्त लहराते हुए. निश्चित रूप से नदी तट का ये मैदान, नेत्रावती नदी तट का ये मैदान ना, और शायद अपने खुराक की तलाश में इस वक्त मैदान के ऊपर कई चील और पंछी इस वक्त लहराते हुए. और जहाँ तक सवाल है इस मैदान का, तो काफ़ी बेहतरीन मैदान ना, टिप्पू सुल्तान क्रिकेट मैदान कुद्रोली का, और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला आरएनएफसी क्रिकेट फेस्ट, आरएनएफसी ट्रॉफी 2026 एक शानदार प्रगति यहाँ पर करता हुआ. और गेंदबाज फारूक का गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ करते हुए. सफवान इस वक्त सपना करने के लिए तैयार. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 46 रन. 1 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है. Lofted this time. I think it might been taken comfortably by the fielder inside the fence at wide is long off. He just hit that one pretty hard but can't find the gap as well. And a well judged wicket taken by the fielder at wide is long off just inside the fence. Have a look at this in the replay. गेंद को किस तरीके से उछाला था, काफी वाइड गेंद थी और गेंद को उछाला जरूर रहा, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में असफल. और वाइड इज लॉन्ग ऑफ पर हालांकि फील्डर को थोड़ा सा दौड़ जरूर लगाना पड़ा अपनी बाईं और 8 से 10 कदम, लेकिन गेंद पर अपने नजरें गड़ाए रखते हुए गेंद को बेहतरीन जजमेंट के साथ लपकने में सफल. और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है सफान का. इज आउट फॉर 15. सफान आउट फॉर 15 ऑफ 13 डिलीवरीज एंड अ सेकंड विकेट लॉस फॉर ग्रीन लाइंस बैंगरे. इट्स 46 for 2. इस शानदार श्रृंखला के कुछ मुख्य स्पॉन्सर्स ASR फिशरीज, दक्के बंदर मैंगलोर, AR ट्रेडिंग, देरा दुबई, मलपे फ्रेश मरीन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड. और 3 पिलर्स इस श्रृंखला के मुख्य 3 सूत्रधार, श्रीमान समीर सऊदी अरेबिया, श्रीमान सकीब सऊदी अरेबिया और श्रीमान साबिक बहरीन. और इस बार गेंद को उछाला खूबसूरती के साथ 6 रनों के लिए into the players dugout. This is a magnificently struck came from the bat of the right-handed batsman. जुनैद छक्के के साथ, और देखिए यहाँ पर किस तरीके से गेंद को उछाला था. This is an absolutely fantastic struck came from the bat of Junaid and he just opened the account with this maximum. 50 comes up. इस बार एक बार फिर से into the gap as well, लेकिन फील्डर मौजूद. इस वक्त एक मात्र रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े. थ्रो पहुंचा, काफी जोरदार थ्रो जरूर, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. रन आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए ग्रीन लाइंस बैंगरे. 54 for the loss of 2 wicket in the over number 6 in progress. और निश्चित रूप से इस वक्त सफान का विकेट जरूर गिरा है, लेकिन उसके बाद जो बल्लेबाज आए जुनैद इस वक्त एक आक्रामक शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं. इमरान नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, काफी थके मांदे इस वक्त मैदान पर बैठे हुए, कुछ हद तक डिहाइड्रेशन का शिकार इस वक्त होते हुए, लेकिन सही सलामत. और इस बीच गेंदबाज तैयार. ये गेंद बॉल्ड जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ, नॉट सक्सीडेड. Just change of pace, about a slower one comparing to the previous delivery, and he just get rid of the batsman. Short but good innings came to an end from Junaid. Is out for 8 of 3 deliveries. और यहाँ पर देखिए किस तरीके से विकेट गिरा था. लेग कटर गेंद पर उछालना चाहता, चूंकि गेंद ऑफ स्टंप पर जा टकराती हुई बेल्स डिस्टर्ब होते हुए. Junaid scored 8 runs of 3 deliveries with a strike rate of 266.66, and with that dismissal, Green Lions Bangre lose the third wicket. It's 54 for 3. तो जैसा कि मैं फरमा रहा था, 3 मुख्य पिलर श्रीमान समीर सऊदी अरेबिया, सकीब सऊदी अरेबिया और साबिक बहरीन, जो कि इस वक्त विदेश से इस श्रृंखला का मुआयना करते हुए इस श्रृंखला के सफलता के मुख्य सूत्रधार कहना पड़ेगा इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट RNFC
क्रिकेट फेस्ट RNFC ट्रॉफी 2025 के मुख्य सूत्रधार 3 पिलर से इस वक्त इस मैच का मुआयना करते हैं विदेश से। और कुल मिलाकर आज इस मेगा श्रृंखला का पहला दिन का चौथा मैच इस वक्त खेला जाता हुआ नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े, रन का खतरा लेकिन थ्रो धीमा, वाइड का इशारा। 1+1 2 रन एडेड टू द टोटल 56। अब तक 56 रन बच चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 56 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। इम्तियाज नए बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करते हुए, धीमी गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, लेकिन सीधा इट्स क्लियर डिफेंस, इट्स क्लियर डिफेंस एट लॉन्ग ऑन फॉर अ मैक्सिमम। इमरान के बल्ले से यह छक्का लग चुका है और निश्चित रूप से बल्लेबाज के पास काफी वक्त था, काफी धीमी गेंद थी। देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इस वक्त। लॉन्ग ऑन पर फील्डर ने जी तोड़ कोशिश जरूर की, अपने ऊपर के छलांग लगाकर गेंद को लपकने की, लेकिन गेंद उनको बीट करते हुए लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जा चुकी है। इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ, एक्सक्विजिट टाइमिंग्स के साथ, डीप एक्स्ट्रा कवर पर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला, लेकिन थ्रो इस वक्त विकेट उखाड़े गए जरूर, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 64 रनों पर। 64 for the loss of 3 wicket in the over number 6 has been came to an end. 64 on the board and absolutely green lines. Bedra heading towards to a huge total now. 19 runs came from the last over from Farooq. And because of this over, I must say green line Bedra just tightening the screws in this match. 64 for 3 and now just a last over remaining in their innings. Imran, what a fantastic knock coming from him. 20, he's batting on 27 of just 16 deliveries. पहली गेंद उछाला इस वक्त, not quite middle की, chance for mid off fielder and he took the catch successfully. मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए थे, मिड ऑफ पर इस कैच को लपका गया फील्डर द्वारा और एक और विकेट गिर चुका है। Now the score is 64 for 4. STC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬ ತಡವಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. STC ಜಪ್ಪು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So 5 balls left in overall calculation in their innings. नए बल्लेबाज मुस्ताफा का आगमन इस वक्त होता हुआ, बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज राशिद की गेंदों का। राशिद जो कि अपना पहला ओवर काफी बेहतरीन फेंक चुके हैं, इस बार चिप किया गेंद को खाली क्षेत्र पर, फील्डर थोड़े से पीछे वाइड लॉन्ग ऑफ पर, इनफैक्ट जस्ट अ सिंगल दे गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 65 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 65 for the loss of 4 wicket in the over number 7 in progress. This is an absolutely terrific progressing year for Green Lines Bedra. और दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछाल दिया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर इमरान ने, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। एक बेशकीमती पारी की समाप्ति हो चुकी है। इमरान इज ना आउट फॉर 27 कॉट बाय द लॉन्ग ऑफ फील्डर। और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था इमरान ने, लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके और वाइड लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपक लिया गया। So Imran the man departs. Fantastic knock came from him. 27 of 17 deliveries he scored and is backing to pavilion. Players dugout में तालियों के साथ इस वक्त इमरान का स्वागत तक किया जा रहा है और 65 रनों पर 5वां विकेट हो चुका ग्रीन लाइन्स बेंगरे। It's 65 for 5. 3 गेंदें इस वक्त बाकी उनकी पारी में। नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ मॉनिटर पर इम्तियाज को इस वक्त दिखाया जा रहा है। इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, मिड ऑफ पर रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 66 रनों पर। 66 for the loss of 5 wicket. 2 balls left now in their innings. और निस्संदेह इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा ग्रीन लाइन्स बेंगरे के बल्लेबाज डोमिनेट करते हुए इस वक्त सिर्फ 2 गेंदें बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 2 गेंदों में ग्रीन लाइन्स बेंगरे के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज मुस्ताफा सामना करते हुए इस बार गेंद को साइड पर मोड़ना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के हाथों में गेंद, थ्रो पहुंचा डायरेक्ट हिट, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं।
तो 1 रन मात्र बल्लेबाज को नहीं टीम को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 67 रनों पर 67 for 5. Last ball now remaining in their innings. जम्मी जो कि सामना करने के लिए तैयार है उनके पारी के अंतिम गेंद का और रशीद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. लॉफ्टेड नॉट क्वाइट मिडल गेंद लेकिन गेंद गैप पर गई है. इस वक्त 1 रन मिलेगा. दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर प्राप्त करने में सफल. एंड विद दैट कपल रन द इनिंग्स इज अप फॉर ग्रीन लाइंस बेंगरे. दे स्टार्ट इज वेल, प्रोग्रेस्ड वेरी वेल and finished very well with 69 for the loss of 5 wicket in the stipulated 7 overs. And now the target is 70 for Green Lions Bajpe, which set by Green Lions Bengre. Exactly 10 runs the required run rate for them. Exactly 70 runs they have to score in the stipulated 7 overs. That means in the stipulated 42 deliveries with help of 10 wicket they have to score for victory. The present equation shows for them. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾಷಾ 11 ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಷಾ ಇವರ ಆಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ RNFC ಸಂಘಟಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಾಷಾ, ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಭಾಷಾ 11 ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್ once again. So exactly 70 the target for Green Line Bajpe set by Green Lions Bengre. Then it's now going to start. और इससे पहले कि उनकी पारी की शुरुआत हो आगे का आंखों देखा सुनने के एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राज्य भाषा कन्नड़ में रफीज मुडपित्री को आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए. धन्यवाद. थैंक यू. सो 70 द टारगेट फॉर ग्रीन लाइंस बजपे और उनके पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल ब्रेक के बाद. और आगे का आंखों देखा सुनाने के एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में मैं सतीश को आमंत्रित करना चाहूँगा. धन्यवाद. थैंक यू. Thank you so much, Gopi. Welcome back once again. Good afternoon, cricket lovers, and going to be a second round match of the pool, local pool, and day number 1 of the prestigious Rnfc Trophy 2026, which is proudly presented by Team Rnfc in the slogan of Cricket Fest and Cricket for cause of Kudroli. And wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. Correction, this is the last match of the first round, and the team Bajpe Bengre, they have to chase down huge total and target which is set, which is exactly 70, one of the highest total score of the tournament recorded here, and have to climb the mountain of runs by the batters of Green Line Bajpe.
just feared the batter. This time he lofted high up in the air, long on field, and Nihal underneath it, and he takes a catch. Excellent judgment. We have to run from the deep long on to his friend to get the catch. He played it very high, isn't it? And the first ball dismissal. And the batter Shafiq, the batter, is back in the pavilion. Caught at long on. And Nihal, the fielder, takes a catch. Jami strikes in his first ball. The man who really performed fantastically for the success of the Green Line Bengre at Mangalore, Sharada High School Cricket Ground, Nandavar. The Jai Bharat Trophy. Jami is chosen as the best bowler of the tournament with this excellent bowling performance. And now he continues here and picked up a wicket in his first delivery. And got a once again good start for the team, Green Line Bengre. New batter in is Ichu. Will going to face his first delivery, second delivery of the power play. Down the leg side, going to be a punishable from the umpire. Sri Raj has got a warm up in the afternoon. And 2 on the board without loss of any wicket. Still a long way to go. One of the highest total score they have to get. Again down the leg side, Ichu couldn't manage to get the ball, reach the ball which is around his legs and within the reach of his bat, so that umpire not interested, rightly so. Wicket keeper did the rest, back to bowler. This time again mistimed stroke, but landed safely out of the reach of the fielder at short mid-off. Ample time for batter to complete the single. With that single, Skobanda moves on to 2 on the board for 1 wicket. Have to get some good start here for the team. Bajpayee across the line, pays the penalty. You miss, then you are absolutely right in front of the stump. There's so many leg before wicket in this day number 1. The one more very good delivery there from Jami. This time he bowled a flighted delivery. You can see that absolutely right in front of middle stump, plumb in front of wicket. No doubt at all in the mind of umpire Sri Raj to raise his finger. Wicket number 2 gone. Green Line Bajpayee 2 for 2. Umpire Sri Raj and at square leg umpire Lauren Pinto. Here in commentary box as the third umpire, we have Suresh Mudabidre and Sri Raj Vijayalakshmi. Last couple of deliveries left in this over. Right now over the wicket, balls down the leg side, going to be a fair delivery. One more misjudgment by the bowler, the new batter Samir. And this has been a one more fantastic over is in progress. 2 wickets for Jami. Oh, wicket number 3 here for Jami. Is absolutely jump off the bowling here from Jami. What a great start here from Green Lines Bengre through Jami. Picked up wicket number 3rd. Just wanted to go for the expansive drive. Beaten by the pace and a slight bit of moment. Incoming delivery. Samir has got no clue whatsoever. The wicket number 3 gone. It's 2 for 3. And the team Green Lines Bengre are looking in trouble against the Green Line Bengre. The battle is on here for place in the quarter final. The prestigious Rnfc Trophy 2026. In commentary box, we have one more gentleman in my left, Afiz, as a scorer, replacing Swastik.
Bowler brought in to attack the ball. The second over from the Air Trading company. Air Trading, one of the biggest supporter and sponsor of this cricket tournament. Air Trading, there are Dubai. And Sazim will go into ball to the big man. Nicely driven towards a long off for a walkable single. The addition of that single score now moves on to 3 on the board. Nice looking and confident stroke there from Ichu. 3 for 3. Appeal and given him. Left arm in front of wicket, no doubt at all. Absolutely ball which just came into the batter with the pace and dead straight. Just have a look at it on replay in that action. And it's back foot right in front of midland leg stump. Definitely after the ball hit the pad, then he drags his back foot. Three for 4. Green line Bajpayee. And the scoreboard, it's not a cricket scoreboard, it's a volleyball or kabaddi scoreboard. 3-4. The new batter in is Munaz. Came into middle very quickly here as a number 6 batter for the side. Sazim balls far away outside the line of off time. The wide call by umpire Roland Pinto. One more addition, 4-4. That means 4 for loss of 4 wicket. Green lines Bajpayee. One more quicker delivery there from Sazim, enjoying the condition very well in the afternoon. And it's 4 for 4. Again the ball which is going towards outside the line of leg stump by call by umpire. One more extra wicket keeper missed it. And scoreboard now moves on to 5 for 4. First time the competition between run and the wicket, and a run which is won the competition. It's 5-4. Big man is in action and he will going to get the big one. No, one bounce into the fence for 4 runs. Lovely shot. This time H is given everything. Whatever he has got the muscle power, he used that one to get into that ball into the mid wicket. Even though he lost his grip over the handle of the bat, but he just went with his bottom hand and played it exquisite lofty drive into the mid wicket boundary for 4 runs. Needed such kind of treatment from the batters of Green Line Bajpayee if they wanted to back in the game. It's 9 for 4. Absolutely, it's a very hot condition here. Probably the month of April is always challenging, and every year the temperature is going higher and higher. It's more than 33 to 34 degrees Celsius temperature. Again, lovely delivery, half-hearted shout, chance for run out in a non-striker's hand. No one there. Oh, he hit it. Hits a stump, and the batter looks like Munaz is out of his crease. He's back in the pavilion. And certainly the ball is going to miss the leg stump, surely. But you can see that Ichu is not interested for the run, but his partner is already half away. And no way for him to back into his crease. One more wicket back in the pavilion. It's 9 for 5. Green Lines Bajpayee searching for the right track. The new batsman in is just number 18.
It's not a Virat Kohli, but the Kohli of Bajpayee. Irfan on the yesterday for RCB, and Virat Kohli once again showing his excellency. One more 50 under his name. The orange cap holder of this present IPL with the highest run getter of the tournament, Virat Kohli. It's 9 for 5 and the over number third is started now. This time again wide call by umpire, one more extra. With that extra score, but moves on to 9 for the loss of 5 wicket. Taju. So one more addition to total. Scoreboard moves on to 11 on the ball. 11 for 5. Again, Ichu doesn't get hold up that end properly. Played it down to short mid wicket region for a single. Hit the bat and the bat into the ground, and along with that ball, and that's why I didn't got that much of timing in the shot. Played it gently down to mid on, and the fielder missed it. Batter got a single. With that single scoreboard moves on to 13 for 5. The man in mid on, and absolutely bull from Adur, and the member from Adur Bulls with the jersey number 333. Universal boss, and it's gone. One more wicket back in the pavilion. Big man departs. The big man trying for the big shot, but he's just choosing a wrong line, a wrong delivery for the big one. The bowler absolutely disturbed the furniture. Sazim once again delivers a beautiful delivery, flighted and Yorker line delivery, almost into the block hold of Ichu. And Ichu back in the pavilion. The problem continues here for Green Lions Bajpayee. And in the big screen, Imtiaz, the man behind Green Lions Bengre, absolutely taking some responsibility, being the coach for the team, because Team Torpedoes Khan is representing in this tournament, so that it might need to be. Oh, now he's wearing that beautiful, yes, specs, and looks so beautiful. And of course, it still is a very young and energetic, looking very smart. 13 for 6. This is what the beautiful view of the boat which is passing just behind this cricket ground. We can see that it's fishing the boat. Played it gently down to square leg region in front of square for a easy single. 14 for 6. They are absolutely hard worker. What you call, they are the son of a sea. What I call is the hard worker. And whatever we are daily having the delicious varieties of fish, they are the responsible for that. Because of their hard work, we are getting such kind of varieties of fish, and they are enjoying their duty. And the cameraman of Bedra Media, every time he is very excited to cover something different. Mustafa, the man behind this coverage. Thank you, Mustafa, for a wonderful view of the boat is just passing in this beautiful river. 3 gone, it's 14 for 6. You are watching prestigious Rnfc Trophy 2026. Green line, but Jimmy, wonderful performer from the ball. Change of pace, slower one. Line is outside the line of leg stump, but the batter Rashid couldn't manage to judge it well, as the ball just passed around the legs of the bat.
The third umpire has been asked for the wide decision. The umpire just wanted to see whether the ball is passing inside the line or not. Just wait and see. Very close to that line. It's a fair delivery from the third umpire. No damage done and no run scored. 15 for 7. Jamming. This time I saw that of the bowler and picked up a single for that. With that single score moves on to 16 for 7 in the over number 4 is in progress. Last time in this over. Jamming. This time just flicks that one down to square leg division for a single. He will go into retain the strike. 4 gone after completion of 4 overs. It's 17 for 7. 3 overs remaining. Still long way to go for the team Green Lions Bajpayee to win this match. They needed another 53 runs to win this match in 3 overs. So time to change in voice. It's a time for Rafiz Mudabidre to take over the microphone in state language, sweet language, Kannada. Thank you. ಧನ್ಯವಾದ ಸತೀಶ್ ರವರೇ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 70 ರನ್ಗಳ ಜಯದ ಗುರಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಜೀಮ್ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶಾಜೀಮ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ರನ್ಔಟ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಟಗಾರರು ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವ ಸೂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ವಿಕೆಟುಗಳ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. 70 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ 4.3 ಓವರುಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿ 8 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. ಇನ್ನು 15 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 53 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ.
ಶಾಜಿಮ್ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. 9 ವಿಕೆಟುಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರೋಲೆನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರಿಂದ ಆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ಲಾಘನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಮೈದಾನದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ರಜೀನ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ 9 ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಾಜಿಮ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಲೆಕ್ಕದ್ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ರಜೀನ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಶಾಜಿಮ್ ಅವರ ಆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಜಿಮ್ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ. ಇರ್ಫಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. SDC ಜೆಪ್ಪು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ 2 ತಂಡಗಳ ಕಪ್ತಾನರು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ SDC ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. 5 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 51 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಂತಿಮ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 51 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಡಾಟ್. ಕೊನೆಯ 1 ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡನ್ನ ಬೀಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ 1 ಓಟವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 9 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 9ರ ಮುಂದೆ 49 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು SDC ಜೆಪ್ಪು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ಈ 2 ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ 2 ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ಗಳು ಬರಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 2 ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ SDC ಜೆಪ್ಪು ಮತ್ತು RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 6 ಮುಕ್ತಾಯ. 6 ಓವರುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 21 ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆದಿಲ್. ನೋಡಿ, SDC ಜೆಪ್ಪು ಹಾಗೂ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ 2 ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 2 ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓವರ್ನ 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 4 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡ 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಬಹುಶಃ ಈ ದಿವಸದ ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗರೆ ಗಳಿಸಿರುವತಕ್ಕಂತಹ ರನ್ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 69 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗರೆ ಗರಿಷ್ಠ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಿಲ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನ SDC ಜೆಪ್ಪು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ SDC ಜೆಪ್ಪು
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ SDC ಜೆಪ್ಪು ಮೊದಲಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಜ್ಪೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ RNFC ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ RNFC ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ RNFCಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಕೀರ್ ಅವರು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಾಕೀರ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ಪಂದ್ಯ SDC ಜೆಪ್ಪು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ RNFC ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿರವರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕವನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. धन्यवाद शुभान राफीज मुडबिद्रे और जहाँ तक सवाल है इस वक्त ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಯಾರಿಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಡಗೌಟ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
धन्यवाद राफीज मुडबिद्रे। और जहां तक सवाल है मैच नंबर 5 का, एसटीसी जम्मू का मुकाबला होता हुआ मेजबान होस्ट टीम आरएनएफसी कुद्रोली के साथ। और पहले आरएनएफसी कुद्रोली बल्लेबाजी करता हुआ मैच की पहली गेंद लेग से बाहर, गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, बट ही गॉट अ सिंगल। और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। 1 रन बिना किसी नुकसान के और पहला ओवर इस वक्त शुरू हो चुका है। गेंदबाजी शुरू कर चुके हैं गेंदबाज शाहनवाज, जबकि शकील अपना पहला रन बना चुके हैं। सियाब जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। द मैच नंबर 5 एंड द फर्स्ट मैच ऑफ द सेकंड राउंड ऑफ दिस प्रेस्टिजियस cricket tournament RNFC Trophy 2026 is now begin here। और बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट बदलने के बाद एक बार फिर से अपने स्थान नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाते हुए, और गेंदबाज शाहनवाज गेंदबाज इस वक्त करेंगे सियाब के लिए। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार सियाब मुन्ना सामना करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया ऑफ द टोज। गेंद इस वक्त पहुंची मिड ऑफ पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। आरएनएफसी ने यूनाइटेड पातुर को पहले दौर में पराभव किया था, जबकि एसटीसी जयपुर रोमांचक तरीके से विजय उन्होंने दर्ज किया था रेडविंग्स कुंजत बैल के खिलाफ। और आरएनएफसी पातुर ने भी अंतिम गेंद पर विजय दर्ज की थी। इस बार गेंद ऑन साइड पर बेहतर फैंटास्टिक स्टॉप मेड बाय द स्क्वायर लेग फील्डर। निश्चित रूप से अपनी बाईं ओर झुकते हुए गेंद को रोका इस वक्त उन्होंने अंतिम क्षण में, और ऐसा कहना पड़ेगा कम से कम 3 रन अपनी टीम के लिए बचाने में सफल। देखिए रिवर्स शॉट के लिए किस तरीके से गेंद को खेला था, दमदार स्ट्रोक था, लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग इस वक्त स्क्वायर लेग पॉइंट फील्डर द्वारा कहना पड़ेगा। बाएं हाथ के लिए पॉइंट क्षेत्र कहलाता है। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को निकाला इस वक्त कवर पॉइंट पर, जस्ट सिंगल गॉट। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 गेंदें उनके पारी में फेंके जा चुके हैं और शाहनवाज अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तो विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज शकील जो कि सामना करने के लिए तैयार। यह गेंद क्विकर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए गेंद को इस वक्त बोटने के प्रयास में, चूंकि लगभग जमीन के सहारे गेंद थी और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन सब बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। और अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर विकेट स्वीप करना चाहा, टॉप एज पर गेंद, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे तैनात स्क्वायर लेग पर, और 1 रन का इजाफा इस वक्त हो चुका। अपील न करते हुए इस वक्त आउट किया। और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा बल्लेबाज को इस वक्त एक बार आउट घोषित किया गया था, लेकिन असल में क्या हुआ था यहां पर जानना जरूरी है। गेंद टॉप एज पर टकराए थे, फील्डर पहुंचे, शॉट इस बार गेंद को लपकने में सफल रहे थे और इस वक्त अंपायर ने आउट उन्हें घोषित किया है। तो बल्लेबाज कह रहे हैं कि हाथ के ऊपरी भाग पर लगकर गेंद उनकी उछली थी और देखना यह है कि इस वक्त आखिरकार क्या नतीजा यहां पर निकलता है। तो 5 गेंदें यहां पर फेंके जा चुके हैं और जहां तक सवाल है इस वक्त बल्लेबाज पेविलियन की ओर इस वक्त बढ़ते हुए, और यहां पर ये पहला विकेट गिर चुका। फर्स्ट विकेट फॉलन फॉर RNFC कुद्रोली, 4 for the loss of 1 wicket. The batsman departs. New batsman तनवीर नंबर 3 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर कदम बढ़ाते हुए। तनवीर पिछले मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था यूनाइटेड पातुर के खिलाफ और अपनी टीम को विजय दिलाई थी अंतिम गेंद पर। और यहाँ पर देखना यह है कि इस मैच में उस सफलता के सिलसिले को वो आगे बढ़ा पाते हैं या नहीं। और इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए निशांत यानी निशु, और उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए। Left it this time. I think the fielder standing so deep on the onside and it long gone. The batsman got just a single for that stroke. Not quite mitigated the last moment, लेकिन गेंद इस वक्त टिपा करते हुए लॉन्ग ऑन फील्डर के आगे। आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद गेंद को जब तक फील्ड करके फील्डर थ्रो करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का।
नाउ इट्स 5 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। मुन्ना इस वक्त सामना करते हुए, सिहाबिया ने मुन्ना सामना करते हुए इस वक्त निशु की गेंदों का इस बार ड्राइव कर दिया, दमदार स्ट्रोक का, लॉन्ग की दिशा में गेंद पहुंची। एक बार फिर से लॉन्ग फील्डर को गेंद को फील्ड करना पड़ा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 6 रनों पर। 6 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर और सीधे फील्डर के हाथों में लॉन्ग ऑफ पर। ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक दमदार था लेकिन प्लेसमेंट कुछ खास सही नहीं और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर खड़े हुए थे, अपने दाईं और 3-4 कदम उन्हें दौड़ जरूर लगानी पड़ी लेकिन इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ सीमा रेखा के अंदर लॉन्ग ऑफ पर पकड़ने में सफल, लपकने में सफल और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। सिया मुन्ना डिपार्ट्स नाउ, आई मस्ट से RNFC कुद्रोली लुकिंग इन ट्रबल अ लिटिल बिट। 2 विकेट्स डाउन, 6 ऑन द बोर्ड, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। Just waiting for the number 4 बैट्समैन, नंबर 4 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। आवेश नए बल्लेबाज, नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत से मैदान पर कदम बढ़ाते हुए निशु गेंदबाजी करेंगे इस वक्त बल्लेबाज आवेश के लिए और दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर और निशु अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार रहा। इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट इनटू द गैप एज वेल, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, बल्लेबाज 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा नजदीकी मामला लेकिन निशाना चूका, निशाना जो कि चूक चुका है और बल्लेबाज 2 रन जो कि जोखिम भरा था दूसरा रन पूरा कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 8 रनों पर दोनों अरब बकार को खोने के बाद। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और इस बीच गेंदबाज निशांत गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और सिर्फ 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडर। इस बार बल्ला उनके हाथों से उछल चुका था गेंद से टकराने के बाद और अपना सिर बचाते हुए इस वक्त सिर पर दोनों हाथ धरे हुए बल्लेबाज दौड़ पड़े रन के लिए और निश्चित रूप से बल्लेबाज को रन से भी ज्यादा जरूरी था उनका सिर और इस वजह से अपने सिर को बचाने की कोशिश उन्होंने की, अपने सिर पर हाथ धरे हुए दौड़ना शुरू किया और बल्ला उनसे दूर जाकर इस वक्त गिरता हुआ, लेकिन 1 रन बल्लेबाज दौड़कर प्राप्त करने में सफल रहा और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली, इट्स गॉट अ सिंगल, इट्स ऑफ द बैट एंड विद दैट सिंगल वन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 10 ऑन द बोर्ड। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बैट यानी बल्ला उनके हाथों से उछला था गेंद को खेलने के प्रयत्न में और आखिरकार 1 रन बल्लेबाज पूर्ण करने में सफल रहे। 2 overs completed, the first 2 overs ऐसा कहना पड़ेगा belongs to the bowlers of STC जब they bowled fantastically, the 2 bowlers शाहनवाज and निशांत और 2 ओवर के बाद 10 रन जोड़ चुका है इस वक्त RNFC कुद्रोली। 5 ओवर का खेल बाकी और जहाँ तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है RNFC कुद्रोली को इन बचे हुए 5 ओवर में कम से कम 35 से 40 रन यहाँ पर बटोरने होंगे अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और गेंदबाजी शुरू करते हुए उनके STC जप्पू के अत्यंत अनुभवी खिलाड़ी संतोष जप्पू और तीसरा ओवर शुरू होता हुआ तनवीर जो कि इस वक्त सामना करते हुए क्विकर गेंद उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े, रनआउट का खतरा, निशाना चूका, बैकअप होता हुआ 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा। तनवीर का जहां तक सवाल एक बेहतर बल्लेबाज के रूप में जाने जाता अपने स्थलीय टीम लोकल टीम का प्रतिनिधित्व यहां पर करते हुए RNFC कुद्रोली की ओर से खेलते हुए और 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रन पर 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। संतोष धीमी गेंद कहना पड़ेगा, जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम आउट हिज बैट एंड प्ले दैट वन जस्ट वाइड ऑफ द फील्ड एंड कम बैक फॉर द सेकंड एंड गेट इट कंफर्टेबली। फैंटास्टिक रनिंग बिटवीन द विकेट, हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया था एक्स्ट्रा कवर फील्डर की बाईं ओर से, फील्डर ने थोड़ी सी दौड़ लगाई, जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर क्रिकेट आवेश द्वारा, कभी कभी ऐसा क्रिकेट दिखाना जरूरी होता है वक्त के अनुसार और यह गेंद ड्राइव कर दिया। अब बेहतर फील्डिंग, फैंटास्टिक वर्क मेड बाय द बॉलर हिमसेल्फ ऑन हिज फॉलो थ्रू, कलेक्टेड द बॉल विद हिज वन हैंड एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। और अगली गेंद रिवर्स शॉट और इस बार मिसफील्ड, फील्डर द्वारा बैकअप होता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर पर 2 रन फिर से मिलेंगे बल्लेबाज को।
Again, a couple of runs added to the total. हर रन के साथ आरएनएफसी कुद्रोली की के डगआउट में तालियों की आवाज़, सीटियों की आवाज़ सुनाई देती हुई उनके समर्थक सपोर्टर्स द्वारा। और इस बीच गेंदबाज संतोष जप्पू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। आवेश सामना करते हुए बेहतर गेंद इस वक्त गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए, चूंकि शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन का इजाफा हो चुका है। 16 इट्स ऑफ द बैट, 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। स्टील बॉल लेफ्टी दी ओवर। संतोष एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर तैयार। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 3 गॉन, 6 runs came from this over and after 3 overs still I must say the batsmen of RNFC Kudroli still searching for the right track. It's 16-4 after 3 overs. And just talking about the next match, तो वाइड के लिए इस वक्त रिव्यू लिया गया है, तो देखते हैं यहाँ पर तीसरे अंपायर क्या निर्धार देते हैं। And just talking about the next match, one more good match is now coming up. Reliance Kadipalla will take over Green Line Bengre in the next match, and because of that I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಡೆಲಿವರಿ और ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು संपर्किसಬೇಕಾಗಿ विनंती। और जहाँ तक सवाल है 16 रन 3 ओवर की समाप्ति कर मैदान की दाईं ओर नदी पर जो कि फिशिंग बोट, मछली पकड़ने की बोट जो कि इस वक्त गुजरते हुए, और निश्चित रूप से ऐसे सुंदर से नज़ारे को हम देख सकते हैं यहाँ पर मैदान के दाईं ओर जो नदी है उस नदी पर से ऊपर सिन बोट जो कि इस वक्त गुजरते हुए और उस नदी की शोभा को और बढ़ाते हुए। जहाँ तक सवाल है यहाँ पर एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर खेला जाता हुआ आरएनएफसी ट्रॉफी 2026 के अंतर्गत गेंदबाज आचू गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के से गेंद तक पहुंचना चाहा, ठीक तरह से पहुंचने पाए लेकिन एक रन उन्हें जरूर मिला और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रनों पर 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इन द ओवर नंबर 4 स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो इन देयर इनिंग्स। आचू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। तनवीर इस वक्त सामना करते हुए आचू की गेंदों का, और आचू अगली गेंद ड्राइव किया इस वक्त। एक्स्ट्रा कवर फील्डर संतोष की बाईं ओर पर गेंद पहुंची, जहां पर बाईं ओर जाकर गेंद को उन्होंने फील्ड किया। एक रन का इजाफा हो चुका। रन ज्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए, चाहिए कुछ चौके और छक्के यहाँ पर आरएनएफसी कुद्रोली के बल्लेबाज को अपने टीम की रन की गति पर एक्सेलरेशन लाने के लिए। और आचू इस वक्त तैयार। एक बार हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया स्टंप्स को कवर करने के बाद। द शॉट फाइन लेग पर और तेजी के साथ एक रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और राजू इस वक्त अपने ओवर के अगली गेंद लेकर तैयार। तनवीर क्विकर वन, एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट डिलीवरी। शायद बल्लेबाज के बल्ले पर दरार आ चुकी है। बल्ला इस वक्त बैट इस वक्त पूरी तरह टूट चुका है। जिस तरीके से गेंद को उन्होंने रोकना चाहा था, जिस तरीके की गेंद को बल्ले को बैट को जमीन पर मारा था, उससे सीधे ये बल्ला इस वक्त टूट गया है। ये बैट टूट गया और बैट इस वक्त उनके हाथों में लटकता हुआ। तो अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए इस वक्त प्लेयर चेकआउट की ओर बढ़ते हुए तनवीर, और निश्चित रूप से काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी और इस गेंद पर खेलने के प्रयास में चूंकि, और देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से बल्ला इस वक्त टूटा और बल्ले का कोना जो कि लटकता हुआ रह गया। और आखिरकार अपना बल्ला या बैट बदलने के बाद तनवीर एक बार फिर से अपने बल्लेबाजी के मार्ग पर जाते हुए। द स्कोर स्टेज एट 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अचू अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनवीर जो कि सामना करने के लिए तैयार। ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। 20 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। अभी भी रन सिंगल्स के रूप में ज्यादातर बनते हुए और आवेश 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 8 गेंदों कब तक उन्होंने सामना किया। रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन एडेड टू द टोटल इन द फेस ऑफ बाय विद दैट सिंगल रन द स्कोर बोर्ड मूविंग अप टू 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट।
ओवर नंबर 4 हैज बीन केम सोन एंड 21 for 2, 4 ओवर्स कंप्लीट है, 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में आरएनएफसी कुद्रोली के बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। Bowled him, cleaned him up. Fantastic delivery there from again the master of leg cutter. Santosh strikes here with a beautiful delivery. Just have a look at it in replay. Just wanted to go for the switch it, beaten by that leg cutter. Beautifully executed there by Santosh in the occasion. And the batter Haviz, the back in the pavilion, the man who is sold for highest bidding rate in that Rnfc for the league match is back in the pavilion. It's 21 for 3. The new batter in is one more fantastic performer from Kudroli. Tanveer having some friendly talk with the Santosh, Japu. Both are played together for many years for team Young Friends Surua, and definitely this is going to be a very good contest between these two. Santosh to Muzamil, the man of the match of the previous match, is in action. They picked up a single with that singles cover moves on to 22 for 3, and in the over number 5 is in progress. The icon of Kudroli, Tanveer, the man who really make the name of Kudroli with this very fantastic and successful cricket career. Played for the team Young Friends Surua and for team Torpedoes Khana and NM Cricketers Mangalore, whichever team he represents. He's absolutely being the one of the great performer. Lovely delivery indeed. Again the bat, which is looks like Rnfc have lost the bat number 2. Altogether 3 wickets and 2 bats, which is back in the pavilion. It's not a good news here for the owner of the team. And along with the 3 wickets, he lost almost 4,000. It's 23 for 3. Muzamil wanted to change his bat. And good to see the member of STC being bringing the bat for Rnfc. This is very, very good to see. This has been good to see. Yes, you can see that it's a rare picture. You can see that the opposite team man is bringing the bat for their opposition team. This is what the cricket is all about, isn't it? We are only the opposition, not the enemies. We are all friends, isn't it? And this is what you can see that the players of team STC, Mohit, Sahil, they are under the shelter. They know exactly this is a very hot sun here.
Muzamil, such a wonderful cricketer. Is famously called him here as a Munna. Muzamil checking the quality of the bat, quality of the ball. Santosh once again back to his bowling mark. Will go into deliver fifth time in this over. Beautifully bowled. Perfect cutter again. Direct it. And let's wait and see. Will it going to be a chance here for the team? Umpire didn't call for the third umpire. No third umpire because the batter put his bat quickly to the crease. No appeal as well. Behind the stump, Sahil, the wicketkeeper, knows that no question of run out there. It's 24 for 3. Santosh again. The Tanvir wanted to go for the switch it. Almost he got, looks like he's got his position to play that switch it. Good over there from Santosh. Excellent over. He completes his 2 overs quota with the 10 runs and a wicket. It's 25 for 3 after completion of 5 overs. Rnfc Kudroli are searching for the right track and they're going exactly 5 runs per over. The very bright sunny afternoon, we can see that in this blue sky, the very bright sunny morning. The bowler brought into attack from the air trading company. It's 25 for 3. Far outside the line of off stump and 26 for 3. Achu. Balls down the leg side. Wicketkeeper behind the stump. Missed it completely by call by umpire. With that extra scope and moves on to 27 for 3 in the over number 6 is in progress. Oh, beautiful ball. Again, incoming delivery. Chance for run out. But leg by call by umpire. With that single scope and moves on to 28 for 3. Achu. To Tanvir. Switch it is comes into play. And probably the single there for Tanvir, not more than that. Very hard to combine the runs here for Rnfc Kudroli against the discipline bowling from STC Jaipur. STC Jaipur quite hardly managed to get the victory against Red Wings Kunjat Pail in the morning. Again, Muzamil wanted to go for the powerful reverse sweep. He got a bat onto that in the last moment. Just a single. With that single scoop and moves on to 30 for 3. 30 for 3 in the over number 6 is in progress. Appeal for leg before wicket. Shahil is very confident behind the stump, but not the bowler. You can see the confidence of the bowler is not good enough, but the wicketkeeper is very confident. Umpire is also confident enough that call that is not out. 31 for 3 last time in this over. Achu was a very tight line and length. Oh, this time he lofted and he got the distance. Yes, he does. Magnificent struck. Munna, remember the name, the Muzamil. Absolutely dispatched that one. Very straight as an arrow. Transferring his weight onto the back foot, and Rnfc dug out. The first time you are seeing that they're very noisy. They are really cheering that stroke. What a magnificent stroke. And even the captain tried to stop that one, but he fails to do that so. It's 37 for 3. The blue sky, we can see that, and of course
very very bright sunny afternoon. Of course, I'm just wondering about how the man is and the operation here from the looks like the bat Rnfc Kudroli. Now Tanu wanted to do something special in this last over after getting that treatment in the last ball of the previous over. Rnfc, oh, this one mix up chance of run out, and they're very lucky. They are very lucky there. They got a 1+1, a couple of runs. I'm just wondering, you can see that how this is not a drone camera. I'm just very surprised how the Irfan is handling that much of drone camera in the sky. It's not a drone camera, it's an eagle. And absolutely, it's the bird eye. And again, lovely shot. Muzamil absolutely looking so good. Very controlled, lofted extra cover drive. What innings is playing here for the team Rnfc Kudroli. The dugout of Rnfc, the children, we can see that they're absolutely cheering each and every run scored by Muzamil. It's 39 for 3. 41 for 3, correction. A couple of runs. They wanted to go for the switch it against the turn. Leg by call by umpire. 42 good runs on the board for the Rnfc Kudroli. Tanveer, we can see that his face looks like last light a bit of tired with this hot sun. Not so easy to handle this condition. Muzamil saying that yes, last 3 deliveries remaining. If you get another 5 to 8 runs here, we are close to the 50. And that will going to be a good score to depend in this condition. This time didn't connect that one properly. Just a single. With that single score, but moves on to 43 for 3. The Tanveer is out of tournament. That's why he couldn't manage to maintain his level of fitness. Is always a big challenge in this month. Again, wanted to go for the big one. Doesn't get hold of that properly. One more single added to total with the addition of that single score. But moves on to 44 for 3. The last couple of deliveries left in this over of Mohit. Muzamil out of strike. Tanu back on strike. Last couple of deliveries left in this over. It looks like Muzamil, he can't continue. He's saying that he's very much tired. Doesn't want to take any risk. It looks like he is saying that the dehydration, which is definitely going to make a lot of problem for the players. What a shot! That was a magnificent stroke there from Tanveer. And that ball is gone many a mile. No, it's a ball is landed inside the boundary line. The couple of runs which is completed. I think the ball hit something there. It's hits a wire. Electric wire. Otherwise the ball is definitely landed out of the boundary line. Absolutely big miss. And just I want to see that whether the what will not happen. It's not really missing the wire. No, nothing has happened. Ball is landed inside the boundary line. No contact with the wire. Surely. The last delivery, 46 for 4. Again, just played it down to mid-on region just for a single. Not more than that. And 47 they're going to finish. Rnfc Kudroli, they started very slowly, progressed very slowly, but they finished very well with the very quick runs in this last couple of overs. And now they are happy to watch this total score of 47. The big hander from Tanu, 12 unbeaten in 15. Always scored a 10 out of 10. And Muzamil scored a very quick fire, 12 runs out of 9. Excellent ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು.
So this is what the bowling performance you can see here. Shanawaz with the excellent 1 over, 4 runs and a wicket. Nishu 6 and 1 wicket. Santosh Japu 2 overs 10 outstanding 1 wicket. And Mohit 9 runs and Achu in a 2 overs 13 runs. And 48 needed from 42 balls right now for the team Sridevi Cricketers Jaipur to qualify for the semi-final. So wait and see how well they will going to get this total. And this is what the beautiful view of this cricket ground in the drone camera. We are just talking about the previously it was a eagle, but this is not a eagle. This is exactly the drone camera, the bird eye catching this beautiful cricket ground. The good news here is that of course in the month of May, end of May, we are going to have a connection to Sultan Batteri to Tanir Bawi, and we have already the bridge is under construction is progress, and definitely we're going to have save many times here because that will going to connect even Bengre, and the good news for the Bengre that will going to connect Sultan Batteri to Bengre to Tanir Bawi. Usually we are taking a lot of time by water transport, but if the bridge which is going to complete, and we're going to make a lot of saving the times. So coming back to this match, and Sridevi Cricketers now will going to come to bat here with the target of 48 to win this match. And for this wonderful match, I request Mr. Gopi to take over the microphone. Thank you. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಡಿಪಳ್ಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಳೆಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಡಿಪಳ್ಳ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ सिग्नेचर प्रोसीजर इन द ऑफिशियल चार्ट. धन्यवाद सतीश. तो जहाँ तक सवाल इस वक्त फैंटास्टिक कमबैक मेड बाय द बैट्समैन ऑफ Rnfc Kudroli. The last 3 overs, they managed to score 26 runs from the last 3 overs after being scoring 420, just 21 in the first 4. And the competitive target in front of SCC Jaipur first ball driven that one, लेकिन गेंद सीधे पहुंची इस वक्त after first bounce गेंदबाज के हाथों में. लक्ष्य इस वक्त 48 रनों का 48 the target in 7 overs, so they have to score for victory. Just under 7 runs per over the required run rate for them. और आचू इस वक्त पहली गेंद को खेल चुके, रन इस वक्त नहीं मिला है और अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त अचू तैयार, जबकि रियाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद तक पहुंचने में सफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आचू के बल्ले से लगता हुआ. देखिए ऑन साइड पर गेंद को किस तरीके से डिस्पैच किया था, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और आखिरकार गेंद आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है. 4 रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर. सिर्फ 2 गेंदें इस वक्त फेंके जा चुके हैं और गेंदबाज इस वक्त तैयार. रियाज अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार आचू के लिए इस बार क्या गेंद को लपक लिया गया है. अपील इस वक्त जारी है लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं. सर्टेनली देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन द बैट एंड द बॉल. द लास्ट मोमेंट सही निर्णय अंपायर द्वारा. और देखिए असल में यहाँ पर क्या हुआ था, और दूसरे प्रयत्न में गेंद को लपका गया था जरूर, लेकिन इस वक्त कोई क्षति नहीं बल्लेबाज के लिए. स्कोर रुक चुका है 4 रनों पर. तो 3 गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं गेंदबाज रियाज और अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार आचू के लिए.
इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से कुछ ज़्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और सीधे पहुंचे इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 4 गेंदें 4 रन बन चुके हैं और एक चौका इस वक्त लगा चुके हैं आचू और अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद उछाला, 4 more. In fact, this is an absolutely second boundary in this over. This time he that one 2 squarer and finds a gap as well. Mid wicket और स्क्वायर लेग के बीच से गेंद को उछाला इस वक्त और कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं। डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान और यहाँ पर देखिए किस तरीके का स्ट्रोक था और 4 रन इस वक्त प्राप्त करते हुए बल्लेबाज। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर, 8 ऑन द बोर्ड। कपल ऑफ बाउंड्रीज इन दिस ओवर फॉर आचू और निश्चित रूप से पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इस वक्त आचू 2 चौका इस वक्त इस ओवर में झड़ चुके हैं। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार और रियाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर। स्ट्रेट अवे द बॉलर इज नाउ अंडर प्रेशर। बॉल 2 फॉर सादी ऑफ स्टंप वाइड गेंद थी इस वक्त और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार रियाज। यह गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, मच स्ट्रेट लाइन। 9 runs came from the first over. Pretty good start for STC Jaipur chasing the competitive target of 48 in 7 overs. They are 9 without loss after completion of the first over. Now, straight away coming back to the equation, 39, 48 minus 9, 39 more runs now they have to score for victory in remaining 36 deliveries with a required run rate of exactly 6.5 runs per over. 36 गेंदें बाकी, 39 रन चाहिए, 6.50 रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त। और जहाँ तक मैच के विजय का सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 इन दिस सिचुएशन। 26 रन अंतिम 3 ओवर में आरएनएफसी कुदरोली के बल्लेबाजों ने बनाए। पहले 4 ओवर में सिर्फ 21 रन बनाने के बाद और उसकी वजह से यहाँ पर वो एक स्पर्धात्मक का लक्ष्य प्रदान कर चुके हैं एसटीसी जयपुर को। और गेंदबाज केविन पी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। बाएं हाथ के बल्लेबाज हुसैन जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का शुरू होता हुआ। पहले गेंद ड्राइव किया इस वक्त हुसैन ने लेकिन नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपर्ली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। फॉलो थ्रू में अपनी दाईं ओर जाने के बाद गेंद को फील्ड कर लिया इस वक्त गेंदबाज ने और रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 9 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। गुड वन मच स्ट्रेट लाइन द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड। गेंद को उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है इस वक्त 9 रन बिना किसी नुकसान के। इट्स 9 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। स्टिल द इक्वल बैटल इज नाउ ऑन और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज केविन गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना इस वक्त चूका और बल्लेबाज 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। काफी जोखिम भरा रन था और यहाँ पर रन यशस्वीतम पूर्ण करने में सफल और आखिरकार इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 2 अंकों पर। 10 रन बिना किसी नुकसान के। इट्स 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। आचू इस वक्त बैक ऑन स्ट्राइक और पावर प्ले का किस तरह इस ओवर में फायदा उठाते हुए आचू देखना पड़ेगा। केविन 3 गेंदें इस वक्त इस ओवर में बेहतर फेंक चुके अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर। 11 ऑन द बोर्ड, 2 ओवर्स कंप्लीटेड। और जहाँ तक सवाल है तीसरे ओवर का तो देखते हैं इस वक्त तीसरे ओवर अपने दूसरे ओवर में वो विश्वास को वो किस तरह बरकरार रख पाते हैं। तो ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज रियाज तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त फील्डिंग में जमावट चलते हुए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। यह गेंद उछाला इस वक्त लंगोन पर फील्डर के हाथों में। जी हाँ या नहीं देखना पड़ेगा, जी नहीं। प्रयत्न निष्फल होता हुआ और शायद फ्लेक्स के ऊपर वो गिरते हुए। तो इस वक्त जहां तक सवाल है कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए मैदान पर इस वक्त बैठे हुए हैं दूसरे खिलाड़ी। उनका उपचार यहां पर करते हुए शायद कुछ हद तक चोट आई है। लपकते समय अंतिम क्षण में अपना संतुलन खो बैठे और कोई चीज़ वहां पर थी जिस पर वो गिर पड़े और आखिरकार इस वक्त मैदान से वो बाहर जाते हुए। लेकिन छक्का इस वक्त जुड़ चुका है उनके खाते में और बेहतर स्ट्रोक लगता हुआ हुसैन के बल्ले से। रखना इस वक्त काफी जरूरी बन चुका है और गेंद को लपकने का प्रयत्न तो अंपायर इस वक्त अंपायर से कुछ हद तक आसान हो।
तो अंपायर इस वक्त अंपायर से कुछ हद तक आसान होता हुआ एसटीसी जप्पू के लिए बेहतरीन स्ट्रोक कहना पड़ेगा हुसैन रन पर तो शायद बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका इस वक्त। रन पर तो शायद बल्लेबाज की पारी समाप्त हो सकती थी, लेकिन निशाना चूका इस वक्त, कोई बैकअप पर नहीं था ठीक से। और बल्ले रन आपके सामने मॉनिटर पर दिखाई देता हुआ नदी के रन आपके सामने मॉनिटर पर दिखाई देता हुआ नदी के पास ये मैदान स्थित है, पास ये मैदान स्थित है। टीपू सुल्तान आचू सामना करते हुए इस वक्त ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को उछालने के प्रयास में चूके मत स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द बॉलर रियाज और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। आरएनएफसी कुदरोली जो कि मेजबान होस्ट टीम है इस श्रृंखला की, इस वक्त मुकाबला करते हुए एसटीसी जप्पू के साथ और रियाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, लेकिन कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और गेंद को छोड़ दिया। थोड़ा सा मिसजजमेंट इस वक्त बल्लेबाज द्वारा और रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 19 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, रियाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है। यह गेंद उछाला इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज 2 रन प्राप्त कर चुके थे। स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था, 2 रन प्राप्त करने में सफल और इन 2 रनों के साथ 21 द स्कोर, 3 overs completed and now 6 runs came from this over and after 10 runs in fact came from this over and after 3 overs Rnfc recovered a little bit after being a slower start, 21 without loss after completion of 3 overs, 27 to get in remaining 24 deliveries, that means in 4 overs और मैच का जहाँ तक सवाल है अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा इट्स गोइंग टू बी 50-50 इन दिस सिचुएशन। और काफ़ी लंबी बातचीत चलती हुई आरएनएफसी कुदरोली के खिलाड़ियों के सामने कि अगला ओवर किसको दिया जाए, बातचीत इस वक्त जारी है और आखिरकार देखते हैं गेंदबाजी का जिम्मा किसके कंधों में इस वक्त सौंपा जाता है। डी आकार का ये मैदान और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला का गवाह यहां पर बनता हुआ आरएनएफसी क्रिकेट फेस्ट 2026 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रहमत नगर फ्रेंड सर्कल ने। और निश्चित रूप से मैदान के चारों ओर इस वक्त गण्य अतिथियों के फ्लैक्स इस वक्त गाड़े गए हैं इस मैदान की शोभा को और बढ़ाते हुए। नदी तट पर यह मैदान जो कि स्थित और काफ़ी तेज़ हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए मैदान के ऊपर कुछ चील पंछी इस वक्त लहराते हुए अपने खुराक की तलाश में और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा एक सुंदर सा नज़ारा हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर, 22 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। नाउ 26 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 24 डिलीवरीज और गेंदबाज चरण इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए this time driven that one down to long on but there is a fielder out there, just a single he got। और जहाँ तक सवाल है रनों का तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर, 23 विदाउट लॉस, 25 टू गेट फ्रॉम 23 डिलीवरीज और अभी भी मैच बराबरी पर रुक चुका है। अच्छू और हुसैन ने साझेदारी पार्टनरशिप आरंभिक पार्टनरशिप निभाने की पूरी कोशिश में इस वक्त। और ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, गेंद को उछाला इस वक्त हाफ स्टॉप करते हुए स्क्वायर लेग फील्डर और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आकर गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज, तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 3 रन यहां पर पूर्ण करने में सफल। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट इस वक्त, गेंद को दमदार तरीके से इस वक्त ऑन साइड पर पुल किया था, हाफ स्टॉप गेंद स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों को चीर कर निकल गई इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता डीप मिड विकेट से लंबा दौड़ लगाने के बाद फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 3 रन प्राप्त करने का। 3 runs added to the total, 26 without loss. Fantastic strong came from the bat of Achu is batting on 15 of just 12 deliveries और हुसैन बल्लेबाजी करते हुए 9 रनों पर 8 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है। हुसैन बैटिंग ऑन 9 of 8 डिलीवरीज। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर
एंड वाइड डिक्लेरेड बाय अंपायर। अब दबाव कुछ हद तक जरूर गेंदबाज चरण महसूस करते हुए, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रन पर 27 ऑन द बोर्ड, येट टू लूज एनी विकेट। नाउ इक्वेशन स्टैंड्स 22 बॉल्स लेफ्ट, 21 रन्स रिक्वायर्ड। समीकरण कुछ हद तक आसान बनता हुआ एसटीसी जयपुर के लिए। इस बार ऑन साइड पर 100 स्ट्रोक एंड दिस टाइम आई थिंक ही ड्रॉप दैट वन। कैच इस वक्त छूट चुका है डीप मिड विकेट पर। हालांकि काफी लंबा दौड़ उन्होंने लगाया था, लेकिन गेंद तक पहुंच भी गए थे, लेकिन गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल। मौके को कन्वर्ट करना जरूरी होता है, और यहां पर ऐसा कहना पड़ेगा इस मौके को गवाते हैं फील्डर डीप मिड विकेट के, और बल्लेबाज के पास इस बीच मौका सिर्फ एक रन प्राप्त करने का। 28 without loss in the over number 4 in progress. Exactly 20 runs required from the 21 remaining deliveries. Still I must say it could be anybody's game in this situation. चरण गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद ऑन साइड पर विकेट को मोड़ा खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। एक रन बल्लेबाज को मिलेगा, दूसरा रन भी मिलेगा, और जब तक गेंद को फील्डर फील करके अब थ्रो करते हुए, और बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। ऑन साइड पर गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ डीप स्क्वायर लेग पर 2 रनों के लिए बल्लेबाज ने, आचू ने, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर। 30 विदाउट लॉस। फैंटास्टिक ओपनिंग पार्टनरशिप इज नाउ बिल्डिंग अप हियर फॉर एसटीसी जयपुर। जस्ट 18 टू गेट फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 20 डिलीवरीज। और इस बीच गेंदबाज अगेन द lofted, this time I think it could be taken, no it won't, it's gone over the fence, it's a biggie. This is an outstanding strike. He just played that one with the wind and got that one for a maximum. Outstandingly played. And have a look at this in the replay. Just stand and delivered. And he just got that one right from the middle of the bat at the last moment. अच्छू के बल्ले से छक्का लग चुका है, और गेंद सीधे फील्डर के सिर के ऊपर से इस वक्त गुजरते हुए लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ द इक्वेशन सीम्स टू बी मच ईजियर फॉर द बैटिंग साइड एसटीसी जयपुर। नाउ 12 to get from 19 deliveries. और अगली गेंद लेकर तैयार। Again the same treatment. This time even bigger. 6 number 2. And Achu is now looking on fire. He just wanted to finish the match as soon as possible in this situation. Consecutive 6s came from the bat of Achu. Have a look at the second one. This time even bigger than the first one. And straight away the scoreboard is now raising up to 42 without loss. Now equation seems to be a much easier for STC Jaipur. Just 6 to get from 12 deliveries, 18 deliveries in fact. 3 ओवर का खेल बाकी, सिर्फ 6 रन चाहिए। अब ऐसा कहना पड़ेगा RNFC कुदरली को कुछ चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में वापस ला सकती है, और उस चमत्कारी गेंदबाजी की तलाश में इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए मुजम्मिल। निश्चित रूप से अच्छू इस वक्त 29 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। अच्छू is batting on 29 in just 15 deliveries. Well, support came from Hussain, who is batting on 10 of 9 deliveries. And a fantastic opening, unbeaten 42 runs stand is now progressing here for STC Jaipur. Just gone for a mighty good one from the bowler. Up goes the finger. At last the bowlers of Rnfc Kudroli got the breakthrough. Hussain departs. Just gone for a mighty, he have not succeeded. और यहाँ पर देखिए रिप्ले पर क्या हुआ था। क्रीज के कोने से गेंद थी, इस वक्त गेंद लगभग बल्लेबाज के बैक लेग पर टकराई, और अंपायर को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो 42 रनों की आरंभिक साझेदारी इस वक्त टूट चुकी है। 42 रन्स ओपनिंग पार्टनरशिप हैज बीन ब्रोकन। द फेस ऑफ Hussain is back to pavilion, and STC Jaipur now lose their first wicket. It's 42 for 1. विनीत नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज मुजम्मिल की गेंदों का। और मुजम्मिल दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए चिप कर दिया इस वक्त लंगों पर फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। गोल्डन डक डिसमिसल फॉर विनीत। इस बार ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वांटेड टू चेक द शॉट एट द लास्ट मोमेंट, प्लेड दैट वन हाफ माइंडेडली। और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को लगा, देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था। शायद गेंद को उछालना चाहते थे लॉन्ग ऑफ फील्डर के आगे, लेकिन इस वक्त प्राप्त करते हुए लॉन्ग ऑफ फील्डर को 2 consecutive wickets for Muzammil.
42 for 2. Now 66 to get from 16 deliveries. और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार. And now the batsman, informed batsman, is now comes out to the middle. Nishu. और हैट्रिक गेंद लेकर गेंदबाज मुजम्मिल तैयार. This time played that one. Good one. Extra bounce. और गेंद को संभल कर खेलते हुए निशु इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में गेंद को खेला. और एक रन दौड़कर बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं. 43 on the board for losing 2 wickets in the over number 5 in progress. और गेंदबाज इस वक्त तैयार मुजम्मिल. और लेग स्टंप से बाहर रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन मिलेगा. 22 का इशारा. 44. और जहां तक सवाल है इस वक्त बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है गेंदबाज मुजम्मिल का, जिसमें 2 विकेटें वो प्राप्त कर चुके. सिर्फ एकमात्र रन बल्ले के रूप में वो प्रदान करने में सफल इस ओवर में. सिर्फ 4 मात्र रन चाहिए और विजय के लिए. और गेंदबाज इस बार ऑफ द टोज गेंद को खेलना. 4 रन का खतरा. निशाना चूका और बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस. So 44 for the loss of 2 wicket in the over number 5 in progress. Still a ball left in this over. और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा. 1 run added to the total. In fact, they're looking for the second, and this time run out happened in the non-striker end. 3rd wicket down. It's 45 for 3. So at last a fantastic innings came to an end from Achu. He's backing to pavilion in the face of run out. 29 runs scored by Achu of just 16 deliveries. और प्लेयर्स डगआउट में उनका स्वागत इस वक्त करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी. एसटीसी जप्पू के प्लेयर्स डगआउट में. 45 रनों पर तीसरा विकेट खो चुका है. 5 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है. 5 overs completed. 45 for 3. 3 to get from 12 deliveries now. That means in remaining 2 overs. और इस बीच 2 ओवर का खेल बाकी. और देखते हैं इस ओवर में बचे हुए 2 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बचे हुए 3 रनों को बना पाते हैं. नहीं बनाना तो पड़ेगा ही इस वक्त जप्पू का. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त कमबैक करने के लिए आरएनएफसी कुंद्रोली के गेंदबाजों की इस वक्त एक चमत्कारी मैजिकल बॉलिंग की जरूरत है इन बचे हुए 2 ओवर में. सहल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए बैकफुट पर गए. कट करना चाहा चूंकि इस वक्त गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. वाइड का इशारा. वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 46 रनों पर. 40. I request the next match captains please report to the stage immediately for the toss procedure. Reliance Kadipalla and Green Lines Bengre. और 3 रन मात्र अब चाहिए. 2 रन कहना पड़ेगा. ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर पर. रनआउट का खतरा और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. तो एक और विकेट यहां पर गवाता हुआ एसटीसी जप्पू. लेकिन चिंता का कोई विषय नहीं है इस वक्त. जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है. नो नीड टू पैनिक एट ऑल इन दिस सिचुएशन. और यहां पर देखिए किस तरीके से गेंद को कवर पॉइंट पर खेला था. थ्रो पहुंचा. रनआउट होता हुआ एक विकेट और गिर चुका है उनकी पारी में. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. मोहित इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए. 11 गेंदें बाकी इस वक्त. सिर्फ 2 मात्र रन चाहिए विजय के लिए. जस्ट 2 to get for victory in remaining 11 balls. और इस बीच गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए तैयार. जस्ट कॉन पर बिग वन मिसेस. विकेट कीपर ने विकेट उखाड़े इस वक्त. लेकिन इस वक्त देखना है कि तब तक बल्लेबाज अपना बल्ला यानी बैट क्रीज पर वापस रख चुके हैं या नहीं. तो इस वक्त निशु थोड़े से झिझके थे और यहाँ पर काफी नजदीकी मामला हो सकता है इस वक्त. जिस तरीके से विकेट इस वक्त उखाड़े गए थे जब तब बल्लेबाज क्रीज पर अपना बल्ला लैंड कर चुके थे या नहीं देखना पड़ेगा यहाँ पर. हालांकि थोड़े से देरी से बल्ला इस वक्त उन्होंने लैंड किया था. Out is the call from the third umpire. Nishu has to go. And one more wicket fallen. At one stage they were 42 without loss. And now they are 46 for 5. 5 विकेट 4 रनों के अंतराल में खो चुका है. In between 42 to 46 they lost their 5 wickets in the space of just 4 runs.
dramatical collapse happened in the innings of STC Jaipur, but no need to panic at all in this situation. सिर्फ 2 मात्र रन अब चाहिए विजय के लिए, 10 गेंदें बाकी. शाहनवाज, the new batsman is now comes out to the middle. पिछले मैच में शाहनवाज ने मैन ऑफ द मैच का खिताब अर्जित किया था और यहाँ पर सपना करने के लिए तैयार. 10 गेंदें 2 रन चाहिए. 2 runs to get from 10 balls. Reverse shot down to a short third man for a single और एक रन के साथ. The scores are now leveled. Just 1 run required from 9 deliveries. और स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त मोहित अपनी पहली गेंद का सामना करने के लिए तैयार. और सहल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट खेला इस वक्त. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट. लगभग सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त लगाई गई है सिंगल्स रोकने के प्रयत्न में. सिर्फ एक मात्र रन चाहिए. गेंदें बाकी हैं 8 और गेंदबाज इस वक्त तैयार सहल मोहित के लिए. ड्राइव कर दिया गेंदबाज के सिर के ऊपर से 1 रन और इसी के साथ एसटीसी जयपुर रजिस्टर्ड अ विक्ट्री बाय 5 विकेट्स with 7 balls to spare against the host team RNFC Kudroli, and with that 5 wickets victory, STC Jaipur are through to the next round of this competition. So this is the match ended between STC Jaipur and RNFC Kudroli. और यहाँ पर देखिए मैच समरी. RNFC Kudroli scored 47 for 4 in the stipulated 7 overs. In reply, STC Jaipur scored 48 for 5 in 5.5 overs thanks to the brilliant knock-off Achu, who scored 29 of just 16 deliveries. और RNFC कुद्रोली के बारे में तन्नू ने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई. 12 रन बनाए 15 गेंदों पर, जबकि मुजम्मिल ने 12 रन बनाए 9 गेंदों पर. आवेज ने बनाए 10 रन 10 गेंदों पर, जबकि हुसैन ने एसटीसी जयपुर के लिए बनाए 10 गेंदें और 10 रन. और आखिरकार एसटीसी जयपुर 5 विकेटों से यहाँ पर विजय रहा. तो मैच नंबर 6 आज का इस पहले दिन का प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत Rnfc ट्रॉफी 2026 के अंदर undoubtedly the man who batted fantastically scored 29 runs in just 15 deliveries, and because of that magnificent knock, Achu of STC Jaipur adjudged the man of the match. I request Achu of STC Jaipur, please come to the stage. So that's it for the match number 5. Match number 6 is now coming up live exclusively right in front of you between Reliance Kadipalla versus Green Line Bengaluru. तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे जब मैच नंबर 6 यहाँ पर शुरू होगा रिलायंस काडीपल्ला और ग्रीन लाइन बेंगलुरु के बीच. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद.
So welcome back once again for this prestigious Rnfc Trophy 2026. The cricket past in this beautiful Tipu Sultan Cricket Ground here in Kudroli. All set now for the big match here. Sridevi Cricketers Japwe versus Reliance Cricketers team Bengre. Green Lions Bengre versus Reliance Cricketers Katipalla. And after Sridevi Cricketers jump through to the semi-final, the winner of this match will going to get the place in the semi-final. And this is going to be a very good battle between these two. Winning the toss, selected to ball first. Here comes first ball. Catch it is a goal. Oh my goodness. Second attempt, he complete the catch. It definitely going to be a huge wicket here for the team. Reliance Katipalla, the danger man, Imran departs in the first ball of the over. Golden duck. Just have a look at the stroke. Played it in a flatter version. The intention of Imran to get past that infield. But he really not able to get past the fielder. And Imran quickly realized that he played a wrong stroke. Not observing the fielder at mid-off. Which is in almost in a straight version. Good field placement from the captain of Reliance Katipalla. Getting that fielder at mid-off just a little bit straighten. And Green Lions Bangre off to a shackling start here. They lost their major wicket. The man in good form at the lot of runs in the season is back in the hut. The jersey number 333 replaced by another 333. And it's not a 333, it's a 29. I thought Zunaid, but it's not Zunaid. The jersey number 333. It's a 29. Imtiaz, the man, will going to face. Next delivery, beautifully bowled there by Rahul in the negation. Absolutely is bowling with some excellent line and length. Rahul galvanizing his level of confidence with the wicket of Imran. It's 2 for 1. 1 for 1 correction. That brings Nihal into strike. Now have to take the responsibility. This time across the line, played nice into mid-wicket region. And this time they slight a bit of hesitation for the second run. But going against the throwing arm of the fielder Shreyas, the young man. Shreyas, 2 for 1. Imtiaz wanted to go for the expansive drive, doesn't get hold of, then properly chance of run out. Zunaid tried to get that ball by charging into that one, but missed it completely. It's 3 for 1. And the over number, the first is in progress. Green Lions Bangre takes on the team Reliance Katipalla. It's absolutely the battle is on here from two teams. They're out of the track in the last few tournaments. Balled him, cleaned him up. What excellent delivery there from Rahul. He's looking on fire in this evening. Absolutely disturbing the furniture. We can hear the sweet sound of the timber. Oh, that was absolutely ball after hitting leg of the batter. And then ball hit the stumps. 3 for 2. Green Lions Bangre off to a very, very bad start. The two major wickets are back in the pavilion. It's 3 for 2. And after a long wait, cameraman is at last the man is to get camera into commentary box. Thank you very much. Imtiaz, but not in a front version, but is behind that. But still, it's okay. In my left, Swastik as a scorer for sports and games. But even in the social work, they're absolutely leading from the front. Whether it's going to be a blood camp, whether it's going to be a helping needs for blood camp, whether it's going to be a helping needs for the marriages. Fielder, excellent
Excellent catch. Oh my goodness. Just in. Excellent catch. Oh my goodness. Just in. Yes, sir. Coming back to this match, this could be the last match of the day. Please note, this could be the last match of the day. Winner of this match will go into play semi-final. The organizer will go into decide the date. They will Zabir to the new batter. Oh, this time again Mustafa wants a single. It's asking for try. Mustafa walks towards the middle with a lot of responsibility in his shoulder. Adil, experienced man, the cool captain, cool for Green Bengre, successful captain. In exactly now, it's a time for the consolidation. Along with Safwan, you have to rebuild the innings. This is a 7 overs game. Still, they have got 5 overs after this. If you play sensibly, can get some good runs. It's 5 for 4. Excellent over is in progress. One more wicket back in the pavilion. Captain departs for duck. It's 5-5. My goodness, what really happening here in this quarter final? Green Bengre's wickets are absolutely dismantling. What a delivery. Absolutely a peach of the delivery. Unplayable and absolutely a Jaffa. Adil, the captain, has no clue whatsoever. With that terrific curve there from the bowler. Zabir strikes in this over with the 3 wickets. Unbelievable bowling figure for him. 1 over, 1 run, 3 wickets. This is really something special in this quarter final. Lost 5 for 5. Green Bengre. The 2 wickets and that 1 run out of 3 from Zabir in that over. He picked up 2 wickets for just a 1 run. What a great piece of bowling there from Zabir for Reliance Kartipalla. Now Shreyas is brought into attack in the right time. It's a good move there by the captain of the side after getting the 2 very good power play overs. Getting Shreyas to come and bowl to get some wickets here for the team when the team is under pressure. Off the back foot, played it in the gap. Anish, the fielder, have to do the quick work but not quick enough to stop the single from Safwan. Now Sazim, the young man, have to deliver the innings of his life for his team to survive. Oh, this time quite hardly managed to get the single, not quite intended. Almost catched with that beautiful cutter delivery there from Shreyas. As he got a lot of varieties in his bowling. Junior Ashwin with the nickname. Again, played it straight. Running shots of run out. Oh my goodness. Can you believe this? Sazim, absolutely absence of mind. Absence of mind. You just see that the ball is in the hands of fielder. You're going for the run. Maybe I think Safwan would start, but I am not saying it's a start. It's the initial movement of the batter. When he got the strikes, always the batter coming 2 steps. It's not that you are going for the run. And the fielder and the non-striker have to watch the fielder. Is not the fielder is in the mid-on, is the back of you. The fielder is just in right of you. You should see the fielder. If your partner is calling for the run, you should tell that it's not run. And at least say no, no, no. This is absolutely something. It's not acceptable in this the big tournaments. And you are representing the team like a Green Bengre. 7 for 6. Green Lions Bengre are looking in trouble. Oh, Switchitis comes into play. Safwan
connected that one very well. They're looking for second. In fact, he's not started jumping. He's a very good runner, but condition absolutely asking him to make a slight bit of jerk for the second run. But he's not sure that Shafan will going to come for the second. But once he realizing Shafan starts the run, he reacted very late for the second, but no damage done. Good cricket there from Shafan. This is what the quality of the good players. Again, I will look at that one. Absolutely fantastic Shafan. The couple of runs twice in this over. Shafan under pressure situation is playing. Not a first time, but even I'm watching him in the last few tournaments. Because the caliber, the potential which is tested of the particular batsman, not in the time of comfort zone. It's a time of when a team is struggling. When you perform, then only you can be the good batter, the good cricketer. Again played it straight to the hands of fielder. Shreyas bowls a dot delivery for the last delivery of this over. 6 from this over, 3 gone. It's 11 for 6. Green lines Bengre. It's 11 for 6. Reliance Kartipalla getting that 3 players. Absolutely the worthy 3 players. Rahul, Shreyas, Anish. And the 3 very good bowlers. One of the fast bowler, 2 spin bowler from HFC Oige Bazaar. Anish, one more experienced man, brought into attack. Nice looking drive there from Jami. The perfect example for the top order batsman how to play the cutter deliveries. The sharp incoming delivery, but he negotiated very well. Jami not only a good bowler, but he can bat as well in the middle order very effectively. 12 for 6. Anish definitely going to enjoy this condition with the natural pitch. Right arm over. Just like I mentioned, he will going to enjoy, but this time he got an extra deviation. Couldn't manage to control the off cutter, the turn and the turn in the ball. Going down the leg side too much and wide call by umpire rightly. So 13 for 6. And the over number 4 is in progress. They wanted to go for the reverse sweep. Nicely played it down to deep third man region. There's going to be a boundary there. Looks like there will be some declared area and ball went into the boundary. No, it's a couple of runs. Because the first, I think, the ball hits the roof. And that was a declared area of a couple of runs. Then ball went into the boundary, but no problem. But first what happened, which is hit the roof, that is a declared area. So maybe that was a couple of runs. But as for the rules and regulation of this particular cricket ground is concerned, only a 2. Yes, it is. It's 15 for 6. What Innings is playing. Shafan is absolutely holding his now. When the wickets are tumbling in front of him, he's standing tall in other end. And 15 for 6. 15ಕ್ಕೆ 6. There was some areas we can see that only they got to get the boundary in that area. Oh, lovely shot. Played it down to long off. Will they come back for the second? Oh, Jami! You are a beauty. Even Shafan is not interested, but Jami is saying that to go for the run. I am the one running towards the dangerous end. Not for you. Absolutely fantastic running. Even the ball is in the hands of the fielder. They're going for the 2. This shows how the desperation here for the team Bengre, Green Lions Bengre, to get some good total here. Shafan absolutely playing a good innings. The man is absolutely in a dugout. Imtiaz absolutely cheering these batters.
not to lose the game, not to lose the hope. Of course, we lost 6 wickets, but still they have plenty of deliveries to spare to get back into this game. Again, quicker one there for Manish, beaten by the turn and the line of the delivery. Safwan tried to work the ball on the onside region. They missed it completely. No run scored. 17 for 6 in the over. Number 4 is in progress. Anish bows. Again, quite dangerously played across the line against the turn. Safwan has got a bat onto that in the last moment. Picks up a single. 18 for 6. Slowly this partnership is building up here. They lost 5 wickets for 5 runs, 6 runs. Oh, loose delivery, full toss. Batsman premeditated switch it from Jammi is attempted. He's got a bat onto that, but not enough bat, just a single. Anish finished his first over and 8 runs, first expensive over in the Green Line Spengre innings. And after completion of over number 4, it's 19 for 6. Still searching for the right track, Green Line Spengre. 3 overs remaining, and wait and see how well Green Line Spengre will going to come out from the trouble. But so far, I think both the batters are batted very well. They're playing as per the condition required. Before next over going to start, it's time to change in voice. Gopi, it's been a fantastic quarterfinal is in progress. And what outstanding bowling performance from Reliance Katipalla, especially from Rahul and the bowler who's bowled the second over, Zabir, and even Shreyas is bowled brilliantly. But still, Gopi, Green Line Spengre has got opportunity to come back, because 3 overs means 18 balls remaining. And out of 18, if they manage to get at least 25 in these 3 overs, it could be a good game in front of us, because 45 plus runs going to be a very good total in the evening in this particular cricket ground. सही बात है सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त 18 रन बन चुके हैं, 7 रनों के साझेदारी बन चुके हैं और बचे 18 गेंदों में, जैसा कि आपने फरमाया सतीश, 25 रन अगर कम से कम 25 रन भी जोड़ लेता है इस वक्त ग्रीन लाइन बेंगले, तो निश्चित रूप से एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकता है। और 40 प्लस ऐसा कहना पड़ेगा इन अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव, अगर ग्रीन लाइन बेंगले के गेंदबाज सही तरीके से गेंदबाजी करेंगे, जब रिलायंस के बल्लेबाज बल्लेबाजी पर उतरेंगे। तो देखते हैं तीनों बॉल्ड जस्ट गॉन फॉर ड्राइव, नॉट सक्सीडेड, लेग स्टंप अपरूटेड। हमने जिक्र किया था साझेदारी यानी पार्टनरशिप की यहाँ पर, और यहाँ पर साझेदारी जो कि टूट चुकी है। Absolutely fantastic delivery bowled by the bowler. Have a look at this in the replay. This is an outstanding one. Passed between his legs and stuck to his leg stump. Leg stump uprooted, and this is the wicket number 7. What a fantastic start for Shreyas in the bowling department. In his second over, he's got the wicket of Jammi is now backing to pavilion. In a fantastic run from Shreyas, and the 7th wicket loss for Green Lions Bengal. They are looking deep in trouble now. 19 for 7. Jammi departs. और 17 गेंदें बाकी, और जहाँ तक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, जैसा कि मैंने और सतीश ने फरमाया था, कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा ग्रीन लाइन बेंगले के बल्लेबाजों को, क्योंकि रिलायंस काटीपल्ला के पास न सिर्फ बेहतरीन गेंदबाजी का लाइनअप है, बल्कि सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप भी है, और उन पर अगर दबाव डालना है तो कम से कम 40 का आंकड़ा यहाँ पर पार करना होगा ग्रीन लाइन बेंगले के बल्लेबाजों को। 3 विकेटें बाकी, 17 गेंदें बाकी, और देखते हैं यहाँ पर इन बचे हुए 2.5 ओवर में, यानी 17 गेंदों में बचे हुए 3 विकेटों की मदद से और कितने रन ग्रीन लाइन बेंगले जोड़ पाते हैं। श्रेयस lofted, this time I think it's going to clear the fence, and no, in fact it taken inside the fence by the fielder at deep mid wicket. One more wicket fall on long distance. काफी लंबा जो अंतर है, काफी लंबा डिस्टेंस है मैदान का, उस डिस्टेंस पर गेंद को उछाला था, गेंद को क्लियर करना चाहा, लेकिन ये जो एरिया है डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान, वो काफी लंबा अंतर कहलाता है मैदान का, सीमा रेखा और स्ट्राइकर एंड के बीच, पिच के बीच, और यहाँ पर गेंद को उछालना चाहता, चूंकि डीप मिड विकेट पर कैच को लपक लिया, फील्डर ने 8वां विकेट गिर चुका है। इट्स 19 for 8 consecutive wickets for Shreyas, and he is now on hat-trick. 8 विकेट गिर चुके हैं, और पहली गेंद पर यहाँ पर जुनैद का विकेट यहाँ पर गिर चुका है, और दूसरा विकेट श्रेयस इस वक्त प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम 4 गेंदें इस ओवर में बाकी, कुल मिलाकर 10 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी। नंबर 10 बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। नंबर 10 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर पहुंचते हुए, और देखना है कि वो
श्रेयस के हैट्रिक को रोक पाते हैं या नहीं। फिलहाल फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी इस वक्त अब तक रिलायंस काटीपल्ला के गेंदबाजों ने की है। राहुल, जुबैर, श्रेयस, अनीस ने बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए ग्रीन लाइन बेंगले के बल्लेबाजों को बांध कर रखने में 100% अब तक वो यश प्राप्त कर चुके हैं। हैट्रिक गेंद लेकर श्रेयस तैयार, ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन पर। मिसफील्ड यहाँ पर अगर गेंद को ठीक तरह से फील्ड कर लेते स्ट्राइक रेंज पर रनआउट का खतरा हो सकता था, लेकिन खतरा टल चुका है और एक रन बल्लेबाज यहाँ पर पूर्ण कर चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज श्रेयस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त गली पर, रन के लिए दौड़ पड़े, ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर प्राप्त करने में सफल हो चुके हैं। फिर से ओवर थ्रो, रन नंबर 3 यहां पर जुड़ता हुआ। दोनों मौकों में बैकअप सही तरीके से नहीं था और जहां पर सिर्फ 1 रन मिलना चाहिए था वहां पर 3 रन मिले और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 23 रनों पर। रन से चाहिए इस वक्त ग्रीन लाइन बेंगले के बल्लेबाजों को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पर 3 रन प्रदान करते हुए 2 रन ओवर थ्रो के रूप में। और जहाँ तक का सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। शहराज और सफान जो कि क्रीज पर मौजूद और श्रेयस अपने ओवर के 5वीं गेंद लेकर तैयार। 14 गेंदें बाकी अब उनकी पारी में और इस बीच गेंदबाज श्रेयस शहराज के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए क्रीज पर मौजूद सफान और शहराज इस वक्त जान चुके हैं इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी अपनानी है और शहराज ये जानते हैं कि इस वक्त जितना ज़्यादा स्ट्राइक का वेल सेट बल्लेबाज सफान को मिलेगा उतना उनके टीम के लिए बेहतर होगा, क्योंकि सफान 15 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 12 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, अपने पैर के जरिए गेंद को रोका इस वक्त विकेट कीपर ने। और ओवर की समाप्ति, डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 5 गॉन and after 5 overs the problems are continuing here for the batsmen of Green Lions Bengal. It's 24 for the loss of 8 wickets. 2 overs left, 2 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं बचे हुए 2 ओवर में ग्रीन लाइन्स बेंगले के बल्लेबाज अपने बचे हुए 2 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। निस्संदेह प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट RNFC क्रिकेट फेस्ट RNFC ट्रॉफी 2026 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है रहमत नगर फ्रेंड सर्कल ने इस सुंदर से विशाल से टिप्पू सुल्तान क्रिकेट मैदान पर। और ये श्रृंखला, ये टूर्नामेंट एक बेहतरीन शानदार प्रगति करते हुए कई ऑफिशियल स्पॉन्सर्स के कृपा कटाक्ष से ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहाँ पर करते हुए। और इस बीच गेंदबाज राहुल जिन्होंने अपना पहला ओवर काफ़ी बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे, 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना राउंड विकेट चिप कर दिया इस वक्त गेंद को हल्के से स्क्वायर की दिशा में 1 रन के लिए बल्लेबाज ने 24 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। शहराज ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं, सफान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 25 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 8 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर इन फैक्ट। और इस बीच सफान स्ट्राइक पर आ चुके हैं, अब सामना करने के लिए तैयार राहुल की गेंदों का। राहुल गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए यह गेंद चिप कर दिया इस वक्त, हल्के से गेंद को खेल दिया था इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में। गेंदबाज की बाईं ओर से मिड ऑफ पर जब तक जुनैद गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 26 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज अपनाते हुए स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस वक्त अगली गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, गेंद हवा में जरूर लेकिन कोई फील्डर वहां पर नहीं। 1 रन का इजाफा। 27 ऑन द बोर्ड, 27 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। अब कुल मिलाकर 3 गेंदें इस ओवर में बाकी, 9 गेंदें बाकी उनकी पारी में। राहुल दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, 1 रन का इजाफा, लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 28 रनों पर 8 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। 4 गेंदें 4 सिंगल्स इस वक्त बन चुके हैं और राहुल शहराज के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट फाइन लेग की दिशा में गेंद पहुंची, लेकिन एक बार फिर से 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा बाई के रूप में और बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है
29 रनों पर 29 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट. स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर. 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज राहुल फेंक चुके हैं. धीरे धीरे ये दोनों बल्लेबाज सफान और शहराज क्रीज पर जमते हुए, और इस बीच ये गेंद इस बार ड्राइव कर ऑफ द टॉस. सेंसिबल क्रिकेट. जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एंड ड्रिवन दैट वन परफेक्टली ऑफ द टॉस ऑन टू अ मिड विकेट फॉर अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 30 रनों पर. 6 रन केम फ्रॉम दिस ओवर फ्रॉम Rahul. 5 from the bat, 1 from leg by, and 6 overs completed. Still the batsmen of Green Lions Bank, they're searching for the right track. It's 30 for the loss of 8 wicket. Now just a last over remaining in overall calculation in their innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी, और देखते हैं इस अंतिम ओवर में बचे हुए 2 विकेटों की मदद से ग्रीन लाइंस बैंक रहे और कितने रन यहाँ पर बटोर पाता है. दैविक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइक एंड बल्लेबाज का, तो सफान जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. शाम का वक्त, लगभग वक्त के बारे में अगर कहा जाए तो 4:33 यहाँ पर बच चुके हैं. धूप का प्रकोप काफ़ी हद तक यहाँ पर कम ज़रूर हो चुका है, लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है. और एक प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला RNFC क्रिकेट फेस्ट 2026-2026 एक शानदार प्रगति करते हुए इस ढलते शाम में भी पहली गेंद इस वक्त हल्के से गेंद को मोड़ना चाहता. गेंद गई ऑफ साइड पर सिली पॉइंट क्षेत्र पर, जहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 1 रन का इजाफा. That single run the scoreboard moving up to 31 for the loss of 8 wickets at the start of the 7th over. एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट बेद्रा मीडिया द्वारा इस वक्त किया जा रहा है. जनाब इरफान बेद्रा इनके सारथी में, और इस बीच गेंदबाज दैविक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट शहराज के लिए. स्वीप करना चाहा टॉप एज, लेकिन फील्डर थोड़े से पीछे था ना. शॉर्ट थर्ड बैन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. शॉर्ट थर्ड बैन पर 1 रन का इजाफा. 32 for the loss of 8 wickets. Just 4 balls left in overall calculation in their innings. 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. सफान सामना करते हुए दैविक की गेंदों का. सफान is batting on 19 of just 17 deliveries facing Daivik. Driven that one, firmly struck but straight to fielder at mid-on. Junaid the fielder who took the catch. और जहां तक सवाल है, गेंद को उछाला जरूर था इस वक्त बल्लेबाज ने, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा जुनैद जो कि लंबे कद के खिलाड़ी है, अपने ऊपर की ओर उछलते हुए गेंद को उन्होंने यहाँ पर लपक लिया. देखिए किस तरीके से गेंद को उन्होंने लपका इस वक्त 20 गज के दायरे के बिल्कुल अंदर रहा. और ये कैच यहाँ पर बल्लेबाज सफान को पेविलियन का रास्ता दिखा चुका है. सो गुड इनिंग्स केम टू रन फ्रॉम सफान ऑफ 19 of 18 deliveries. And a 9th wicket fallen for Green Lions Bangalore. It's 32 for 9. रिलायंस काटीपल्ला के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उस निर्धार का संपूर्ण समर्थन करते हुए अब तक गेंदबाजी की है रिलायंस काटीपल्ला के गेंदबाजों ने. अब अंतिम विकेट, अंतिम जोड़ी क्रीज पर, और 3 गेंदें बाकी उनकी पारी में. दैविक अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में. 1 रन का इजाफा हो चुका है. दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. Scoreboard moving up to 33 now for losing 9 wickets in the over number 7th and the last in progress. Still in overall calculation, it's going to be 2 balls left in their innings. 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, और दैविक गेंदबाजी करेंगे इस वक्त शहराज के लिए. अंतिम बल्लेबाज ताजू जो कि ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं पिछले गेंद पर, और अंपायर ने इशारा किया कि देयर एक्सीड्स देयर टाइम लिमिट, तो खिलाड़ी को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा. और इस बीच दैविक का शहराज के लिए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा. 1 more run added to the total. It's off the bat, and with that single run the scoreboard moving up to 34 for the loss of 9 wicket. Last ball remaining. अंतिम गेंद लेकर दैविक इस वक्त तैयार. और ताजू नंबर 11 बल्लेबाज, नंबर 11 बैट्समैन is now going to face the last delivery of their innings. दैविक टू ताजू. लेग स्टंप से बाहर, रन आउट. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा नॉट स्ट्राइक रन पर भी यहाँ पर विकेट उखाड़ चुके हैं. वाइड का इशारा, आउट का इशारा, और इसी के साथ ग्रीन लाइन बेंगरे की पारी यहां पर सिमट चुकी है. लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकली थी. हालांकि देखने वाली बात यह है कि बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर आउट हुए थे या फिर नॉन स्ट्राइक रन पर, तो 1 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ चुका है और उनके पारी इस वक्त सिमट चुकी है. द इनिंग्स ऑफ ग्रीन लाइन बेंगरे बंडल्ड आउट फॉर जस्ट 35 रन्स इन द स्टिपुलेटेड अंडर द स्टिपुलेटेड 7 overs. That means in exactly 6.5 overs, under 1 ball before their stipulated quota of 7 overs. That means in exactly 6.5 overs they were bowled out for 35.
Now the target for रिलायंस काटीपाला इज एग्जैक्टली 36 36 रनों का लक्ष्य 42 गेंदें यानी 7 ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 5.17 रन्स फॉर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम इन दिस सिचुएशन। और देखते हैं यहाँ पर 42 गेंदों पर 7 ओवर में 36 रन रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाज बना पाते हैं नहीं। और ग्रीन लाइन बेंगरे का जहाँ तक सवाल है, उनके पास भी अच्छी खासी गेंदबाजी का लाइनअप है और अगर उनके गेंदबाज अपनी क्षमता के अनुसार अपनी एबिलिटी के अनुसार राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं तो परेशानियां रिलायंस काटीपल्ला के बल्लेबाजों के सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है उनके पारी में। और उनकी पारी की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। तो तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर रिलायंस काटीपल्ला की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक, नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। Welcome back. Thank you very much, Gopi. And after that, winning the toss, elected to field first. Reliance Katipala bowled very well to restrict their opposition. Green Lions Pengre for 35 runs and they set a target of exactly 36 to win this match to qualify for the semi-final. And of course, disappointment batting performance. One the man who is standing tall in other end, scoring very important runs, 18 valuable runs out of 35, almost 55% of the runs which came from his bat, and got a fighting total on the board. Azhar the man got his first run in the first ball of the over. The Zami the man who came into attack, and Zami know exactly how to
Hello, hello. What a fantastic stroke came from the bat of Taufik. He played a magnificent stroke towards long off boundary for 4 runs. And Jami will going to continue. Right arm over the wicket, balls down the leg side again. He tried to swing that one on the onside region, but umpire is not interested and just asking. Now they're going for the third umpire to watch whether it's going to be good enough to call wide or not. And maybe that ball is just passing inside the line or not. Just wait and see. And looks like the batter is bowler is bowling just wide of the crease, getting that off cutter, pitching on the midline leg stump, and just a little bit movement, and that is good enough to call the fair delivery. It's a fair delivery. It's a fair delivery. So it's a fair delivery, 5 without loss of any wicket. Jami, and know exactly he has to get some good start, not from the dot ball, but even how to pick the wickets if they wanted to back in the game. Green Lions Bengre, but at the same time, Reliance Kartipala knows that they have to capitalize these 2 over of the power play. Taufik wanted to go for the expansive drive, misses the line completely. Wicket keeper behind the stump did the rest back to bowler. 5 without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Boundary, which is given some kind of relief here for the batter in the second delivery of this over. This time a little bit movement of his feet. Misjudgment there from Taufik. Half-minded. Once he just wanted to go for the drive. Last moment is changing his mind and thought it might be wide, but ball is valid in the line of the ball. And Azhar just walks towards his partner, saying that you got opportunity to drive the ball to the cover and extra cover. No one there in the deep. This is a power play. 5 without loss of any wicket. Balled him, cleaned him up. Zami strikes, just like I mentioned about. He's the man who has got the potential of doing the job for the team Green Lions Bengre. And this time that delivery which is coming into the batter, but Taufik almost drags that one into the stumps. Inside edge of the bat. Wanted to go for the expansive drive. Pays the penalty. 5 for 1. Reliance Kartipala now needed another 31 runs to win this match. In remaining 6 overs, 36 balls, 31 required for the victory. It's going to be anybody's game. Even the boundary which is came in that over, but still Jami is holding his now the remaining 4 deliveries. He bowled well with that good line and length, restricting the batter and even taken the wicket. But that 1 over which is not good enough for the Reliance Bengre. But they needed at least another 2-3 overs. They needed some performance which is need to be a consistency of bowling the same kind of overs. Now this is the last over of the power play. Nazar, the man, will go into face the left-hand batter. Sazim, the bowler, one more young bowler, bowled brilliant in the previous over, previous match in fact, and got some success with some economical over. And this is a big match, quarter final. How to perform? They wanted to back in the game. The young man, pass umpire Sriraj, short run up. Ball starts with the wide. This is not a good start there from man. Oh, that might be the overthrow again. 1+1, the couple of runs. The pressure is off straight away in the first ball of the over of the second. 7 without loss. 7 for 1. This is something what Reliance Bengre not to do the mistake of bowling extras, because they're not depending a big total like 45 or 55. They're depending only 35.
Reliance Katipalla correction. Again, switch, reverse sweep, played it nicely into third man region for a single. And behind we can see that the screen, Shamim and Salim, the brothers. And you can see just behind the batters, Trescon, the proprietor of Trescon and the owner of Torpedoes Khana, and one of the big supporter of this tournament. The Azhar picked up a single with that single scoop, but moves on to 9 for 1. Reliance Katipalla got a dream of getting into the semi-final of the prestigious Rnfc Trophy 2026. Sazim, wait and see how we're going to come back. This time again, played it gently down to square leg region, looking for a run out. But batters are very quick to react to that one and made it quite easily in the end. Single has been taken. Zunaid, the fielder at short mid wicket. Double figure 10 for 1. Again, far away outside the line of off time. The second wide of this over. Sazim is not really looks like that much of comfortable as far as line and length is concerned. The second wide of this over, the big over, 6 runs already came from this over. Lofted over the head of the long off, mid off in fact. The mid off fielder running towards the long off, and before we'll go in to collect that one just inside the boundary line. Ample time for Azhar to complete the couple of runs. With that couple of runs, Kobarna moves on to 13 for 1. In the over number, second is in progress. Played it back to bowler, opportunity of run out. Again, Sazim is missed that opportunity to make the run out because non-striker Rahil almost is out of the crease. So 13 for 1. 23 more required for the victory. The remaining 31 deliveries. The equation really favoring Reliance Katipalla against Green Lines Bengre. Again trying for the sweep shot. Looks like it's going to be a one more run in the form of leg bite. The 14 on the board, big over from the point of view of team Reliance Katipalla. They got runs what they really wanted in the second over of the power play. Now things are looks like it's going to be easy unless any miracle will going to happen in the middle from the ball of Green Lines Bengre. It's 14 for 1 and 22 needed for the victory in remaining 30 balls. Safwan, the man who did a great job from the batting when the team is almost looks like we're going to bundle out very cheaply. When they lost 5 wickets for 6 and they came in. He's standing tall in other end and scored a very good runs for his team. Once again came into attack to rescue his team and just wanted to get the breakthrough for his team and wanted to get one economical over, which is much required for Green Lines Bengre to back in the game. But both the batters are very composed and batted nicely as for the condition required. Altogether we can see that attacking field set is made by Safwan. They really need to appreciate getting 5 fielders inside the ring, even though after the power play you know exactly how to save the single, not the boundary. Phil, they got the placement right. Azhar is a master of rotating the strike, so easy for him to getting into that gap. 15 for 1. Safwan now wanted to come over the wicket to Rahil. Is batting on 2 in 2 deliveries. No fielder down in the deep square leg region. Down the leg side, well with the reach of the batter. The fielder at long on and long off and a deep cover point. Pushing and running, chance of run out. Safwan misses the stump.
direct hit might be all over for Rahil. He just pushes the ball straight to the hands of Safwan on his follow through. So one more single added to total 16 for 1, 20 needed for the victory. Without getting a breakthrough, very difficult for team Green Lines Bengre to back in the game again. Lovely shot, placement is good and they're looking for second. The couple of runs, good placement there from Azhar. Knowingly chip that ball over that of the cow point fielder. You know exactly there is no cow point fielder, no backup point fielder. And played it very cleverly over the head of the infield. 18 for 1. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested, but here is a chance of run out. Again they missed it. Can you believe this leg by call by umpire? And Azhar can't believe his luck because he's already given up, isn't it? He thought it might be all over for him when the throw came to the hands of Safwan. But he missed the opportunity. It's 19 for 1. 7 needed for the victory. Going for the sweep shot and missed it completely. 3 gone after completion of over number 3. Reliance Katipala absolutely looking in a driver's seat. 19 for 1 and another 17 required for the victory in remaining 4 overs, 24 deliveries, 17 runs required for the victory. And it's a time to change in voice as well as language. So 19 for the loss of 1 wicket, 3 overs completed. Another 4 overs remaining, 18 more runs required for the victory, 24 deliveries remaining. It looks like the match completely controlled by the Reliance Katipala. And Gopi, welcome back once again. It looks like the match is almost Reliance Katipala controlled over this, unless any miracle will going to happen from the bowling of Green Lines Bengre. Then only they can back into the game. Otherwise, the team Reliance Katipala looks like the favorite of coming to the semi-final. बिल्कुल सतीश, इस वक्त तख्ता जो कि भारी लगता हुआ रिलायंस काटीपल्ला का, और जहां तक सवाल है इस वक्त कमबैक करने के लिए मैजिकल बॉलिंग, चमत्कारी गेंदबाजी की ज़रूरत है गेंदबाजों को ग्रीन लाइन बैंगरे के। और चौथा ओवर प्रारंभ होता हुआ बैकफुट पर गए, गेंद को दिशा दे इस वक्त गली पर 1 रन के लिए, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 20 रनों पर। अजहर राहिल पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए, और आउट होने वाले बल्लेबाज तौफीक जो कि एक चौका झटने के बाद अपना विकेट जो कि गंवा चुके हैं, और अगली गेंद लेकर आदिल इस वक्त तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। फुल टॉस गेंद, हल्के से गेंद को इस वक्त खेल दिया गली की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और आदिल अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार अजहर के लिए। ये गेंद इस बार एक बार फिर से गेंद को स्टीयर कर दिया अंतिम क्षण में, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 for the loss of 1 wicket. No need to panic at all in this situation for the batsmen of Reliance Katipalla. और कोई जल्दबाजी की इस वक्त ज़रूरत नहीं, और इस परिस्थिति को समझते हुए दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। हल्के से गेंद को पुश करते हैं, इस वक्त शॉट कवर की दिशा में तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े ओवर थ्रो, लेकिन दूसरा रन ओवर थ्रो के रूप में इस वक्त नहीं मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 for 1, 23 for 1 in fact in the over number 4 in progress, और 2 गेंदें इस ओवर में बाकी। आदिल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अजहर जो कि इस वक्त सपना करने के लिए तैयार, और इस बीच अगली गेंद लेकर ये गेंद हल्के से गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, जस्ट वर्क इट अवे डाउन टू स्क्वायर लेग फॉर अ सिंगल। 24 on the board for losing 1 wicket in the over number 4 in progress। निश्चित रूप से इस वक्त कमबैक करने के लिए चंद कसे हुए ओवर्स और चंद विकेटों की ज़रूरत ग्रीन लाइन बेंगरे के गेंदबाजों को, और आक्रामक फील्डिंग इस वक्त सजाई है कप्तान ने। ग्रीन लाइन बेंगरे के 2 क्लोजिंग फील्डर को इस वक्त लगा दिया गया है, शॉट एक्स्ट्रा कवर और शॉट मिड विकेट दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए,
और गेंदबाज आदिल इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए उछाल दिया इस वक्त लंगोन पर फील्डर के हाथों में और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. जस्ट चिप द बॉल एट द लास्ट मोमेंट बट कांट फाइंड द गैप एज वेल. और लंगोन मिड ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, देखिए मिड ऑन से थोड़ी से पीछे कहना पड़ेगा, लंगोन और मिड ऑन के बीच जो फील्डर खड़े हुए थे उन्होंने इस कैच को एक बेहतर जजमेंट के साथ लपका और इसी के साथ ऊपर नंबर 4 की भी समाप्ति हो चुकी है. 4 overs completed, 24 on the board for losing 2 wickets for Reliance Kadipalla. Now 12 runs to get from remaining 3 overs. That means in remaining 18 deliveries. Such a fantastic cricket tournament is now progressing here in the name of Rnfc Cricket Fest 2026. और आज इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत अंडर दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट दिन नंबर 1 का मैच नंबर 6 यहाँ पर खेला जाता हुआ और मुकाबला जारी है रिलायंस काटीपल्ला और ग्रीन लाइन्स बेंगरे के बीच. गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज सफवान और दूसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त शुरू होता हुआ. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए कप्तान ग्रीन लाइन बेंगरे के और ओवर की पहली गेंद लेकर सफवान गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए. अजहर स्ट्राइक एंड पर मौजूद 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों कब तक उन्होंने सामना किया है और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. पहली गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग पर सीधे फील्डर के हाथों में एक और विकेट गिर चुका है. अजहर का भी विकेट यहां पर गिर चुका है. इस बार पिछले बल्लेबाज की तरह ही वो उन्होंने गेंद को उछाला था इस वक्त, लेकिन इस बार थोड़ा सा फ्लैटर वर्जन में और गेंद लॉन्ग जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों में पहुंची. देखिए किस तरीके से हुआ था. प्लेसमेंट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड बिकॉज ऑफ दैट ही जस्ट पेड द पेनल्टी फॉर दैट. वन मोर विकेट फॉल ऑन अजहर डिपार्ट्स और यही तरकीब इस वक्त अपनानी है ग्रीन लाइन्स बेंगरे के गेंदबाजों को. इस वक्त उन्हें कम बैक करने के लिए चंद और विकेटों को यहाँ पर उखाड़ना ही होगा कम अंतराल में और कसी हुई गेंदबाज यहाँ पर करनी होगी. फिलहाल सिर्फ 11 रन मात्र, सिर्फ 12 रन मात्र अब विजय से दूर. और जहां तक सवाल है 17 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. नंबर 5 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. जुनैद अनुभवी खिलाड़ी इस वक्त जिनका आगमन होता हुआ, जो कि कप्तान है इस वक्त रिलायंस काटीपल्ला के इस वक्त क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे सफवान की गेंदों का. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए ग्रीन लाइन बेंगरे के कप्तान और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज सफवान इस वक्त तैयार. शाम के ठीक 5 बज चुके हैं. इट्स ऑलरेडी 5 o'clock इन द इवनिंग और आज का मैच नंबर 6 यहाँ पर खेला जाता हुआ. Off the toes in the air, but no one in that area. Deep mid wicket. जब तक मुस्तफा गेंद तक पहुंचे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. ऑन साइड पर कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ना चाहते थे कि द बॉल गेट्स सम एक्स्ट्रा बाउंस. गेंद टॉप एज पर टकराई लेकिन भाग्यशाली रहे जुनैद की कोई फील्डर वहां पर नहीं. जब तक फील्डर मुस्तफा गेंद तक जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 25 फॉर द लॉस ऑफ फ्री विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस. दैविक नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है. इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार सफवान की गेंदों का. बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी अब तक गेंदबाज सफवान ने किया. सिर्फ 5 रन प्रदान कर चुके अपने 1.2 ओवर में और 1 विकेट प्राप्त करने में भी सफल. 16 बॉल्स लेफ्ट एंड 11 रन रिक्वायर्ड. दैविक सामना करते हुए ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, एब्सोल्युटली कॉपी बुक स्ट्रोक, जस्ट स्ट्रोक टू द बैक फुट एंड पंच्ड इट अवे थ्रू द ऑफसाइड. स्क्वायर ऑफ द विकेट. 1 रन पर प्राप्त करने में सफल. 26 फॉर द लॉस ऑफ फ्री विकेट. और सफान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. जुनैद और तैविक दोनों एक गेंद का सामना कर चुके हैं, एक रन बना चुके हैं और इस बीच गेंदबाज तैयार. ये गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त जुनैद ने. गेंद पहुंची लॉन्ग पर 1 रन का इजाफा. 27 ऑन द बोर्ड. क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज जुनैद और तैविक इस वक्त जान चुके हैं स्ट्राइक रोटेट उन्हें करना है हर गेंद पर, क्योंकि बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन के बीच फासला सिर्फ 5 का इस वक्त बाकी रह गया है और चंद डॉट गेंदे निश्चित रूप से बल्लेबाज को दबाव में ढकेल सकते हैं. इस बीच ऑफ द टॉस गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर. जस्ट एन सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 28 रनों पर. 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 8 टू गेट फ्रॉम 13 डिलीवरीज नाउ. और इस ओवर में अंतिम बार सफवान गेंदबाजी करते हुए जुनैद के लिए ऑफ द टॉस गेंद को इस वक्त मोड़ा. शॉट फाइन लेग पर तेजी के साथ रन पूरा करते हुए अच्छा रिस्पॉन्स नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज दैविक द्वारा आता हुआ और सफवान का बेहतरीन स्पेल समाप्त हो चुका है. 2 overs no bid in 9 runs and 1 wicket. Good spell came to an end from Safwan and after 5 overs still I must say Reliance Kadipala looking in a commanding situation. 29 for 2 and 29 for 3 in fact. 7 to get from 12 balls now.
6th ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स. छठा ओवर प्रारंभ होता हुआ. इमरान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. इस ओवर में कम से कम इमरान 1 या 2 रन प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से इस वक्त मैच में कुछ हद तक दिलचस्पी आ सकती है. और इमरान गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. जुनैद जो कि सामना करने के लिए तैयार. लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा. वाइड का इशारा. इस बीच 1 रन मिलेगा. 30 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट. 12 balls left, 6 runs required. The things getting much easier for the batting side in this situation. और गेंदबाज इस वक्त इमरान गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए. इस बार ड्राइव किया. खूबसूरत स्ट्रोक मिड ऑफ की दिशा में. जुनैद रन के लिए दौड़ पड़े. 1 रन पूर्ण करने में सफल. तेजी के साथ स्ट्रोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे जुनैद. डेंजर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर, और 1 रन यहाँ पर प्राप्त करने में सफल. 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. नाउ 5 विकेट फ्रॉम रिमेनिंग 11 balls. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. Lost it. This time I think this could be a chance for the long off fielder and he took the catch brilliantly. This is an outstanding catch taken by the long off fielder. अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए कैच लपकना उतना आसान नहीं है. और यहाँ पर गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखी फील्डर ने. और देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस कैच को उन्होंने लपका. पीछे की ओर दौड़ते हुए 8 से 10 कदम बेहतरीन जजमेंट के साथ. और इस बेहतरीन कैच जो फील्डर ने इस वक्त लपका है, इस बेहतरीन कैच की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. दैविक बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. और 31 रनों के योग पर चौथा विकेट खो चुका रिलायंस का टिपल्ला. निश्चित रूप से एक बेहतरीन कैच इस वक्त फील्डर ने लिया था. उनका नाम इस वक्त जानना बाकी है. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 10 गेंदें बाकी, 5 रन चाहिए. 5 विकेट फ्रॉम 10 balls नाउ. शाजीम जो फील्डर थे अपने पीछे की ओर दौड़ते हुए इस वक्त बेहतरीन जजमेंट के साथ गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हुए इस कैच को बाखूबी लपकने में सफल. 20 गज के दायरे के थोड़ी से बाहर. और शाजीम की इस बेहतर कैच की बदौलत दैविक का विकेट यहां पर गिर चुका. नए बल्लेबाज राफत इस वक्त क्रीज पर मौजूद. ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और सही गेंद घोषित. डॉट गेंद. नाउ 9 balls लेफ्ट एंड 5 runs रिक्वायर्ड. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद इस बार ड्राइव कर दिया गेंद को खूबसूरती के साथ. डीप एक्स्ट्रा कवर पर नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर. 32 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. 4 to get for victory in remaining 8 balls. जुनैद बैक ऑन स्ट्राइक. सराउंडिंग फील्डिंग इस वक्त सजाई है. आक्रामक फील्डिंग सजाई है सिंगल्स रोकने के चक्कर में इस वक्त ग्रीन लाइन बेंगरे के कप्तान ने. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. इस बार खूबसूरत स्ट्रोक एंड फील्ड क्लियर करते हुए. इस बार शाजील जो फील्डर थे गेंद को रोक नहीं पाए. गेंद के सिर के ऊपर से गुजरते हुए. और इसी के साथ जुनैद फिनिश द मैच इन अ स्टाइल विद अ बाउंड्री. और यहां पर देखिए किस तरीके से फील्ड क्लियर करते हुए गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑफ पर बल्लेबाज जुनैद ने. और इस वक्त कप्तान रिलायंस काटीपल्ला के इस मैच को समाप्त कर चुके हैं. और रिलायंस काटीपल्ला वॉन द मैच बाय 6 विकेट्स. And again with the 7 balls to spare against Green Lions Bengal. With that victory, they are through to the next round of this competition. This is the match summary. Green Line Bengal 35 for 10 in 6.5 overs. Reliance Katipala chased the target for losing just 4 wickets. 36 for 4 in 5.5 overs. और जहाँ तक सवाल है इस मैच के मैन ऑफ द मैच का, so man of the match of this match award goes to the bowler who bowled brilliantly. Tidy spell he bowled. 2 overs, no maiden, 7 runs and 2 wicket. Rahul adjudged man of the match of this match. I request Rahul to please come on to the stage and receive the man of the match award from one of our chief guests. Rahul, who bowled superbly in this match. 2 overs, no maiden, 7 runs, 2 wicket. And because of this fantastic bowling performance, Rahul of Reliance Katipalla adjudged man of the match. So that's it for the match number 1. And that's it for the day number 1 of this prestigious cricket tournament, Rnfc Cricket Fest, Rnfc Trophy 2026. Now we are back in the day number 2 and at 8:30 a.m. on tomorrow morning. Till then we are saying a goodbye right from our commentator box. Thank you. Dhanyavad.